में आलू, तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम ऐसे अगर हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर kg हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत ईद से पहले ईद चुकी है, तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को फील करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, एंड थैंक यू सो मच बचत बाजार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं बेरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक़ है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना स्टॉल ये लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस दें कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो उस अवेयरनेस भी दें कि आप लोग जो है मेडिसन, मल्टी-नेशनल मेडिसन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस रखता है, और इस पे है कि आवाम को जो है हमारी आवाम को अपनी हेल्थ के बारे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी हैं। और बेरिया फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है इन्हें मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi, yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana.
Firmamızda yarı otomatik silahlar ZIG-14, 1911 ekspert silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport FK modellerimiz de mevcut. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाई इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको केस कर सके। जिस वक्त भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट आ सकता है और तमाम जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। इसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट पे कंडक्ट करा जाएगा दैट बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हुआ और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी मैंने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली और तो बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे बहुत हमारे लिए आसान हुआ। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुनाह कम कोशिश भी है, नया इंसान। It's 2 p.m.
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussion on global challenge within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions to the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one light, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left, upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it's quite difficult for you to read.
But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in very various type of use cases for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now it's 2020, 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of parameters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile edge computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by L&T, and then Finable, and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROC, 5G for the AR/VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very
big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next, the next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. And the biggest contributions comes from the smaller cells. It is 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked to each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next, the next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, it's cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts for the security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use a cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is just the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very
important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next, that will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ स्लेम की बात हुई है, वही एक ख़ास टॉपिक इस आइडियाज़ 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये ख़ास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक ख़ास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ तीन हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट, CEO पैरा क्लाउड और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, बहुत बहुत थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड मूलर एंड फिट्स के और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। जबकि उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहां पर ईसा लैब बहुत आगे दिख देती है। CEO ईसा लैब फरहान ईसा साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई ज़रा शुरू करते ज़ियाउल्लाह खान से। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आम लोग ये बैठे हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, नॉर्मल जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो बिल्कुल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि उसको कि भाई आपकी एज अगर 65 से ऊपर है तो प्लीज आइडेंटिफाई करें, इनको ब्लड ना लें इनसे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपकी एज पूछ के उसका जवाब देता है। अगर इसके बरखिलाफ तो ये नॉर्मल अभी जो हम अपनी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होती। मगर आप आम आदमी भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगा है। आप फेसबुक पे जाते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है तस्वीर में कौन कौन रहे हैं आपके दोस्त में और उनको ऑटोमेटिकली टैग करता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये है। तो इस काम के लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम है जो मोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। जो नए किस्म के प्रोग्राम है इनमें एक्सटेंसिवली इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर लोगों को पता है।
नए प्रोग्राम क्या है अच्छा, वो मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी के मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि एक आम आदमी के लिए प्रोग्राम है, मगर लुला आप ये देखिए, इस तरह समझे आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना, पहले तो ये होता है कि अभी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब कि हम क्या करते हैं उसको, जैसे मेरी 10 तस्वीरें दिखाएंगे उसको। अच्छा, हम आम जिंदगी में मुझे आप कैसे पहचानेंगे? मुझे 2-4 देखा होगा तो पहचानेंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर भी अब इस तरह करने लगा है कि आपको लॉजिक खुद नहीं लिखनी पड़ती, वो आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। अच्छा, जब दफा किया ना तो वो ऐसे प्रोग्राम है जो ये मतलब निकाल लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये ज़िया है, तो फिर आइंदा कोई नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये भी ज़िया है। तो इस काम के लिए ये समझना जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंची है, आपको प्रोग्राम ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन करेंगे, यानी डेटा ही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई है साइंस, वो है डेटा साइंस। तो आपको जैसे हमारे पास लैब्स के वो हैं, अगर अभी क्या होता था, ब्लड आया, ब्लड खुरबीन में वो डॉक्टर, आइंदा क्या होगा और अभी क्या होगा, इनके पास भी हो रहा होगा कि तस्वीर से डायग्नोज, उसको बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं, मगर ट्रेन करना पड़ेगा, डेटा ही होगा, तस्वीरें दिखा के कि यार ये कैंसर है। फिर जब वो नया कैंसर सेल देखेगा तो फौरन पहचानेगा कि ये कैंसर है, जो पहले इंस कर सकते थे, सिर्फ आप इन्हें भी कर सकती हैं। मैं जानना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप यूज करते हैं आम जिंदगी के अंदर, क्योंकि आईटी एक्सपर्ट ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, ज़िया साहब एक जबरदस्त किस्म के, लेकिन आईटी सेक्टर के थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है। मैं अपनी बात शुरू करने से ज़िया साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि तारुफ आपने कराया, मुख्तसर तारुफ है। इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर समझ लीजिए इनका तरह बैठना ऐसे ही है कि सूरज के सामने जो है आप चरा कर दें। तो मैं तो इनका ज़ाहिर है बहुत ही छोटी बात कर सकता हूँ। एक्सपर्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खासतौर सैलानी वेल्थ ट्रस्ट का जो इनिशिएट है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स को बनाने, उसके अंदर सबसे बड़ा काम ये प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं इस वक्त। तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक दो बहुत बड़ी शख्सियात के दरमियान है, आपने मुझे भेजा है, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक काम हमने शुरू किया है जिसकी उन्होंने तवज्जो दिलाई। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा काम है, इसमें दो, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दो चीज़ों के जिस तरह ज़िया ने बताया, शुरू के अंदर जो माली चीज़ें होती हैं वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं, और उसके बाद जो अब आप इसके अंदर आगे बढ़ते चले आते हैं, जिस तरीके से एक आज की तारीख में जो गूगल असिस्टेंस, या अगर आप बात कर लें ऐप की, तो वो एआई के तौर के ऊपर सिरी को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर उसके साथ एलेक्सा इस्तेमाल होती है एंड्रॉइड के। तो ये डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो पावरफुल समझी जाती है, और मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर सिरी को समझा जाता है। गूगल सर्विसेज को बहरहाल सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है, उसके बाद सिरी, उसके बाद फिर जो है वो एलेक्सा को। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त आर्ट इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर कहाँ पहुँच चुकी है, आपका फ़ोन आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं इसकी चंद मिसालें बड़ी दिलचस्प के सामने रखूँगा। आप में कितनी कौन कौन सी जगहों पर विजिट करते हैं, इसका डेटा आपके फ़ोन के अंदर महफूज हो रहा है, आप कोऑर्डिनेट्स के साथ, लॉन्गिट्यूड लेट के साथ महफूज है। उस जगह की फिर निशानदेही के उसके पास पहले की जगह प्रोग्राम में सेव होती है, तो वो निशानदेही है कि आया ये जगह आपकी काम की जगह है। वो जब देखता है सुबह आप 10 बजे या 9 बजे जगह दाखिल होते हैं, वहाँ से आप 6-7 बजे निकलते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर भी रोज़ाना जाने वाले लोग हैं, जब वो गूगल मैप्स जाएंगे तो आप अगर देखेंगे उसके अंदर वर्क प्लेस आपकी आ रही हो, आपने कभी ऐड नहीं किया उस वर्क प्लेस को। इसी तरीके से रात का टाइम चूंकि आप घर के अंदर गुजार, मैं सहाफ़ियों की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ज़्यादा हो गए चूंकि वो शाम बाद से लेके सुबह तक घर पर गुजार, इस वजह वो उनकी होम कैटेगरी के अंदर धरा होता है। अच्छी तरीके से चूंकि सैटरडे संडे या संडे का दिन जब आप घर पर गुजारते हैं, तो वो आपके इसी तरीके आप अगर एक खास टाइम के अंदर निकलते हैं और जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है कि ये मस्जिद आ रहा है शख्स। तो आरे में ये निशान होती है कि आप मस्जिद आने वाले हैं और कितनी दफा, यानी 5 वक्त के नमाजी 2 वक्त हैं, 1 वक्त हैं, जो में नमाज पढ़ते हैं आप, आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं,
अच्छा, आप एक शख्स है जो इस्लार है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो आपसे मुलाकात करते हैं, आप हफ्ते में 1 दफ़ा मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, या महीने में 2 दफ़ा मिलते हैं, उससे आपकी शख्स के बारे में गेज होता है कि आया आप एक खिलाड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलने के लिए जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर फिर वो किस फील्ड का डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा उस डॉक्टर का भी बैकएंड के ऊपर, गूगल के ऊपर या सेफ है, तो वो उसको लिंकेजेस क्रिएट करता है। आज की तारीख के अंदर अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएं तो उनको सिर्फ इस बात जरूरत होती है आपकी फेसबुक या आपकी गूगल आईडी उनके पास जाए, उसके बाद आपके बारे में मुकम्मल मालूमात आप ज्यादा बेहतर उनके पास आ जाती हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करते हैं कि इधर आपको वीजा देना चाहिए या आपको वीजा नहीं देना चाहिए, आप वाकई उनके मुल्क की जरूरत है या आप उनके मुल्क के लिए नुकसान साबित हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही मामूली, बहुत ही आपको मूल्य मिसाल दी है इसकी। इस तरह जिया साहब फरमाते थे कि वो जो तस्वीर है उस तस्वीर को देख के अगर आप एक बड़ी दिलचस्प ये, अगर आपके पास आपके बच्चों की तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर वो साल ब साल हर साल की तस्वीरों को उन चेंज के साथ आपको ला सकता है, और इसके लिए आपको कोई और प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। गूगल ऑलरेडी काम बैक एंड पर आपके कहे बगैर कर रहा होता है। तो आपकी तस्वीर डिटेक्शन चेंज के साथ कि एक साल के बाद आपका अगर एक बच्चा है जिसका नाम लेट से है या राबिया, वो उसको डेक करता है कि बचपन इसकी ये था, उसके बाद 1 साल ये हो गया, साल के बाद ये हो गया, 15 साल बाद वो इस कंडीशन के अंदर, तो वो उस पूरी तस्वीरों की ट्रेल आपके सामने रख देता है। मेरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस लेवल शामिल हो गई है। सही बात है फरहानी साहब, किसी के प्रॉब्लम हो जाए उसको टेस्ट के लिए आपके पास आना पड़ता है। जिसके से अभी हम बात कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये तो आपके शोबे में भी बड़ी करामत साबित हो सकती है डाटा वगैरह के हवाले से, या अगर कौन से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीज़न में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी करामत हो सकती है। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ करना शुरू कर दें। ख़ासतौर पे रेडियोलॉजी अंदर जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआईज़ हैं, उसकी हज़ारों, जिस तरह से सर ने कहा कि वो उनकी इमेजेस और उनके रिजल्ट्स वो फीड हो गए और कंटिन्यूसली डाटा उनके को सिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी एक स्टडी करी जिसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे, और उसमें जब हमने देखा तो 45,000 इमेजेस फीड करने के बाद हमें पता ये चला कि 25 इमेजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी थी। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो स्क्रीन हो जाएं और एबनॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे ख़ासतौर डेंगू आ रहा है और उसके साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनका डाटा भी कंपाइल होकर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जैसे इस दफ़ा जो डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो, वैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसाइल होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के साइन सिम्टम्स आए, तो हम लोगों ने, तो ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के, जैसे डेंगू जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था तो हम सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और हमने कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा, जो आ गया। फिर चिकनगुनिया एक और बीमारी बॉर्डरिंग टाउन्स पे आई, हमने पहले से बता दिया था कि उसका मच्छर भी है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिल भी हमने इसी के साथ मिल के काम किया, और आई थिंक मैं बहुत मुबारकबाद भी दूँ ऐसे अच्छे इदारे को एनसीओसी बना। जनरल हमूद उसको चेयर कर रहे थे और जनरल हुमायूं साहब कोर कमांडर कराची थे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ और आज आइडियाज़ के भी बानी एक तरह से जब भी हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक और चीज़ भी हुई कि जो हुमायूं साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को, जो पहला, जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहला तो पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी, और जी अभी हैं वो, और मैंने कल भी को मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर स्टैब्लिश हुआ उसके 2-3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नज़र आए और पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। आपको बताऊं, ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमायूं थे, जीओसी जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद थे 25 मैक के उस ज़माने में, इनकी, और फिर बाद में जनरल नदीम अंजुम भी थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सफाई वाला, जो रेड जोन जहाँ पे पेशेंट है, मैं
जो यहाँ पे हमारी ईसा लैब भी फ्री सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक। एक शख्स को भी इधर जो काम कर रहा था एक को कोविड नहीं हुआ, और इससे पूरी दुनिया हिल गई जिसमें सही मैकेनिज्म्स इस्तेमाल हुए। सेकंड चीज़ है डेथ रेट यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़ ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मरीज तो नहीं मरे, खासतौर पे इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे जीरो, और उनको तो बल्कि पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी। और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है और ये जो आइडियाज़ हैं, और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जो सिविलियन बिजनेस कम्युनिटी आर्म्स फॉर पीस और सब जो मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं जो कोविड में नजर आए और रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान ने, डेथ हार्डली हो सकी। आई थिंक कि ये हर जगह पे होगी, और पाकिस्तान जिस तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहा है और जितना हमारे आर्मी चीफ जैसे चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी विल डू वंडर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से उन्होंने पहले दिन सेमिनार में डाला, आपको मैं बताऊँ, हम नॉट ओनली मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी बायो सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है, और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम चाहिए। इसकी जो हाईलाइट आइडियाज़ ने किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद हो सारे ऑर्गेनाइजर्स को। खास फोकस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, समझ में आ गया कि भाई ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले सेक्टर में, ये हम दिफाई नीश में बैठे हुए, हमारा डिफेंस सेक्टर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितना बरामद होती है? असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से कोई 10 साल दूर, आप इमेजिन करें वो दुनिया जहाँ पे मुल्कों को अपनी फौज ना उतार पड़े, रोबोट्स उतार दें। अब इमेजिन करें मुल्क अगर ये कराएं कि एक भी की कैजुअल्टी ना हो और सब रोबोट्स हों, तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और जो इस दान में नहीं होगा उस बेचारे की हालत लें, क्योंकि वो तो इंसान गोश्त पोस्ट का मेरे तो इंसान होगा, उसी तरफ रोबोट होगा, तो जिएगा कौन? रोबोट ने जीतना है और उसको अच्छा फर्स्ट नहीं भी जीता, वो नया बना के फिर दोबारा ले आएंगे। जान नहीं जा रही, किसी की जान नहीं जा रही है। मैं तो फुली इररिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इररिप्लेसेबल है, मगर जो चीने तो कोई मसला नहीं है। अगर गलती हो गई, या तो पॉइंट ये कहने का है कि मैं यहाँ आने से पहले, आज की आपसे मीटिंग से पहले मैं जरा से पढ़ के आया, देखें ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे बड़ा मसला होता है वॉर में। मेरे वालिद साहब भी फौज में थे, जिस वक्त एक कोर चलती है तो साथ उसके पूरी हजारों ट्रेनें होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ये ऑटोमेटेड गाड़ियां आई हैं, तो जितना अगर आपका 1 लाख आदमी एम्प्लॉयड होता है, तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है। क्या कहते हैं, मगर अब क्या होगा कि ये पहले स्टेज, ये वाले जो काम है ना, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बताइए इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और डेलस की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो इमेजिन करें कि जो सारा ये लॉजिस्टिक्स आर्मी का पहला जो ट्रांसफर वो होगा, फिर ट्रेनिंग। अब ये जो मेटावर्स कंसेप्ट आया है, ये वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट आया है, इस थ्रू ट्रेनिंग आपको एक्चुअल चीज नहीं, जहाज पायलट को एक्चुअल जहाज बिठाने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, और इसी तरह एक सिपाही की भी दी सकती है। अच्छा देखिए, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल पॉपुलर किया है फेसबुक ने, उन्होंने अपना नाम भी मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि देखें, अभी आप फेसबुक देख रहे हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पे फेसबुक है, तो आप फेसबुक से बाहर हैं, आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। अब जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट प्रो उन्होंने VR ग्लासेस लगाए, उसमें थोड़ा सा AR का कॉन्सेप्ट भी है। VR क्या वर्चुअल है, नहीं आपने जब वो ग्लासेस लगाए तो आप समझे, मैंने माउंट एवरेस्ट वीडियो देखी, तो मैंने पहला काम क्या किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो देखने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। तो मुझे आपको मैं बता सकता हूँ कि 0 पॉइंट किधर है, बेस कैंप किधर होता है, उसे कैसे नजर आता है, फील आती है। देखें 50-60% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी कुलीग है हीरा, वो हमेशा कहती है कि मैं तो मानूंगी मेटावर्स को जो आप मेटावर्स में कभी खा सकें। अभी तो वो तो दूर है कि खाना खा सकें, मगर देखिए हवा की फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हम अगर वहाँ माउंट एवरेस्ट के नीचे तो हवा चल रही होती, ठंड भी होती, तो नहीं है, सारी बात है इस स्टेज पे। मगर जो आंखों से नजर आए और आइंदा कानों से भी, अभी भी कानों से आप महसूस करते हैं, वो सब महसूस हो रहे हैं आपको, तो क्योंकि वो माइक के थ्रू और उसके थ्रू। और आप जैसे मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देखना। देखें टीवी में खराबी क्या है कि आप जो कैमरा में दिखाना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है।
अगर फर्ज करें मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि फला आदि का सामान जो सामने रखा हुआ है, मैं इक्विप में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं अजम्पशन लें, तो मैं इक्विप पे फोकस करूंगा, मैं बाकियों को इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी फर्ज करें कोई आदमी किसी एक खास बाबर आजम का फैन है, तो बाबर आजम मैं देखना ही नहीं चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूं कि बाबर आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ क्या कर रहा है, तो मैं कहूँगा वहां पर टर्न होगा, अच्छा वो आपको सारा सेंस कर रहा है चारों तरफ कि आपका मुंह कैसे, और ये सब कनेक्टेड है एआई से, ये आई के बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर मैटर ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसमें एआई का बहुत मेजर हाथ है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल के है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल तरीन है कि हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसीलिए डॉक्टर आरिफी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज से 4 साल पहले ये प्रोग्राम किया था मास लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देने का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नए दुनिया के लिए अगर तैयारी करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी और इंडिविजुअली लोगों के लिए। कितना लेट है हम? लेट तो है हम काफी लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। अगर कवर कर देखिए आपसे अंदाजा करें कि हमें इस तरह कंपैरिजन करना चाहिए, मगर फिर आखिर में तो हमें कंपैरिजन नहीं हो। इस वक्त इंडिया सॉफ्ट एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है, हम 3 है, तो 150 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा ये सारा से मसला हल होता है। अच्छा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो बताने की जरूरत नहीं है, वो फेसबुक पे पले बट और मोबाइल आपका बच्चे आपसे ज्यादा अच्छा समझ करते होंगे बल्कि आपको से सारे काम करवाने पड़ते हैं तो बच्चे गए। मसला क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको ये समझने पड़ता है कि यहाँ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसके लिए ट्रेनिंग, और अभी हम एज ए कंज्यूमर तो कर रहे हैं। देखिए फेसबुक पाकिस्तान में फेसबुक बहुत कमा रहा है पाकिस्तान से, बिल्कुल सही और दूसरी कंपनियां कमा रही हैं, मगर हम यूजर एंड पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आगे चल के और मसला हो जाएगा, अभी तो है ही और ज्यादा मसला हो जाएगा। आप कभी वबाओं की गुफ्तगू चल रही होती है, कॉन्गो वायरस जी अफ्रीका से उनको जरा चेक कर चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल रहा हो कि किस जगह पे ये सिम्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है वो दुनिया के इस खित्ते को मुतासिर कर सकता है, इसकी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम हो रहे हैं? देखिए काम तो बहुत हो रहा है। थोड़ा ये है कि हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स और आर्म्ड फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल जो वैक्यूम है ना वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिससे से बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि वो बड़ा मुल्क है तो इसलिए कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फ़िलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 84 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले ये है कि हम तो गुजारिश करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं रूलर, वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकें तो इंटरफियर करना छोड़ दें। ये चीज़ गुजारिश है। अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास जो, अगर आप मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात करें ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट आई, 18 अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनी जाए सर्वेलेंस की, तो अब ज़ाहिर सिंध तो सही पाएगा ना, पंजाब की पाएगा। तो गुजारिश ये करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट आपका इवेंट है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट सेशंस हैं हेल्थ का जैसे, जिसमें एक नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है, कि कोलैबोरेशन इंटरनेशनल इदारों के साथ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती, तो अगर ये हो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसी के थ्रू ही होता है, फोर्सेस के थ्रू ही जी, वरना कोई पॉलिटिकल, क्योंकि फोर्सेस एक वाहिद है ना जो पूरा पाकिस्तान जी नहीं, वो यही तो देखिए इसी को तो डैमेज करे ना लोग। आजकल हो रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, वो हमारी रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस है। आप पूछें, मतलब कुछ और एग्जांपल भेजता हूँ, साउथ कोरिया की क्या है? साउथ कोरिया की मैच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की क्या है? नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है, आज अगर देखें ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शोबे से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए, इससे ज़र मुबादला आएगा, इससे एक इमेज बिल्डिंग भी होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस आए हुए हैं, तो आज वो पीस का एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में।
ये चीज़ें साथ होना, कंबाइंड होना, और डेफिनेटली अगर आर्म से लीड करेंगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ये जो टॉपिक उठाया गया है वो भी आइडियाज़ पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की जीनत बढ़ाए और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगाया हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस खत्म थोड़ा बात को शॉर्ट करते हुए, वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर से पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की। और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर और से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके लिए बहुत बड़ी ओपनिंग कर रहा है, और इसके लिए बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा आती है या जानबूझ के फैलाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपका प्रोग्राम है ये और लोग क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि इसके अंदर शामिल हो, ना सिर्फ कि नेशनल में बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके अंदर आप आके इसे बिक्री ला सकते हैं पॉजिटिवली। चीज़ भी जरूर बताइएगा, मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके घर कोविड का पेशेंट आते थे कि उन्होंने हॉस्पिटल नहीं भिजवाना है। अब आगे जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके थ्रू हम कहीं कहीं कोई अप्रोच कर सकते हैं या कोई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि ये आवाम के लिए है, ये लोगों के लिए है, इसको हम छुपा नहीं सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी वजह से जिसने बताया ना कि उसकी जो हमने वो जो भी हमने उसकी वो जो ये जो डाटा डिटेक्ट किया कि कोविड किसका था जब हम एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर में बात बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो हम छुपाते हैं ना चीज़ें, ये भी बड़ी गलत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। ये जो आवाम की आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ये चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो इन्फेक्शन का स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, आँखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं होंगी, मैं ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को यही परेशानी थी कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जब कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा, और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं ली और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुई, तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपनी विजन को लेके आएँ। सर, काफ़ी पैगाम हमारे यंगस्टर्स के लिए आप जानिब से जाएगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो क्लियर हुई, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शुबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर अब ऐसे ही बचा है, और बल्कि हम इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम कामों को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल आपको सुन रही है, उनके लिए आपका काम, ये आपका कैमरा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त ना कि एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में है। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत सारी और भी वजूहत हैं मैं बात की, मगर मेन वजह यह है कि राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उभर के आई है, इनके पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर पैसा कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा जो है $1.5-1.5 कमा लेता है, जो कि पहले $200 पे था मिडिल क्लास में, अब वो अपर मिडिल क्लास हो गया, तो वो कुछ भी खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना भी मसला हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगा एक वेव है दुनिया में, वजह क्या है कि जो टेक्निकल लोग हैं जिनके पास पैसा है वो मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप जो कि पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस बेच सकें, तो क्या होगा? हम भूखे मरेंगे, वो खाना खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा बचना है, आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा भलाई है। देखिए, दूध पीना अलग चीज़ है, और भलाई तो सारे अमेरिकन और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो खा जाएंगे, हमें वो दूध नहीं मिलेगा, हमें वो छाछ मिलेगी दही की। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं, मैं खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज अपने आप को रीट्रेन करता हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ दो जो मेहमान बैठे हुए हैं, ये दोनों भी अब रोजाना पढ़ के अपने आप को, तो हमें ये सोचना चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो भी उम्र है, अगर नए दौर में जिंदा रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है।
जियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे आइडिया 2022 शो के मेहमान बने, बीवी के मेहमान बने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ अगर आप कोई पैगाम कंप्लीट हुआ या कुछ अगर क्या चाहते हैं सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जी, है। असल में देखें, ये हमारी फोर्सेस के लिए, मैंने पॉपुलेशन के लिए बात कर रहा था, हमारी आर्म फोर्सेस बात ये समझ रही। देखिए, हमने एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया JF-17 जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जब ये पहली दफ़ा बना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल है, तो मैं खुद ही हैरान हो गया जब मेरे उनसे होती थी कि माशाल्लाह ये मार्वल है। मगर अब नया दौर आ रहा है, आप 5th जनरेशन तो स्टेल्थ और इसके, मगर 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। 6th जनरेशन फाइटर और 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के पायलट्स हैं। अगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। जो इस वक्त नए किस्म के 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ हुआ, बस 6th और 7th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन की फाइट होगी। क्योंकि जैसे पायलट है वो 9G से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्रोन तो 60G बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न हो। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पॉपुलेशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आजकल जहाज JF-17 और F-16 में कोई मेजर फर्क नहीं है, मगर जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज द की। तो हमें अगर आगे बढ़ना है हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फरहान ईसा साहब, बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैं देना जी प्लीज चाहूँगा। प्लीज। इस वक्त जिस तरह फरहान फरमाया कि जो आर्म फोर्सेस हैं, और ये मैंने कल भी जब ने इंटरव्यू दिया था तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार से, तो कोई भी काम जिस तरह हर चीज़ के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ होती है किसी भी शख्स के अंदर, इसी तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके अंदर कदम आगे बढ़ाएं। अगर वो JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान के अंदर बना सकें, सुपर मशाक तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं जो इस वक्त हम बेमार मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्स के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियत को आगे के सैलानी जैसे इदारों को, JDC जैसे इदारों को, जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम करना होगा, ब्रिज करना होगा, और इसके लिए एक लाहे अमल तैयार करना होगा। बुनियाद पे अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर IT एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें, और पाकिस्तान को IT की फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं, फिलीपींस से कह रहे हैं, बहुत पीछे हैं, हमें इसके अंदर आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। रोल उनका हो सकता है। भाई आपका भी एक पैगाम। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये, आपने यूथ की बात की तो मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी जो अभी जनरेशन आई है ना, जी जनरेशन, ये भी हम लोग सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब ने मेरे ख्याल से हम सब ने दुनिया ट्रैवल की है और बहुत दुनिया देखी है और रहे भी हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से अच्छी जगह पूरी दुनिया में नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट कर सकती है, अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से कमिट करें उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, और पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू वेरी फरहान ईसा साहब, मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। जियाउल्लाह खान साहब, इट्स एन ऑनर टू चैट विद यू, और आपके जो पैगाम गए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। क्योंकि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडियाज़ 2022 का अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है तो ये बेजा ना, लेकिन
इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं दिखाई दी। जो ज़ियाउल्लाह खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं उनको ज़िंदा रखना है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना होगा और हम सबको देना होगा। किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, हर शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त अगर इसका सहारा नहीं हुआ तो फिर शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यहाँ नसीब रहूता अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज़ 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद कहते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू होगी, जल्द मिल रहे हैं, जल्द अल्लाह ने के। Assalamualaikum. My name is Haider Mahbub Hussain and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022 and we are launching this magazine, which is Sun's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. Hello. My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 6.5 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. इनमें भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं It's 3 p.m. Assalamualaikum. My name is Haider Mahbub Hussain and I am founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022 and we are launching, which is Pakistan's first international defense magazine. We are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry.
And I hope you're all having a time and ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you, man. IDEAS 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4H offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A teaching seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The tradition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibit offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The theme of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one-window support so that the visitors don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria. And by the grace of Allah, we are very successfully running this Park Global Supply Solution. In Pakistan, Depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers, and for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the Depot and Badar Expo, I am very thankful they have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएट हूँ। 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद ये एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जाए। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर सोल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे। बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूँ। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरी सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम असद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। ये पाकिस्तान की लास्ट कॉन्ग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं, और मैं ज़ाती तौर पे सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में,
क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट हैं। हमारे अपने स्टैंड पे इस वक्त मेरा लगभग 50 से ज़्यादा डेलीगेशन मैंने की हैं, इससे भी ज़्यादा श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं 9 हॉल अगर हैं तो दैट मीन्स एग्जिबिटिंग कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन बहुत सारे और उनको का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आज को वैल्यू कर सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम, टायर के हवाले से, शूज के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के लिए जो जूते बना रहे हैं उनके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बना रहे हैं। तो कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है जिससे बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के सियाचिन जो शूज़ इस्तेमाल किया जा रहा है के शूज़ वो भी बना रहे हैं। इसके हम गैस आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद अल जरार के लिए कुछ पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक भी हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली बार ट्रक बस रेडियल टायर मुतारफ करवाए गए, वो भी सर्विस ग्रुप तरफ से करवाए गए सर लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम जो प्लान करके इस पाकिस्तान में फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2-3 साल बाद 0.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है। इस वक्त हम लोग अमेरिका को पाकिस्तान से बना कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडियाज के हवाले से ये बात करूंगा कि बहुत एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स बारे में पता चलता है और दुनिया की जानने में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत सी चीजें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए। I would like to start with extending my thanks, and would also like to say Assalamu Alaikum to all the degree delegates, member forces, Chief Vice Admiral, Chief Guest Admiral Karimullah Sahab, DG Nima, Vice Admiral Ahmed Said Sahab, and members of the business community, all others spread over here. Assalamu Alaikum, and thank you for granting me this audience today. I will be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor, and especially a country like Pakistan that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our Navy fleet, to run our jets,
and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I would like to present the impact of a inefficient supply chain, or the impact of high energy costs, let's say. So, there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One, product. The product is imported and its price is driven by international markets. That is not something that is in our control. The second are shipping costs, which is something we can control, because a lot of our energy can be transported to the Pakistan National Shipping Company and its fleet, and we can manage our costs in that way. I'll come and address the point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging methods, the pipelines, the connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So high energy bill translates into inflation, into current account deficit, where we face devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads us to a certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding, because there is an imminent or shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventory and aggravates the situation rather than help it. So if I talk about oil import, I'll be focusing on two products in my presentations. I don't want to bore you too much on this Saturday morning, so I will try and be simple and not too. So I've chosen oil, and I've chosen to speak about coal to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if we talk about oil imports, we have two ports mainly that cater to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this come to Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi. Karachi Port has a number of berths. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and oil cargoes. So we have multiple berths over there. And most of the time, feel that there are idles at KPT for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't been developed. The infrastructure, the pipeline connectivities has not been done the last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline up to Punjab. It has multiple storages. It has a good mix of storages, but it only has one berth to discharge all oil cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one and the storages. So problem and the solution are sort of one and the same, in the sense that if we connect the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit off that energy. They could benefit off that. Port Qasim does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. A collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storages at Port Qasim available, but due to just one berth, discharging one vessel at a time, we have up to 5 to 10 vessels waiting for the berth, incurring damages, sometimes to the tune of $100,000 well, sometimes higher. You build up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, situation can be avoided, should be avoided. And there is another port, which is not too far away, Port Qasim, that has multiple berths. All we need to do is connect them both, so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, the reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 60 million tons of coal, seaborne routes, and it is expected with the added power plant capacity and the expansion of the sector, this will go to 25 million tons over the next 2 years. That 16 million tons translates to 290 vessels per annum approximately. That's 24 vessels per month. And during proceedings of the Supreme Court in 2018, there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom-built terminal, which is fine. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time.
The time that that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now we import 16 million tons a year. The capacity not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur again damages up to $100,000 and $150,000 per annum, per vessel per day. Sorry, and that increases our import bill. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel onto the land and forward onto the factories is much more efficient, and we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy their capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempted from our rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build these synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited off them when prices were high. We've seen the same issue with us in LNG. When the prices are very high, you're unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share the data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector, and in the private sector, or I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes,
terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2 directions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmad Askari. I am business head of Dynamic Engineering Automation. You can see मेरे पीछे आप ये कंपनी देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है आजकल के जो गैस है वो पाकिस्तान में नापैद हो रही है, उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं। एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं। अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं। जहाँ पर सुई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है, और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है। इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSDC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे लग रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए, पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए, वो बैरियर टाउन में है, जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर से जरिए तो उनको बिलिंग की जाएगी। वो बैरियर टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आइडियाज़ में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, वहाँ पर भी हम लोग शिरकत करते हैं। पाकिस्तान से बैठ के हम UAE में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we please have the slides. In the meantime, while the slide is played, I could probably engage you that you might have heard the word Industry 4.0, and the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into 4 paradigms of 4 periods in which science has prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics, and this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas, and basically at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work, because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world. And that is most obvious comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot and the plane being totally pilotless.
And a lot of the decisions to be taken by the loyal wingmen basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and it can come, some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and like also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there'll be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually track the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side. And they're completely playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and feed inside the robot. And they, work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for Sakura wheelchairs of Japan. And there are other projects, for example, this prosthetic hand project, which we worked with AFIRM. And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, the soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well.
So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there, and we've also awarded 12 research-funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance, we said the financial impact of artificial intelligence. This saying from Forbes is actually very insightful. That it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. It has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than humans can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go behind, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, the autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I did show pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the project Elias. Also, there are like land machines also. This Mars project, for instance, this Black Hermit, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together, and there is a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence toward the strategy of the war as well. Next, please. So there are, of course, drones are one example, which artificial intelligence has been applied extensively. And there are so many examples of drones, like, of course, several of them are teleoperated. But the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the applications areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example,
one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if we look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if we look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 13.4% annually. So this is according to the Emerson. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. If you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. Actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are other statistics. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I'm talking about, that apart from the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. Once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like I think PFs and Type will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level, there is infrastructure, of course. So like this is the hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. This can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that, a lot of applications which are, like for example, application areas that may be particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually the reason why some of the game kind of scenarios are generated, multi-agents cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for machines for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8% the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision, so many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please.
So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts, and the proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. First financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you can enter some fact of that case into the system. And most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And even if the decision is made directly by the judge himself, like AI, of course, does right now, the system, AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just, go quickly through the slides. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the CENTAIC, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a Medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. We know that 5th generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a complete summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies are now spun off to companies like the last one. And this one, for example, this is where we, for example, detect various vehicles. Some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that it can track which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons, for instance. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, at a different side, like not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. We can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from doubt. So this is good for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detect a weapon only may not mean a lot. But something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face recognition technology, using our completely home-developed systems, actually. Next, please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment. Another one for breast cancer. Next, please. So these are two other systems. Brainways, there's a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which, for example, we all know about, is the AI TechVerse competition that we organize. So this is initially it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled, inshallah, in
the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1,000,000 in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer prize money for the one who developed the best product, you're welcome to contribute to this. And otherwise, also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CAIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month-long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried up the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे। बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 4 p.m. Hello, greetings. I'm Parvez Madraswala. I'm director at Powerhouse Private Limited. And we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefit the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great
exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get the benefit and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition as they always do. And we see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. हम करने जा रहे हैं शूटिंग कंपटीशन। ये हैंड गन का पिस्टल के साथ जो माहिर निशानाबाज हैं ये उनके लिए है। एक तो हम शूटर्स हैं उनके लिए तो हम करते रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल इवेंट है जो कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। हमारी टीम आती थी बाहर के मुल्क में ये इवेंट खेलने के, तो हमने कहा कि जो चीज़ बाहर होती है लेट्स ब्रिंग देम टू पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सब खास बात यह है कि जितनी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, रेंजर्स है, ASF है, या इवन जो बाकी प्रोविंस की जितनी पुलिस है, कमांड्स हैं, इन सबको हमने इनवाइट किया है कि वो अपनी स्किल्स के साथ जो अपने प्रोफेशनल शूटर्स वो आके इस इवेंट में हिस्सा लें और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए इसमें सब चैलेंज किया है। और हमने कुछ इसमें इनामात रखे हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज रखे हैं। उसके अलावा जब हम ये अरेंज करने जा रहे थे तो पर्सनल तो हम शूटिंग करते रहते हैं, तो सिविलियन जो के शूटर्स हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई कि हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सिविलियन कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविलियंस हैं जिनके लाइसेंस वेपन है वो आके अपने शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं और इसमें एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा लें। फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ हमारी वुमेन की आबादी है, तो खवातीन के लिए हमने स्पेशल कैटेगरी रखी। इसमें जो भी खवातीन शूटर्स जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जिनको लाइसेंस वेपन है वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी अपनी जो स्किल्स हैं उसको आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेंस डे पे रखा था, मगर क्योंकि चैलम का मौका है और इसमें तमाम हमारे लोग मसरूफ़ हैं तो हमने इसको 9 सितंबर पर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे एक पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बाहर जाए और ये जब हम देखें कि जी पीसफुल लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से और सिंध पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन सपोर्ट के साथ इसको कर सक रहे हैं और इसमें जितने भी लोग हैं सब में इनवाइट करके इसमें आके हिस्सा लें और अपने स्किल्स आजमाएं। इस पर मैं शुक्रगुजार हूँ बदर एक्सपो का, उनकी टीम का, कि इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करें और इसको हम प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कर और ये जब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो एक बेहतर तौर पे हम पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के आगे रख सकें। थैंक यू। ये बताइए कितनी रोजा ये कंपटीशन है, कितने इसमें जो शूटर जो है इसके अंदर शिरकत करेंगे, उनकी जरा डिटेल। 1 डे कंपटीशन है, सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके अंदर जो लोग ना सिर्फ ये कि जो हिस्सा लेने आ रहे हैं, जो उनके साथ गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है जिसपे पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आए उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने वो रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो इसमें हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के आगे
कि न सिर्फ कंपटीशन हो रहा है बल्कि ये सिंध की रिवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने पीने। इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और लोकल। ये वो लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म पर्सन है। उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप को रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें जो खुद खेल रहा होता है उसकी अपनी तरफ से होती हैं। उसके लिए हमने POF वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना स्टॉल लगाए, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें, ताकि मैच डे पे कोई नया सरप्राइज ना मिले। तो ये सब के लिए हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट्स में काम करें, सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी है तो जो कॉन्सुलेट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं वो कुछ आएंगे जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करेंगे, और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी में। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आल्सो इनवाइटेड और वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है वो जरा थोड़ा सा। मकसद ये कि हमारे लड़के, आप ये मेरी शूटिंग टीम का खड़े हो जाएं, हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा इंस्पेक्टर शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कराची में। ये वो लोग हैं जो शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो वो जो लोग वहाँ पे देख के आए, सीख के आए, हम उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे इनका कर रहे हैं। नॉर्मली बाहर ये मैसेज पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, सेफ नहीं है, तो इनके लिए मैसेज है कि यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल है। सब बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ऐसे हम भी यहाँ पे करते हैं। और तमाम जितने भी फोर्सेज हैं उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने के लिए, जब बाहर जगह से लोग आएंगे, एक दिन अपने एक गुजारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है और वो सिंध की मान नवाजी से मुस्तफीद होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो कि ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दे रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर है, नॉर्मल है, और हम भी वही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि दुनिया में किसी और जगह पे होती है। देयर इज नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आपको यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं और उसकी हिस्सा लेने के लिए। रिसेंटली हमने देखा कि जब शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था तो आप लोग फोर्सेस भी बनाई गई थी। अब वायलेंस ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या SSQ कुछ प्लान कर रहा है दोबारा से स्ट्रीट क्राइम में कोई एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली आपने 15 का जो काउंटर हुआ था आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? SSU ही ऑपरेट कर रहा है, SSU की टीम वहाँ बैठी हुई है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम उधर पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं। मगर उसके अलावा जो 15 की जो सर्विस है दैट इज़ रन बाय द SSU, उन्हीं के लोगों से, और हम पब्लिक की मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है शहरियों में, अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है और ये डेटरेंस, ये खौफ क्रिमिनल्स, ये उस चीज़ को करने का बायस बनता है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उसको कर रहे हैं और आइंदा इसी तरीके से करते हैं। स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टीम आई हुई है, अब जब इसमें पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए उनको हमने लिमिटेड किया है। और 20 लोगों की टीम है, वो जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम उसको भेजते हैं, मगर मेनली उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम होगी, इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज को भी स्केटिंग में देखेंगे, उनकी लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज को भी देखेंगे। तो दैट इज़ फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली।
मेहमान साहब ये बताइएगा कि इस डिबेट का बजट है, दूसरा ये बताइएगा कि कराची में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं ड्रीम प्लान के हवाले से, और ये कहा जाता है कि एसएसपी कमांडो जो है वो सड़कों पे रहेंगे, जो खाना है वो कई मोहल्लों को देखेगी, कहीं पे भी एसएसपी कमांडो की गाड़ियां और जो पेट्रोलिंग है वो दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से आपको बताया वन फाइव में मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पॉन्स, तो वन फाइव की एक अलग बात अलग से थी, लेकिन जो एसएसपी के कमांडोज है हॉटस्पॉट पे खड़े होते थे, एक दो दफा जो तस्वीरें भी शायद की गई थी उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी। जब कराची पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आती है कि हमें यह रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा जो 15 की भी हमने स्ट्रेंथन की है वो एसएसयू के कमांडो से की है, तभी ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में वो 24/7 काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी मजीद तो इंशाल्लाह उसी तरीके से हॉटस्पॉट्स को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई बजट नहीं है, जो आपकी फीस है उसी से हम उनका जो खर्चा वही निकालेंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 2000 रखी है फॉर यूनिफॉर्म पर्सन, 5000 फॉर सिविलियन पर्सन, और फीमेल कैटेगरी की भी 2000 फीस। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एसएचयू को फॉलो कर रहे हैं और एसएचयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पल तौर पे पेश कर सकें, जिसकी परफॉर्मेंस है खाली न सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक उम्मीद की किरण है कि जब एसएसयू के जवान बेहतर हो सकते हैं, बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा इकदाम है। इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% है सिंध पुलिस के, तो 2% बेहतर हो गया है। 98% इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बना है। इसी तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर हो सकेगा। जी, ये हमारा चौकंडी में एसयू का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं और वहीं पे हम सारा कुछ शूटिंग रेंज सा कुछ वहाँ पे हमने बनाया। हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइम लगेगा, चीज़ों को सिस्टम ठीक होने में जनरेशंस लगी है। एक उसकी तरफ कदम है। शुरू में आप देखें कि मोटरवे पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर होगा, उस पुलिस के लोग जाके वहाँ काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक से मुतमईन होती है। एसएसयू की ये एक थोड़ी स्ट्रगल है, टाइम लगा इन चीज़ों को, मगर कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन पे हम चल, वक्त आएगा कि सारे लोग इसी तरीके बेहतर तौर पे काम करते हैं। हम एक ये कर सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिन लाइसेंस वेपन है आपस में मुकाबला करें, उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आप अपने वेपन्स के साथ हैं, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपने स्किल्स वेपन्स के साथ हैं, वहीं पे अपने आपस में मुकाबला करें, उसकी हम प्राइस की कैटेगरी अलग से करें। उसमें आपसे रिक्वेस्ट और अब ये होने वाला है, बहुत जल्द ये आगाज आएगा, तो आपने इतना अर्सा काम किया, अब ये एक्चुअली होने जा रहा है, तो उसमें ना होना क्या आपके लिए फीलिंग है? इस हवाले से ये भी समझ आ रही थी कि आपने कोई प्रपोज की थी, एनआरटीसी को दे दिया गया बजट और नहीं चाहते थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा लो कॉस्ट ले रहे थे, लेकिन आपने जो एनआरटीसी किया इसमें क्या फीलिंग? उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सब लोगों को पता है। हम और इसमें हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट पुट करें, चाहे एक्स करे या वाई करे या जेड करे। हमने हमारी मेहनत का ये हुआ कि हमने डॉलर्स में प्राइस लॉक कर दी, हमने वो मार्जिन्स खत्म कर दिए, लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हाफ करके हम जो 200 मिलियन की कॉस्ट थी 100 मिलियन कर दी। अब 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो ए टीम करे चाहे बी टीम करे। उसका ये फायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन सेट कर दी, हम चीज़ें बता दी कि किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल तौर पे एक पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया जो अभी लगा हुआ है, इसको फॉलो करें तो हो जाए। तो इंशाल्लाह उसी गाइडलाइन पे करेंगे, और इसमें जब भी होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। इस चीज़ से हमने इंशाल्लाह होपफुल है कि आगे भी चीज़ें बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं बीटीएल मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास मेडिकल सेगमेंट में है, एस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं
और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास है। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हम उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम, क्योंकि हम आप देखते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह मेरे सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर रोबोटिक है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि बोन्स के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट्स की मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन्स भी लगी हुई हैं, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ पे सपोर्टिव है और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो हैं। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैसे चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं। इवन जेडीसी वाले भी आए हैं हमारे पास जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर और हमने डॉक्टर से भी बात की है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आनी चाहिए और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
Ladies and gentlemen, in next few minutes, I shall brief upon the sayings and an overview of the Defence Export Promotion Organization and the ideas, mainly dealing on the objectives and the organization does by its. And thereafter, we will have a particular documentary which will take you through the journey of the depot and the activities of ideas. It was raised in 2000 under Joint Staff Headquarters, which was later placed under Ministry of Defence Production in 2002. Since then, depot is working with the ambit of MODP. The basic aim was to promote, project Pakistan military's industrial promise and defence export potential. All core functions of the depot are performed in the corporate model with no financial burden on national exchequer. The vision statement, which has been spelled out for the depot, reads: as a national platform, provides support to the defence manufacturing, service sector, and the export chain through promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. Then in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000, and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defence industry, wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on advertising of the private defence industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in future. We will also focus on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship event of IDRs. As you are aware, the IDRs is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Then when the
main objectives which are actually desired to be accrued out of the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now, with this gentleman's brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these, whatever I have spelled out about ideas and depot, how did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान के ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हम उनकी शिफात नसीब फरमा बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता मैं इवेंट के साथ 2005 से एसोसिएटेड हूँ 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी उसके बाद से ये मतलब इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड के भी इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन लाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी क्या दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें मतलब उस वक्त डेपो से था मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में कई मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़ एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था बैक एंड पे काम करते थे बट देन with the passage of time they have become too good for this event and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan bahut acha kaam hai मेरा नाम असलम खान है ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची 11वीं आज के हवाले से आज ब्रीफिंग और हमें जिस तरह बताया गया कि 229 पार्टिसिपेंट होंगे 100 से ज्यादा ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे पहली आइडियाज से हम
यहाँ तक पहुंचे कि इसमें 2 नए मुल्क आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। माजी में अगर हम बात करें कि ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उस खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत औसत थी हमारे लिए। पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह अच्छे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के पहले गाड़े की मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये अब मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरा तैयार है। किसी भी दुश्मनी जारियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ और जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 से जब 2020 में हमको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह अब इसकी इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2008 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फेशंस आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया तमाम बरे-आज़म में हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। इस वक्त भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस आगे बढ़ाएं और इसके साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनकी भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल जैसे मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे साथ वो सिक्योरिटी चेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते और इस तरीके की होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फायदा। इस तरह हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स होगा। इसका टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इस तरह जो सेकंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया, वो इनको सुने, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की स्कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर, उसके बाकी कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा मिलती रही है, पास मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, दे वर हेल्ड एट सीएम हाउस। सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से सीएम से इंस्ट्रक्शन मिली वो पॉजिटिव हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो इससे बहुत हमारे लिए आसान है। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to IDS the 3rd time.
we have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of abilities we have in the defense industry, and we can what sort of capabilities we can export and assist the other armies of the world with. I would also like to thank Badar Expo Solutions, because Badar Expo is basically organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new players, SCUA MP and SCUA Mini at Ideas, which are binoculars with the LRF. This is this is SCUA MP mounted over here, which is a LRF based SCUA binocular that can be used in daytime or night time to give the forces image, also with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि ऐसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको कंडक्ट करा सके, तो ये अब 4 साल के बाद है, तो उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरा इसके लिए तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कंफर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्निटरीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिशन में आ रहे हैं। और इसी साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस है, वो ये है कि सर हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ, और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन को शोकेस कर सकें। इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस आगे बढ़ाएं, और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम उनके भी जॉइंट वेंचर्स हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेका किया जाएगा, तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएँ वो लेके जाएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है जो हुआ करते थे, और इस तरह की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का इवेंट कंडक्ट होना हमारी इकोनॉमी को भी से फ़ायदा होगा। इसमें हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक़िद करवा रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 सेक्शन होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 है, वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका निकात किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट विल बी सेकंड डे आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रिंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स इनवाइट किया हुआ, वो उनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर, बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास में भी मिली है, इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट CM हाउस
CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले, उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया, तो उससे बहुत हमारे लिए आसान है। जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें। इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम मतलब ये मिल के ये एक बड़ा काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टेम बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स हो हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह इवेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। ये पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। जी आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान एक बड़ा मोमेंटस सीजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था
और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हर स्टैंड पे साथ मैंने 50 से ज़्यादा गेस्ट्स को मैंने खुद रिसीव की हैं, इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स के एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन, बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये एक बहुत रीयल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आपसे करते हैं। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 5 p.m. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडिया है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 85 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं, और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं तो आपस में मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन काम करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोविड गुजरने के बाद आइडियाज़ हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2000 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये इम्पोर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर पे जाए। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडिया सा नहीं था, बैक एंड पर रह के काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they've improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा है। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers,
Chief Mr. Singh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Service Chiefs, Director General, Defense Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defense Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defense Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I'm very pleased to see the presence of a large number of, including honorable delegates, exhibitors, and trade visitors who traveled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens us all to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe. Pakistan was on the precipice of a default. And shukr alhamdulillah, by the grace of God and efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we've witnessed in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition, the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and is cause economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political party change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our from the FATF Grey List, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, the 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10%
of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We do share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we, Pakistan, experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And after our own experience, that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we can do business with the state. Internal consolidation alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain,
but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that beset our region for many decades also need a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, essential to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which curtail the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's
deeply embedded and mutually beneficial relations with international fraternity. I would say that ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the ideas slogan, Armed Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and putting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I'm also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan, Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defense Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, in use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associated with the happenings around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need a lot of exercise to understand. For a normal mind, it will need, okay, if the floods come in a certain area, how does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out.
Now, taking these two examples on the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is played by the global players at various levels, and if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think, from what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may change very suddenly, and we may find that sometime in the near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I am certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for, and as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities.
Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought, and I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Major Muhammad, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a great honor to me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, Galaxy of senior and retired officers from our our guests on national media, this group and government. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing Ukraine with one March International Exhibition China 2022, better known by its acronym IDEA. Ladies and gentlemen, we entered into the National Defense Exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor, and foreign delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that General Ahmed this year was the DC then, and we had a record participation across the world. The opportunity to explain the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of available space today. Needless to say, that 2022 will be much bigger in size and richer than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries. In fact, we received positive response from the honorable invitees. It has established itself as an attractive and grand venue to promote future understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great ability to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability and potential talent. Aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of the Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEA's 2020. I would also like to thank the Ministry of Communication and Director General of Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying holding of another edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would all like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this venue. I thank you, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad.
Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I will briefly touch upon the salience and overview of defense support promotion and fights, mainly on the objectives and what the organization does by itself. And then we will have a total documentary which will the journey of the depot and the activity of the ideas. Depot was based in 2000, our staff quarters, which lay based in under Ministry of Defense Production in 2002. Since then, Depot is working under the ambit of MODP. The vision was to promote and protect Pakistan military's industrial promise and defense its full potential. All core functions of the depot are performed in a corporate model with no financial burden on national exchequer. The vision statement, which has been spelled out for the depot, reads: a national platform for export to the defense manufacturing, service sector, and the export through promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot is to undertake promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking for the defense industry. It organizes defense exhibitions inland and abroad, including flagship event of ideas, establishes Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 7 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually managed a little while ago. With the international exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Law. 2 editions of the Defense Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000, and it has grown over a period of time both in stature as well as size. Other than these core subjects, the depot also maintains an international standard space center here at Islamabad.
We carried out an extensive mapping of the private defense industry, wherein our potential buyers across the globe are directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense product catalog has been prepared, which is not only available online, but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts, which is basically focused on advertising of the private defense industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small scale manufacturers, basically to link them with the large scale manufacturers and our private and public large scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship event of IDRs. As you are aware, the IDRs is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and security. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. There are main objectives which are actually designed to be achieved out the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentlemen, brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these whatever I have spelled out about ideas and depot, how did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। The new metro player, the international defense exhibition, and seminar, both known as Ideas Gain Center in Market. The exhibition has grown in scope and scale in fact for 2 years, and I feel satisfied to see Pakistan events in a relatively new ground for us. Over the years, Ideas has become a great meeting place for defensives, high-level defense delegates, analysts, and traders from all over the world. This rendezvous of Ideas provides excellent opportunity to better understanding and friendship mapping defense industry for trade matters, and more importantly, seeing available solutions to meet the challenges we face by the defense industry. I would say I am really proud of the progress which IDEA has made, which is driven by an overwhelmingly participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors in last IDEA held in year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors a design against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle-hardened and known for the world over. Our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance on the road is a clear manifestation of devotion to duty and defense skills. The motto of this exhibition, Arms Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with all and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-attack missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, and aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis to responsible arms trade. Honorable guests, holding of IDEA is a reflection of Pakistan's
consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures, in addition to indigenous production. Having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with renewed zeal and enthusiasm. I wish organizers of this event success in the conduct of Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in our this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated teams and media houses who have selected the event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, Mindabad. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया फातिमा है और मैं यहाँ पे बचत एक्सपो में खड़ी हूँ और ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं बदर एक्सपो। और हमारी आइसक्रीम कंपनी का नाम है केटी आइसक्रीम, जो कि हमें बहुत अच्छी है, जो कि और 1 स्कूप इसमें 100 रुपीज़ का यहाँ पर चल रहा है। और इसमें करंज कुल्फ़ा है, रबड़ी कुल्फ़ा है, पिस्ता रबड़ी है और मैग्नम है, कुल्फ़ा है, वो स्कूप्स में है और लीटर वगैरह 1.5 लीटर भी है इसमें। Assalamualaikum. I'm Kuratulain. I'm brand manager of Popular Dairy और यहाँ पर बदर एक्सपो पे हम कल से मौजूद हैं और यहाँ पर फुटफॉल अच्छा है, लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हमने हमारा प्रोडक्ट है पॉपुलर का फ्लेवर्ड मिलकर, इसके लिए भी हमने बड़ी अच्छी स्कीम लगा के रखी हुई है। वैसे इस पे 5 रुपये वैसे भी ऑफ है, लेकिन अगर आप इसको 500 तक की परचेज करते हैं तो आपको इस पे 2 पैक्स फ्री भी मिलने वाले हैं। बाकी पॉपुलर ग्रुप के हमारी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। माज़ा का है, जैसे ये हमारा माज़ा को डील कर रहे हैं, माज़ा में बताएंगे कि हमें कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी बचत इस पे लगी हुई है। महमूद पॉपुलर फूड को डील कर रहा हूँ। हम जो है तकरीबन 30% डिस्काउंट पे यहाँ पर सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, हर चीज़ हम आपको 30% डिस्काउंट पे देंगे। बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया है। ईद के मौके पर बचत के लिए बाजार लगाया गया है। अगर यहाँ पर आके आप ईद के मौके पर दी गई सेल को, बचत को, ऑफ को It's 6 p.m. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of I-22. Ideas जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में, से पहले 4 साल पहले हुआ था। It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं। फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर
who has CCV line technology. और इस अलावा we have aluminum alloy plant. We are the schema gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first fast tasdeeq. We are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also launched the fast tasdeeq कि आप जब भी फास्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that fast serves you with a real quality, and we are a manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kV, and also we are manufacturing green reactor जो कि एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट की है, और हम जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग वो आइडिया जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. As outreach manager from ISPR, we have a stall here in Ideas 22. It's a हिलाल publication. सभी जानते हैं कि हिलाल publications जो है वो 1948 से publish हो रहा है, और अभी हम यहाँ पे आइडियाज़ में अपने जो मैगजीन्स और बुक्स को डिस्प्ले करने के लिए आए हैं. बिकॉज आर्म फोर्सेस मैगजीन हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यहाँ पे अपनी जो है आर्म फोर्सेस में जो हमारी मैगजीन्स रिलीज हो रही है, इसका मोटिव जिसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्कस एरियाज़ को हम स्पेशली वो अपने टेक्स्ट में हाईलाइट कर रहे हैं. इट्स अवेलेबल हेयर, एंड हम उसमें एडिशनली जो है आइडियाज़ के ऊपर स्पेसिफिक जो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स पे. सो आइडियाज़ विल बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशंस. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें. My name is Özgür Cankara. I am the Vice President in Meteksan Defense. Meteksan Defense is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan Pakistan sector for 3 years. We are the supplier of the Yakamos sonar, which will be used in the Milgem ship, which will be delivered by Aswad. So today we are in the expo presenting our sonar systems, including Yakamos. And more than that, we are also supplying submarine sonar systems. We are promoting our newest products, which we have already delivered to the Turkish Navy. And I think all these will support the Pakistan Armed Forces and Navy and Air Forces in that sense. So we went through the nitty-gritty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit and put the discussion in a context, the context which is very important. Personally, I'm basically a computer science person, technology person, and I'm too afraid of technology. You can't imagine how much afraid I have stopped using PowerPoint technology for the last 20 years now. I believe I'm better because this is distracting, right? So this is distracting to
to what I was doing. And you can actually see those PowerPoint slides were distracting actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, was not made for some other context. And my advice to all the students basically is, I'm trying to, but I'm not able to ban the PowerPoint slides from the classroom. Basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert butcher will be able to make that meat into a beautiful piece of something eatable. And the same knife in a nincompoop me who doesn't know how to use the knife will simply spoil it. That is as true with the technology, such as a simple knife. It is as true with the more sophisticated technology like a PowerPoint slide, and even more sophisticated technology like the graphics. So these graphics help, but they help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G, to be replaced with 4G, to be replaced with 5G, to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us. So we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Norvig and Noam Chomsky. The basic issue today where we are using data, and I think that example is very well put. We have all the data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We have been taking those readings for the last, say, 20 years, and we have a massive database which can precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because the Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data that we have is of course efficient, is of course speedy, it of course scales up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of the major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool that has to be used, but it has to be used in a sparing fashion. We just saw what the soft power of USA versus hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for time, it happens, and it is an essential part, but we must not lose sight of the greater picture of our life. So the technology is as bad as the people using it. If the people are not good, I don't know what will happen. As the speakers pointed out, that in most of the cases, we are using the same password that was given by the manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of the cases, even in Pakistan also. So, and this was also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in
all the viruses that one wants. And the machines, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It was really an nincompoop of the manufacturer not to have put when to shut that machine getting such and such signal. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not panacea. It's good for solving specific problems, directed problems, and solving particular issues, very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the humans will have to take and shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and repetitive acts that are coming in require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or be useful for us and the context in which it will not. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up their loyalty to an extent where it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in other countries, and it can and is happening around us also. We need to be aware of that, and we need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just a fake news or a fake alarm. So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussion, and we need to be aware about their philosophical understandings also, just not believing in the technology as a panacea for all. I would like to thank the the speakers over here for taking time out and doing an interesting and a wonderful discussion. It was a great learning exercise, and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan and managed by Badar Expo Solutions is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar IDEA 2022, which will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide opportunity for G2G, B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition. Speakers, experts from public and private sectors will share their views on artificial intelligence defence market. IDEA will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. Assalamu alaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDEA 2022. जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल्स द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज CCV टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Tasdeeq, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also launched the fast तस्दीक कि आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kVs, and also we are manufacturing green meter, जो कि हमने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है और हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को
और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो एनर्जाइज कर रहे हैं। सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। थैंक यू। Is 2020 brings together stakeholders across diverse industries. The which is a platform for E2G, B2G, B2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The competition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. देखिए ऑब्वियसली आइडियाज़ जिस तरह आपने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक बड़ा ब्रिज का काम था। तो कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन दिस ईयर दे डूइंग इट एंड आई थिंक वी विल कैच अप टू व्हाट वी हैव मिस्ड आउट। बट येट अगेन आइडियाज़ का सक्सेशन में होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क का ग्लोबल परसेप्शन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं इसमें पूरी दुनिया की मिलिट्रीज आती हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज ले जाने में आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस लेवल का ये इवेंट है, जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, ये अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स, एक तो टॉप क्लास स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री हो गई, डेपो हो गया, बदर एक्सपो हो गया, या लोकल आपके जितने बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज पुट अप इन पाकिस्तान। और कराची खुशकिस्मत है कि हर साल कराची में होता है। थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो कंपटीशन टू इट। पुटिंग पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल स्केल इन डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन आवर रिक्वायरमेंट्स इज व्हाट इज पिच्ड रियली वेल इन आइडियाज़। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The foreign exhibition is a platform for G2G, B2G, joint ventures and investments in the sector. A seminar will also be held to facilitate discussion on changes within the defense sector. The competition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. brings together stakeholders on different industries. The organization was a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the construction sector. A seminar will also be to facilitate discussions on challenges within the defense sector. The competition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about geocentric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction of the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 4, they are about the military. How are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial, can be used for the future battlefields? And the last but not least, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have slide, you can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left. No, previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we can connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive communications, which is later on will be used for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic cases or big cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. If we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture showing how we can compare the 5G with the 4G. 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G. I think it's very important. But here I just want to show you that with all the KPIs, all this performance, have very big possibilities to use it in various types of use cases, for smart cities, for mobile broadband, for the outside controls, real-time telematics, and so on and so on. And of course, 5.2 AI and also edge computing. Next slide. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. 2022, the release 7 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. Countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies also used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million. This is quite a significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key elements. I don't know if you can read the slides because the font is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations.
in which most of the network functions will be virtualized. And then also software-defined network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is set parameters, can be very easily changed and done for different types of use cases. And then orchestrations, end-to-end orchestrations, this is done is using AI. And then cloud native mobile computing and millimeter wave. Next slide. So all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for military. This is a few examples like the one done by LMT and then Fineable and so on and so on. Next. Okay, so like explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because the quality of connectivity, the very low latency, and so on. First, thinking about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefield. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high density, and very low latencies. Also for the Pro-C, 5G for the AR, VR, augmented reality and the virtual reality, also the reality, and also for the intelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has a big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here, the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20. The big contribution comes from the smaller cells. It's 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked to each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, in the after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling, but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one. And the next one. Next. The next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, it's cloud computing, and so on. All the softwareizations, and has very big impact on the security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning the security problem difference. So we need a different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like last said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G, but because of variety of use cases, meaning that it's also increasing the surface of for attacks.
That's why this is very concerned to use 5G for military. Next slide, please. And of course, the security stuff is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is the what we call it, the inner was rectangular. After there are some security issues which is the process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next, that will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Together stakeholders across the defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of it will be held on 1922 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telecom cables, that is optic fiber cables, copper telephone cables, ducts, pipe, and jointing materials. We are here today in Ideas to exhibit our new products, to the fiber to the home, fiber to the roof, and a lot of other new varieties are demonstrated here. And inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for the development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रज़ा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आइडियाज़ का आइडिया ही बड़ा यूनिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा भी शिरकत करें। और माजी में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जहाँ सिर्फ न सिर्फ हमारी जो आर्ट इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, बल्कि शहरियों के लिए दिलचस्पी का बायस होती है। इसलिए 3-4 दिन जितने दिन भी ये एग्जीबिशन चलती है, शहरी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये इवेंट बड़ा कामयाब हो और ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर इवेंट हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारक देता हूँ। सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की मुबारक।
ADS 2020 will bring together stakeholders across diverse defense industries. The 4th exhibition for platform for G2G, joint ventures, and investment sector. A strategic seminar will also facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The 12th edition of GIT will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Bhutto Zardari, Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal and Provincial Ministers, Chairman Joint Chief of Staff Committee, Services Chief, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of National and International Defense Exhibitors, OEMs, academia, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defence Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for gracing this occasion, 11th edition of Internal Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. I'm grateful to the worthy guests and dignitaries from participating countries, foreign and domestic exhibitors, OEs, trade directors, and diplomats for their healthy presence make Ideas 2022 a great success. I also warmly welcome all those who join us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I know you that it is you who make the event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry is always a strategic interest of any nation. Today, it is regarded as one of the major businesses in the world, alone accounting for approximately 2.2% of world GDP. On the other hand, globalization of defense industry has also changed the geography of innovation with new players, partners, and opportunities. New strategic alliances ranging from consortia to joint ventures have become a norm of the day both in the domestic and foreign industry. In the regional context, prevailing military relations have further accentuated our desire to develop an agile and innovative defense industry, not only as an instrument of peace and stability, but also for its contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has the potential to emerge as a global leader for defense, research, growth, manufacturing, and ventures, and to strengthen our defense capabilities, support developments as well as exports in this sector. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industries today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resource, and infrastructure, not only to meet its own defense requirement, but also explore international defense markets. Major defense products are manufactured by the government defense production establishment. Private defense industry is also instrumental in high-quality supportive equipment and services. Joint development and production of main battle tanks, Al-Khalid and Al-Zara, aircrafts, J-17, K-8, Super Mashak, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, fast attack missile crafts, different variants of PCs, air launch munitions, small arms and higher grade explosive, a few to mention in this regard. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clearly approaches for protecting and defending Pakistan's defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with dedicated efforts, regularity, initiatives, and incentives have led to improved defense manufacturing and quality services. Resultantly, Pakistan's defense exports are steadily growing, and today it is touching the figure of $382 million US. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also to our
mutually rewarding relation with international fraternity. Today, we are the reliable export partner of more than 60 countries. Through mutual partnerships and joint ventures, industry's effort offers a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the significant role of the private sector in our industry. It is a fact that enhanced collaboration of the private sector in defense manufacturing will not only increase production, but also provide the much needed support to public sector enterprises. The growing indigenous sophistications of private sector is an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capabilities through partnership, involvement in R&D, joint manufacturing, marketing, and defense products at home and abroad. Ladies and gentlemen, while Ministry of Defense Production is fully committed to enhance the defense production of Pakistan, Internal Defense Exhibition and Seminar Ideas is our grand initiative to project defense production potential of Pakistan at par with international standards. Indeed, Ideas 2022 is aimed to serve as a bridge between defense industry entrepreneurs, traders, R&D specialists, financial experts, and policy makers for capability enhancement and effective business. The other significance of the event is holding a strategic seminar on artificial intelligence in defense, paradigm shift, multi-strategy, and national security. During Ideas 2022, the academic discourse in the seminar will mainly help government to optimize the defense policy and priorities of Pakistan. I am certain the participants will accrue maximum benefit from this event. I congratulate DEPO for organizing this event of national significance and playing their part in promote the growth of Pakistan's defense industry. DEPO has surely been successful in providing such a rich and ready platform to a large number of friends and partners across the globe. Besides conducting ideas, it acts as a window national forum for promotion, facilitation, and coordination of export and defense-related products from Pakistan. This opportunity, I encourage all stakeholders to make use of DEPO's platform for enhancing defense exports. My special gratitude for federal and provincial ministers, Pakistan's armed forces, law enforcement agencies, Karachi Metropolitan Corporation, and Government of Sindh, who rendered all-out support to make this a great success. I also greatly appreciate the effort of our event organizer, Badar Expo Solutions, who utterly marketed as 2022 worldwide and very professionally organized this show. And I would like to thank Honorable Foreign Minister, all the guests for gracious opening with their presence. Thank you all. Pakistan Zindabad. I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. Served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well.
People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan, who has imported a huge manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodi, Morax, Matador, 748. In our COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. There's a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half kg and allows 250 puffs. So it was very much in COVID days when people weren't finding oxygen, they would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing completely. This is basically, it is installed on the tank, storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you real-time data of what inside the tank is. For example, the liquid oxygen, which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize what level inside is and when do they need to replenish it. ये कृषि गारमेंट्स का, यहाँ हम खड़े हुए हैं कृषि गारमेंट्स की तरफ बचत एक्सपो में आपको बहुत मुनासिब प्राइस पर इसी केस से मेंस की टी शर्ट्स प्राइस है एक्सपोर्ट की है। आप लोग आइए और ज़रूर धमाकेदार ऑफर से पाइए। अगर आप चाहें तो आपको प्राइस तो लगा कर दें। ये 400 टी शर्ट 300 की चार्ट दें। इसी से टी शर्ट्स हैं 100 से 1000 की दो, हर एक शर्ट्स पर कोई ना कोई ऑफर लगी है। असल मेरा नाम समद आलम है, मैं ओसाका लाइटिंग एम्प्लॉय हूँ। हमने यहाँ पे बचत एक्सपो की सेकेंड एडिशन में यहाँ पे इंस्टॉल लगाया है और यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्स का। इसके अलावा एक्सपो तो अच्छा लगा। पहला एडिशन जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था लोगों के, फायदा और काफ़ी लोग भी ज़्यादा आए थे। और उसके अलावा बाहर मंडी लोगों ने लगाई है, बच्चा लोगों ने दफ़ा ये भी एक्सपीरियंस रहा कि मंडी भी लगी है इस दफ़ा, ताकि लोगों को कम से कम अच्छी चीज़ मिल सके। और यहाँ पे रिव्यू वगैरह तो सही है बने आ रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ आते हैं लोगों को कम से कम में अच्छी चीज़ पहुँचाने के लिए, ताकि बजट में कम से कम में ज़्यादा डिस्काउंट में हम लोगों को अपना ब्रांड यहाँ पे पहुँचा सकें, लोगों तक ये ब्रांड पहुँचा सकें कम रेटों में और अच्छी चीज़ पहुँचा सकें। और नॉर्मल बंदा कर सकता है थोड़ा जिनकी मार्केट हो, वो यहाँ पे हम 20% 30% तक हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं सिर्फ बचत एग्जीबिशन के लिए। और बदर वालों का भी गुजारिश शुक्र करेंगे हम के अच्छा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर दफ़ा। सीजन 1 में भी काफ़ी अच्छा स्पॉन्सर रहा था, बचत में बड़ा सपोर्ट किया था। जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक्त मकसद यही था जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर की जाए। और उसी को लेके इतनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोज बनाए लाइक पीस, और पाकिस्तान का वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, होना चाहिए था। तो जब सेडियाज आया है तो हमने अपने शेयर शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऐप, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव पाकिस्तान का है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान की कितनी ताकत है, ऐसी पावर है कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत चीज़ें बना रहा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। तो सपोर्ट करते हैं, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके भी बहुत बेनिफिशियल है। जिस बताया लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए, बस वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो रोड में देखते हैं तो ये गार खाने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड बनी हुई है, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो पता चलता है तो इट्स वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जाके अपना इमेज हमारा जो है पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since the time ideas have started. And others वो जो है वो और ideas जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे जुड़े हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फायदा नुकसान क्या है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उस हिसाब से इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंडीशन है टू हाईलाइट आइडियाज, टू पुट आइडियाज ऑन अ वेरी हायर पेडिस्टल
अब्दुल्ला। Numerous is aiming for you defensible proceeding and made of the objects and organizations. I will have a document which will take you to the journey and activity of the ideas. Back in 2000, under George was later placed under Ministry of Production in 2006 and was working under the basic to grow and take on the industry promise and export protection. All core functions of the level are on the corporate model with no function on national exchange. As a national platform provides support defense manufacturing, service sector, and the export to promotion and coordination for sustained growth of defense exports. To this way, the agency undertakes promotion, facilitation, coordination of business opportunities and for the defense industry. Organizes defense exhibitions both inland and abroad, including the flagship PBT ideas, such as partner related across the globe. Badar, ECHO establishes 14 parks and pavilions annually across the globe in different countries for own defense production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was mentioned a while ago. With regard to exhibitions, the national organizing editions of the supply and vendor defense exhibition law in concert with the Chamber of Commerce. 2 editions of defense exhibition at Love Expo and Rawalpindi in third with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Expo Turkey at Islamabad. The idea has been a flagship event which is conducted by since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these courses, the lab also maintains an international space center here in Islamabad. We have built up an extensive map of private defense industry where the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense product log has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreigners and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, we also conduct seminars other than the main seminar class. I'll just briefly touch upon the centerpiece of these efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry and when the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private participate in World Defense Zone KSA without the government support. This participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense national as well as exhibitions. Yes, we are focused on the supply vendors and the small scale manufacturers basically to link them large scale manufacturers and private and large scale defense production enterprises. Now coming over the flagship event of ideas. As you are aware, Ideas is a event of international stature for Pakistan, which is a sought after tool for business and sharing. With such a interaction of the global defense industry, it serves a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus fully reflects the embedded mutually beneficial actions. Given the main objectives which are really desired to be out of the ideas creation of the business opportunity for the defense industry, both for the globe exhibitors as well as domestic exhibitors. Maximum numbers of domestic as well as international exhibitors, demonstrate organizational skills and increase in defense exports, in building of the country, promulgate one's point of view internationally, and reinforce diplomatic as the realm of diplomacy. Now with this gentleman with the brief introduction, I shall now take you to documentary which will show you both these that I have spelled out ideas and depot. It actually reach this where we are standing today. Thank you very much. I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company.
Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good news of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan, who has imported European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Fortrex, Matador, 47, 48. In our COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing it in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है, और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। तो प्रॉपर हमारा काम होता है, और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जाता है, और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करने हैं, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का है, और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत
अच्छी चीज़ें बना रहा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के, बाहर से वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज ही हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since the time ideas have started. And Badar Expo जो है वो और ideas जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, तो उसी हिसाब से फिर इन्होंने ये उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I will briefly touch upon the savings and overview support from the organization and the ideas. Make a list on the objectives and the organization does. Then I will have a little documentary to take you through the journey of the and the activities of the ideas. Released in 2000, among software projects, latest placed in Ministry of Transport in 2002. It says that Depot is the area of every. The basic aim was to promote and protect faster value promise and defense export potential. All core functions of the depot are formed in corporate model with no fracturing measure. The vision statement, which has been spelled out through the depot, reads as a platform provides support to the defense manufacturing sector and the export chain to promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities networking for the defense industry. It organizes defense exhibitions inland and abroad, including the pivot of the ideas. Establishes partner pavilions across the globe. Gentlemen, in this regard, depot established 12 to 14 parks and pavilions across the globe, different countries for our own defense production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition in Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Suppliers and Vendors Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad. Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defense industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online but has already also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ideas. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry and wherein the private sector is facilitated for international participation.
It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold the government support in the future. We also focus on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors, and the small-scale manufacturers, basically link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defense production enterprises. Now coming on to the flagship event of IDEAS. As you're aware, IDEAS is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives which are actually desired to be accrued out of the IDEAS include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this, gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these whatever I have spelled out about IDEAS and depot. How did it actually reach to this where we are standing today? Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मक़ाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफा नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company. And from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. I've served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. We are a company in Pakistan who has a European manufacturing throats, and our very renowned brand, they comprise of Zodiac, Trax, Matador, Voice, and Point. With this, when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg. And it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. My husband importing this product for many years. Now we are manufacturing house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, जितने कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल आता है। और 2 साल की हमारी वारंटी होती है, वो प्रॉपर हमारा काम होता है। और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा होता है। हाल में पाकिस्तान हमारा मटेरियल जाता है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन कराची में हमारी डिफरेंट साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है।
यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें पहला प्रोजेक्ट जो है ईगल 01, ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आप विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप उस ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो जीपीएस कनेक्शन होता है ड्रोन का, उसको जैम कर देते हैं। ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको जीपीएस लोकेशन का पता ना हो। ये जैमर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है मेरा, जो हम लोगों ने बनाया, हमारी लैब में बनाया। उसकी मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, मैं इस बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हो सकता है। जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। जितने भी मैंने एक्सपोज अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हाई रैंक ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अंदाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी दैट दिस एक्सपो every 2 years, after every 2 years, and I would suggest all engineers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal Bhutto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Isri, Director of Defense Production, Federal Minister, Chief of Staff of Pakistan Navy, Representative Armed Forces, Degrees, Bidders, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of the Sport Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of 11th International Defense Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a special day for us to host our esteemed guests from 57 countries. Honorable Minister, your presence is a great, immense value for us that you have graced this occasion as the chief guest. Your presence leads us, your keen pledge to our efforts in organizing ideas, and it's a source of inspiration for us. Distinguished, Pakistan defense industry is not only the force behind our arms, but also an instrument of national sovereignty and important social component of the country. Its progressive evolution has opened the new era of technological advancement, resulting into international market for quality products. Through mutual partnership, joint venture, Pakistan industry today's offer wide cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of the Government of Pakistan, DAPO is supporting export defense industry and serves to promotion, facilitation, and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprises called as SMEs. According to one estimate, 90% of business and half or more of the export is because of the private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in wealth production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich dividends for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar is a flagship event of the DAPO, which is organized by Lee for the latest technological demonstration of the national and national defense industry. The exhibition is regarded as the international rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top-level policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and expenditure in the field of defense production and security. Ladies and gentlemen, India is a leading event of Pakistan that brings together the global defense industry, synergy and business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan.
It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked to its full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries representing all parts of the globe. Besides this, the initiative of Ideas 2022 includes the creation of a space by establishing the newest stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. Ideas Karachi show is specifically organized for people of Karachi at Nishan-e Pakistan view. Pakistan Postal Services has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of independence of Pakistan. The austerity, culture, warmth of Pakistani culture will be demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in Ideas 2022. Ladies and gentlemen, last but not the least, let me acknowledge the organization whose support cooperation was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Introduction, Armed Forces of Pakistan, especially Headquarter 5 Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager, Badar Expo, putting up a very professional show, fielding a competent team, effectively marketing idea across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Paindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है वो जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुल नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो ब्रादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी खरीदारी किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल्जरार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये इसी तरह जाएगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कौम है उसके लिए बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का
वाटर टैंक का और वाल्स का, जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है। और 2 साल की हमारी वारंटी होती है, वो प्रॉपर हमारा काम होता है। और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जा है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल हंट 01। ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आपको विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है, जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं। सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको GPS लोकेशन का पता हो। ये एक जैमर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है मेरा, जो हम लोगों ने बनाया, हमारी लैब में बनाया। उसकी मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ का एक्स्ट्रा काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंड। जितने भी मैंने एक्सपोज अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हाई रैंक ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग भी इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes place every year after every 2 years, and I would suggest all engineers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Israr, Federal Minister for Production, Federal Ministers, Chief of the Naval Staff of Pakistan Navy, representatives of armed forces, dignitaries, exhibitors, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of the Sport Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of 11th International Exhibition and Seminar IDEA 2022. Today is a very special day for us to host our esteemed guests from 57 countries. Honorable Foreign Minister, your presence is a great immense value for us that are graced to Sukayan as the chief guest. Your presence indeed reflects your keen pledge to efforts in organizing ideas and it's a source of inspiration for us. Distinguished guest, Pakistan defense industry not only behind armed forces but also an instrument of national sovereignty and important social component of the country. Its progressive evolution has opened a new era of technological advancement resulting into international market for tea products. Through mutual partnership, joint venture, Pakistan industry, today there are wide areas of cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that the continuous assistance of the government of Pakistan, therefore is supporting export of defense industry and service through promotion, facilitation and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprise called as SMEs. According to one estimate, 90% of the business and half or more of the export is because of the private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an
indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in the wealth production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich dividend for the country. Ladies and gentlemen, International Defence Exhibition and Seminar is a flagship event of the depot, which is organized biennially for the latest technological demonstration of the national and international defence industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous for pros, research and development specialists, financial experts, top-level policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and sport venture in the field of production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event in Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation and excellence created here is meant to pave the way for international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of spacing, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked with full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of IDEA's 2022 includes the creation of extra space by establishing new stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA Karachi show is specifically organized for people of Karachi at Nishane Pakistan Seaview. Pakistan Postal Services has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA 75th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Pakistani culture will be demonstrated during various receptions in the honor dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to clearly mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing to the private sector of defense industry for their enhanced participation in IDEA's 2022. Ladies and gentlemen, last but not least, let me acknowledge the organization whose support and cooperation was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defence Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Quarter 5 Corps, Chief Minister of Sindh, State Development Authority of Pakistan, Defence Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager, Badar Expo, for putting up a very professional show, fielding a complete team and effectively marketing IDEA across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Pa Zindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची।
11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल-ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़े। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी झंडे गाड़े की मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए। हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। Assalamualaikum. My name is Ahmet Turul Özkan from Turkey, Aselsan company. Aselsan is the leading defense industry in Turkey, mainly involved in communication, weapon sites, satellite systems, electronic warfare systems, cruising weapon systems. We are here for promote our business with Pakistan Army as well as Air Force and Navy. Already engaged several projects here. And our main idea is to share our technology and our capabilities with our brother country, Pakistan. And my office established in Islamabad. I am the area manager of this company. And we are very close to the headquarters, Air Force, Navy and GHQ. So we expect that in this exhibition, several business opportunities which are also very new, this is available with us. This one is Gökdeniz project, which is engaged with Pakistan Navy to increase their capability, defense capability in Pakistan. This was my brief information about my company. Thank you very much and wish you Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद राशिद इकबाल तिरमिज़ी। मैं इंटीब्रेड को लुक आफ्टर कर रहा हूँ इस कंपनी का से और हमने स्टॉल यहाँ लगाया है और हमारी कंपनी को भी तकरीबन 10 महीने हो गए इंटीब्रेड और हम कराची को काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम हाइजीनिक ब्रेड पे काम है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ब्रेड हम बना रहे हैं जो कि यूरोपियन प्लांट पे तैयार की जाती है और हाइजीनिक सिस्टम के तहत तैयार की जाती है। इस वक्त इस ब्रेड कोई भी नहीं बना रहा क्योंकि हमने कंप्लीट एक प्लांट लगाया है। हम ब्रेड तमाम वेराइटीज़ को तैयार कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। एक्सपो में हमारा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। हमने रमज़ानों पे यहाँ पर स्टॉल लगाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसी को देखते हुए हमने जो है अब दोबारा यहाँ पर कोशिश की, बहुत अच्छा रहा है और लोगों की फीडबैक भी बहुत अच्छी आ रही है। जो पब्लिक जो न्यूज़ की है या जो हमारे एंड यूज़र हैं मार्केट में जहाँ उनको भी बहुत ज़्यादा हमारी पसंद भी आ रही है। एक्सपो के साथ काम करने में यहाँ पे वर्किंग करने से जो जिन यूज़ नहीं मालूमात आते हैं और वो इसको ट्राई करते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि हम एक्सपो के साथ यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। एक्सपो के बारे में कहूँगा कि उन्हें जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और जितना करते हैं हर हमें ऐसा लगा कि वाकई हम यहाँ परेशान नहीं, तो उनकी काविश काबिल सताइश है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनका कॉर्पोरेट जो है हमें आसानी है बहुत सारी। It's 8 p.m. My name is Cengiz Kahraman. I'm marketing manager of Menitech Defense Technologies. Menitech Defense Technologies is leading a supply chain manager of Turkey and MENA region. It's almost 30 years company and we manufacture sub-assemblies of trucked and wheeled vehicles. Have been delivered 150,000 components uncompromising quality standard to NATO and USA countries.
for almost 30 years. Because of half century of experience, we are going to look to future with our R&D center, with our investing different companies with different sectors. As an example, electromobility. As an example, we try to turn to Turkey the giant factory that is another subject, another project for us. More than 3,000 suppliers and with 150,000 parts. As Manatech, we supply for your priorities for high-tech manufacturing defense industry. Welcome from the Khan Academy for number 25 of Karachi Table Premier League Season 3. It's going to be the table toppers, Malin Malangs, up against North Nawabs. Earlier, Malin Malangs of the toss have decided to bat first against North Nawabs, who are fighting hard to secure a spot in the semi-finals. It's all set here in the Khan Academy. Second game of day. Yasir Pathan has got a position. Players a call from the umpire. Straight away, Rakesh could be out, could be a big wicket. Oh goodness me, what a start. It's DK who has to walk back. First ball, outside edge, comfortable catch behind the stumps. But DK walks back without even troubling the scorers. It is not for one. Outside edge, could be out, easy one, gone. Goodness me. Mimran for DK. There's 2 down here and just 4 on the board. Mimran also walking back after scoring just 2. It's 4 for 2. Here comes the first big shot. And here comes the boundary. Full toss. Straight over the boundary. Yeah, it was a gift for the new batter. Full toss again. Smashed away. Much bigger, much longer. How does it? Once again asking to be hit. Another full toss. This time he got plenty on it. I'm sure आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान में. कभी आपने सोचा भी था कि टेप बॉल क्रिकेट इस लेवल पे हो रही होगी और इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने पर KTPL इंतजामिया की कितनी तारीफ बनती है. A shot on the rise. Is it long enough? Not quite. Comfortably taken well within the boundary. And Asif Pathan continues to impress us. It's 22 for 3. So delivery picked up. It's in the air. Ball's all boundary ropes. He goes for it once again and gets plenty on it as well. Once again, the ball has landed beyond the boundary ropes. और हार्ड बॉल की क्रिकेट है बिल्कुल उसी तरीके से ये टेप बॉल को पाकिस्तान का ब्रांड बना इंटरनेशनल लेवल पर जाने की बात हो रही है. मुझे लगता था आपने कुछ सालों पहले तक सोचा भी था कि टेप बॉल इस लेवल पे हो रहा होगा और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हो रहा होगा. एक विकेट भी इस दौरान गिर गई है. अजीज आउट होकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं. ये जिस तरीके से देखी जा रही है और तैमूर मिर्जा जैसे लोग हमारे साथ खेल रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है, तो जिस तरीके से और इस दफा जो KTPL को 34 कंट्री अंदर 84 चैनल्स के ऊपर देखा जा रहा है, अरबों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं. सो मुझे लगता है ये बहुत जल्द उसके लेवल के बराबर एक जो है पैरेलल के अंदर एक अलग टाइप की क्रिकेट शो होने वाली है. सो इसका बहुत क्रेडिट डेफिनेटली बदर एक्सपो को जाएगा और जोहेर नसीर को जाएगा. The decision has been referred upstairs. It was a very good throw towards the bowler. Looks touch and go, Falak. There you see the red light on. Confirmation. He's gone back after scoring just 2. It's 43 for 5. On the left in the air, there is a fielder out there who misjudges it. And I think the ball has the boundary ropes as well. Could have been another wicket for Irshad, but not to be. It's that away on the side over extra cover. That's going to go all the way for 6. Probably the shot of the innings so far by Ubaid. By giving away 16 in his over. Once again, hit on the offside. It's up in the air. Has he timed it well enough? I think he has. There was a fielder at long off who was trying to get around it, but the arms are aloft from the on-field fire. Once again, insane timing by Kaleem. Once again, he has gone big. He has gone straight. It's up in the air. Chance for the fielder, who takes it this time. It's Irshad Ali Afridi down there at long off, who makes absolutely no mistake. So Kaleem is removed at the score of 25. 62 for 6. Last ball of the innings, a low full toss that has been just hit away on the leg side. They are going to be looking to come back for the second run. There is a throw at the wicket keeper's end, and he couldn't collect it, the captain.
So they're going to collect a couple of the last ball of the innings. That means Mali Malangs are finish off at 66 for 6 after their 6 overs. A job well done by North Nawabs. So all set for second innings. Majid Goli starting the proceedings from the far end. Down the leg side it pitched, but then it went away into the offside. He's working really hard. This is going to be 4 runs. Oh, it is slowing down, but still has enough legs to carry over the line. He got enough amount of bat on that. He didn't like the... And this time Hafiz Bola has tronked that, and tronked that with little disdain. Wow. He swings this away and swings this away beautifully for yet another 6. Full toss, got that away and got away. What a magnificent shot. You beauty, Hafiz Bola. In the air, who's going to take it? And it is caught. So Hafiz Bola shows is over. He played really well for his 22, 2010, 1 for 28 on the board, North Nawabs. And this time around, batsman has given it a go. And is going to go all the way at mid-wicket boundary for 6. Zain has gone downtown. Absolutely smoked that away. Wow, what a good shot. Absolutely. बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर और उनकी इस पहली गेंद को उठा दिया है. फील्डर के लिए यहां पर कोई मौका नहीं हुआ. 6 रन. 8 रन अब भी पीछे हैं पहली इनिंग में मलीर मलंग. और इस बार बोल्ड कर दिया. तो बहुत जल्दी हिसाब चुकता किया है फजल ने. 12 नागरी आउट में 58 पे 2 आउट. एक मर्तबा फिर फजल आए और इस बार शफी ने गेंद को उठा दिया है. बड़ा कुछ डिफरेंट एक्शन है, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं खेले. टेप बॉल क्रिकेट में इस गेंद पर जोरदार तरीके से खेले. बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने एक बुलंद वाला शॉट को कैच में तब्दील कर दिया. और इस तरह शफी जो है वो आउट होकर लौट रहे हैं. सिर्फ 1 रन बनाया और 65 पे 3 खिलाड़ी आउट. इसी दौरान जोरदार तरीके से जहन खेले और गेंद बाउंड्री लाइन पर छेड़ दी. जहन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है. और इस बार नो बॉल ये होगी. कनेक्ट उन्होंने जरूर किया है और 6 रन भी उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मलीर मलंग को ये नो बॉल मिल गई है. फजल और कोशिश की फील्डिंग साइड की कि वो कम से कम यहां पर इनको बढ़तरी हासिल करने दें, लेकिन ये एक और छक्का. इसको कहते हैं कि मुंह में बॉल कर दिया उन्होंने और बैट्समैन ने जो जैन है उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया. ऊंचा खेले इस गेंद को और गेंद फील्डर के पास पहुंची है कुछ एक आध टप्पा खाकर. और ये बैट्समैन तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और पहुंच गए या नहीं ये देखना होगा. अंपायर ने कहा जी हां पहुंच गए. तो ठीक ठाक बढ़तरी यहां पर हासिल कर ली है मलीर मलंग की टीम ने. 96 रन हैं 3 विकेट के नुकसान पर. उनकी बढ़तरी पहली इनिंग में 30 रन की. यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 25th मैच. नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां जहां हमारी नशरियात जारी है आप तमाम लोगों को डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से दिया है. 25वां मैच है. नॉर्थ नवाब और मली मलंग्स की टीमें मद्दे मुकाबले हैं. आप मेरे साथ 2 इंपॉर्टेंट शख्सियात यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गिरा खदर खिदमत अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब, और उनके साथ हमारे लिविंग लेजेंड द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी मारिया मियादाद जो हमारी विमेन विंग को अब देखना शुरू हो गई है, कायनात इम्तियाज और
काम शुरू कर दिया। यहाँ आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी और खास तौर पे जो 16 को फाइनल है उससे पहले KTPL वुमेन्स प्रीमियर लीग लॉन्चिंग होने जा रही है। खास तौर पे हम इसको बहुत फोकस करने वाले हैं। आप अरुण भाई आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको किसी इवेंट में उस तरीके से देखा नहीं, इस बार प्रॉपर कनेक्शन फर्स्ट के बाद बाउंड्री के बाद। हमने इससे पहले किसी और इवेंट के साथ आपको नहीं देखा जिस तरीके से आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़ी हैं। उन बच्चियों के साथ मिला के जो कुछ नई बच्चियाँ होंगी वो खेलें। मैं चाहूँगा कि जितनी फैमिलीज हैं उस पर्टिकुलर डे फाइनल दिन ये एक आउट हो गए, एक ऊंचा शॉट खेला था और डी के जो हैं वो दाऊद खान पठान वो आउट हो एक बनाकर अच्छा कैच किया। आई थिंक अगर ये देखा जाए तो बड़ा नॉर्थ नवाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं हम सुनने चाहेंगे ये खबर, तो अरुण भाई भी सुनने के बैठे हैं। इस बार जबरदस्त फर्स्ट सेकंड बाउंस के बाद इन बाउंड्री के बाहर गई कलीम का अच्छा स्ट्रोक इरशाद की गेंद पर। इशू ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं एट द यंग एज से अबाउट 14, 15, 16 और ये इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेलता और गेंद है वो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स के लिए। सो 6 रन्स का इजाफा किया कलीम ने, बहुत ही अच्छा। आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू डू रादर देन ट्राई एंड प्रूव कि आई कैन बी एज गुड एज माय फादर बिकॉज आई कांट बी लेजेंड। और इमरान का छक्का है यहाँ पर, जबरदस्त हिट आसिफ की गेंद पर। लेजेंडरी जावेद नियात की बेटी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगे, इनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। एक और छक्का मारा है कलीम ने और इसे के ऊपर से खेल दिया था, सिर्फ 10 रन की लीड अभी हुई है और ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक और ऊंचा शॉट और गेंद भी जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। इमरान और कलीम दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर इस हवाले से भी जानते होंगे। और जबरदस्त हिट कलीम पकड़े गए इस बार। कलीम का इस बार शॉट बाउंड्री क्रॉस नहीं करा बल्कि सीधा हाथों में गया और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान कैच आउट हुए। इस तरीके से ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर मलीर मलंग्स को। क्रिकेट अकेडमीज लगाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर वुमेन की, तो यहाँ से वो प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है अगर बच्चियाँ अच्छी खेलेंगी। लेकिन एक और विकेट गिरी है और इस तरह मलीर मलंग से एक और नुकसान हुआ। एक और अच्छा प्लेयर मुख्तियार आउट होकर वापस गई। Bowled him, knocked him over. Inside edge, rattled onto the stumps. And have a look at that. Victorious bowler enjoying his victory. And Imran goes for 14. 54 on the board, Maleer Malangs. Shorter one he gets and he really nails it over mid-wicket for a huge hit. That one went out of the ground. And this time it's a high one. It's hit high enough. Does it have enough distance? No, it doesn't. And a very good catch is taken by Pola. An important catch here by Rahman. Cameo's over. Just 6 to his name. Full gas. Oh, you betcha. That's all the way. That's a biggie. What a sweet connection. What a blow that is. Full chopper away over mid wicket for 6. इन्वायरमेंट नहीं होता, क्रिकेट का रुझान नहीं होता, लेकिन इस तरह की लीग्स होंगी और ये लाइव चलेंगी पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में एक मिनट जरा, आप तो क्रिकेटर हैं, कैच तो बताना पड़ेगा। यहाँ विकेट गिर गई है जी मलीर मलंग्स की टीम कहीं ना कहीं कुछ कमबैक करने में जरूर कामयाब हुई है इस मैच में, लेकिन नॉर्थ नवाब का पलड़ा बहुत भारी। Oh, that's a very good delivery. Slow bouncer to finish things off. 6 done, 71-6. Effectively, they are 41, and it's going to be a target of 42 for North Nawabs to chase down when they come out to bat. और इस गेंद को ऊंचा खेल दिया बैट्समैन ने। गेंद वाइड डाउन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में ऑलमोस्ट डाउन पर कैच कर ली गई और इस तरह विकेट लेने में यहां पर कामयाब हो गई है टीम। यहां पर मलीर मलंग्स की और हाफिज पोला लौट रहे हैं आउट होकर। दोनों जो इनके कोचेज हैं उनको भी दे रहे हैं और जो हमारे वो हैं मोहम्मद समी साहब उनके लिए भी प्लॉट का उन्होंने ऐलान कर दिया अगर फाइनल जीतते हैं तो ये प्लॉट एक नया सिलसिला शुरू हो गया ज़ुहैर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा आगाज़ है और जिनके लिए हम पूरे साल इन लोगों को सपोर्ट करें। तो KTPL ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इसके अंदर इन सारे लड़कों को इंशाल्लाह पूरे साल अपने साथ एंगेज करेंगे। इसके जो टॉपर्स होंगे वो फिर दुनिया के अंदर जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम इनको आगे लेके चलें। जफर अब्बास भाई एक और चीज़ भी KTPL विन्स
लीग का भी आगाज होने जा रहा है, उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, इमरान अली रोशन साहब की देखी, डीके की देखी, सारे ऑनर्स जिस तरह मुजम्मिल अतहर सब लोग जुड़े हुए दिखाई दिए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। वुमेन क्रिकेट लीग जो है उसको तो सपोर्ट करेंगे बल्कि जुहैर भाई ने कहा एक टीम हमें फिर दे रहे हैं CSR में, तो मैं कराची से अच्छा टैलेंट वुमेन्स का निकाल के लाऊंगा और उनको यहाँ खिलाएंगे और उनको नेशनल लेवल में मुतारिफ कराएंगे कि देखिए कराची जिस तरह से कराची ग्राउंड आबाद हुए अब दोबारा से आबाद हो रहे हैं, तो उस जश्न में मैं शामिल रहूँगा इंशाल्लाह। ये बॉल लड़के जो है वो हार्ड बॉल से काफ़ी डरती हैं, तो उसमें अब ये कि इंशाल्लाह टेप बॉल्स जिससे जब वो खेलेंगी तो उनका एक जो एक डर है वो ख़त्म होगा और वो हमारे नेशनल क्रिकेट के लिए उनकी एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्लस जो उन फैमिलीज़ के लिए, वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए, जो हमारा इन्वायरमेंट है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे बचाएँ और खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, ये भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और एक बार फिर अंपायर इशारा कि ये छक्का। यकीन एबी पारो अब चाहेंगे कि इसी ओवर में खेल तमाम किया जाए। गोज अगेन, लेकिन फील्डर हैं, जंप किया, क्या अपने आप को संभालने में कामयाब रहे हैं, बल्कि नहीं, ओ गिरे हैं, लेकिन कैच शायद उन्होंने अंदर फेंका है क्योंकि हम देख रहे हैं सेलिब्रेशन हो रही है और अब हम रिप्ले में मजीद अंदाजा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैचेस हुआ ये। यकीनन अपना तवाज़ो बिल्कुल खो चुके थे और तवाज़न खोने से ठीक पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया अपने हाथ से बिल्कुल, और ये कैच करार दिया गया है। रेड लाइट्स ऑन हुई और जितनी तारीफ की जाए फील्डर की वो कम है और इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बिलाशुबा। एबी पारो 13 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच लेकर एक और विकेट हासिल करी है और मुरसलीन को यहाँ ठिकाने लगा दिया है उबैद ने, तो तीसरी विकेट हासिल कर ली उबैदुर रहमान ने सरस देकर। जो यहाँ पर उड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ इसे निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन हासिल किया, इसी के साथ फतह हासिल कर ली नॉर्थ नवाब की टीम ने। 5 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया है नॉर्थ नवाब की टीम ने। मेरा नाम आतिफ खटाना है और मैं GM कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के जो जूते बना रहे हैं उसके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बना रहे हैं, जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बनी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है के शूज़ वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। हम लोग अल-खाल और अल-ज़रार के लिए रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा ये भी हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ और पाकिस्तान में पहली दफा ट्रक बस रेडियल के टायर मुतारफ करवाए गए हैं, वो भी सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए हैं, सर लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले सारे टायर पाकिस्तान बोर्ड किए जाते थे। पाकिस्तान मार्केट साइज ट्रक व्हील का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक समय, और हम लोग प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं। हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या साल बाद 2.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की आ रहे होंगे और मार्च में ये इनग्रेट हुआ है और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडियाज हवाले से मैं बात करूंगा, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुल्क से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और दुनिया के में आसानी होती है। पाकिस्तान भी बहुत सी चीजें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी बोर्ड के लिए भी है।
My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground station, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our main experience. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. Very happy about it. During the COVID periods, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. My name is Abdul Basit, and we are exhibiting ideas for the platform of K Electric. K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar. From the platform of K Solar, we are offering solar solutions for our commercial and daily users. In these solutions, we have multiple models for our industrial and commercial users, which include power purchase agreement. In this solution, all the assets belongs to us, and we are going to deploy it on premises of our user, of our industrial user or commercial user. In addition, the customer doesn't have to pay any upfront cost. They only have to pay the monthly energy bill, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the first solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of deferred EPC payment. This is one of the viable options in which the client doesn't have to pay an upfront cost for this. They have to pay the capital cost in terms of an installment for the defined period of time. And the third reason we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are the options available for our users. And in all of the solutions, we are committed to quality, and we are not going to compromise in quality. And if the users is getting solution from K Solar, so what we are offering is one window solution for our users to survey till the commissioning of the system. Only you have to contact K Solar, and we will give you one window solution. You don't have to go anywhere else for any other services. We are going to do the survey, we are going to do the design, we are going to do the mission and commission, as well as we will do the all preparation related to the net metering application, and we will help our users to get the generation license. And once the license is arrived, then we will going to install the energy meter, which will be done by our other department of K Electric, net metering department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And in last, I just want to thank the exhibition, the organizers. It's a really good experience over here, and I wish them very good luck. मेरा नाम फातिमा है, मैं GMIT में FWO में, और सभी FWO का स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। हमने यहाँ पे अपने 4 मेजर कंपोनेंट्स जो हम FWO में एक मेगा कंस्ट्रक्शन एरिया के तौर पे जाना जाता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और काम भी करते हैं जो हमने यहाँ पे आज रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और टनलिंग इंस्टीट्यूट का एक से
जो है वो काम है। और भी हम यहाँ पे डिजिटल कंस्ट्रक्शन के जितने पेरेंट्स हैं उनको सामने हुए डिजिटली कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने देखा था कि कोविड दिनों में 40 दिनों के अंदर 250 बड़े हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया। उसके लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिस्टम को किया गया था ताकि वो जल्द कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा सके। एक इदारा जो CTTI यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनको टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं IT साइड से, बिकॉज मेरा ताल्लुक ही से है। तो IT की सिविल नेटवर्क पाकिस्तान की तमाम मोटिव के ऊपर जो इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी डिस्प्ले पे हमने लाइव अपना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो उसको हम डिस्प्ले करें, आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने FWO ने पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान लॉन्ग हॉल नेटवर्क जो है वो किया है 5 का, और फ्रॉम कराची टू पेशावर कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन अगले साल के शुरू में। और फिर तमाम जो है वो कनेक्टेड होंगी। और अगर पेशावर से और 70 तक अगर किसी जगह आप टॉल पेमेंट जो है वो एंड हो जाएगी। और जब इंशाल्लाह फिर से हैदराबाद तक की कंप्लीट हो जाएगी तो पेशावर कराची तक सिंगल टॉलिंग के ऊपर सिंगल उसके ऊपर जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं। Honorable Commissioner, distinguished guests, Assalamualaikum. It is a matter of time we federal state minister, massive against from national this to the rate of contribution population on March national defense execution 2020. Ladies and gentlemen, we entered execution. I think first idea here 2000. By 185 national leaders and 150 foreign allies. The last decade, idea study in space, vacuum, accelerator, and pod allies. In idea 2018, we had a record participation of 504 exhibitors and 221 delegates, building 44 tons. And we are lucky Badar is here who was there, and we had record participation across the world. The opportunity to exceed idea got adversely affected, and idea 2020 has rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, our network shared that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of celebration of independence of Pakistan. What a moment. Despite a gap of 4 years, we have received booking for more than 3% of the available dates to date. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before. The process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from honorable invites. IDEA established itself as an attractive and contribute to mutual understanding, trust, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it then Pakistan's large industry to demonstrate world by using Pakistan's defense production capability in potential talent. Aimed at applying ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public-private enterprises with the regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of the Ministry of Commerce as well as the Trade Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEA's 2022. I would like to thank the Ministry of Communication, Director General for Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I mention that the Government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming
and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Solution, our event organizer, for his undying effort and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम करे और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना पीक टाइम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह इवेंट होगा। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We served in COVID days.
and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. We are a company in Pakistan who has a European manufacturing electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zoe and Wax, Matador, 47, 48. In the COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg. And it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. This has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. आइडियाज़ और जो कि वैसे बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की से जब 2020 में हम उसको नहीं कंडक्ट करा सके, तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इस तरह के लिए तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उसी तरह होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास हाई लेवल डेलीगेशंस की कंफर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप या हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जो जिस पर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको भी लू में लेके आएँ और उनको भी आउटलेट दें, ताकि वो दुनिया के सामने अब प्रोडक्शन उसको शोकेस कर सके। इस वक्त भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद, तो इसमें एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है, न यहाँ के जो दूसरे मुल्क आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, कि जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEM हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये इवेंट है जिसमें दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसे कि आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे साथ वो सिक्योरिटीज नहीं लोग हुआ करते थे, और इस तरीके की चीज़ भी। और आजकल जो फ्लड के बाद के हालात हैं, उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। इसमें हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद आ रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। इसका सेगमेंट 1 जो है वो आईडीएस के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट इज सेकंड डे ऑफ आईएस, उस अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इवेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ इनसे सीख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू कराची एक्सपो सेंटर, उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, इसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को हीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट करेंगे। सिंध के बारे में कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती है, पास्ट में भी मिली है, और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट सीएम साहब भी काइंड उन्होंने उसको शेयर किया, और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद, उनको जिस तरीके से सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली, उनका बड़े हमने इम्पैक्ट देखा। जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ बहुत हमारे लिए आसान हुई।
देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोज बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है, और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो खबरों में देखते हैं कार के ज़माने में चले गए, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है, और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडिस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। This 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, E2G, E2 joint ventures and investors. A seminar will also be to facilitate discussion on challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Brings together stakeholders across diverse defense industries. The fully platform for G2G, E2G, and 2 joint ventures and investment in the sector. A strategic seminar will also help facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. It was really great visiting all the weapons related to many countries here. My father is also in army. We are proud to be we are proud to be daughters of a person who's in army with Pakistan, and it was really a great experience. Really proud to be a Pakistani. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म जरिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform G2G, B2G, B2 merchant joint ventures and investments in the defense sector. A teaching seminar will also help facilitate sessions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Hello everyone, this is Sun from Narenco, China North Industries Corporation. Our corporation is an international defense company, and today we expected our most advanced defense product like BTV main battle tank and SH-15 howitzer. We are very honored and delighted to exhibit here. Thank you all. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम फातिमा और आज जो है मैं बचत एक्सपो में आई हुई हूँ, एक्सपो सेंटर कराची में। तो यहाँ जो है काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ग्रॉसरी के स्टॉल्स हैं, फूड आइटम के स्टॉल्स हैं, कॉस्मेटिक्स है और कपड़े वगैरह हैं। तो काफ़ी अच्छी एक्सपो लगी हुई है और इवन के यहाँ पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं हर चीज़ों पे। तो ये जो है ईद भी करीब है, तो आप लोग आएँ, विज़िट करें और डिफरेंट स्टॉल्स को आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ईद करीब है, इसकी वजह से भी लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो आएँ और यहाँ से ख़रीदारी करें और बहुत अच्छे स्पॉन्स है। और मैं यहाँ पे अभी आई हूँ तो देख रही हूँ स्टॉल्स, हर स्टॉल्स पे जो है वो डिस्काउंट पर कर रहे हैं और बहुत अच्छी जो है ना वो एग्जीबिशन लगी हुई है। थैंक यू। कैसा रहा हमारा ये बचत एक्सपो, पहला एक्सपीरियंस है, कैसा रहा? कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो हुआ, प्याज वगैरह सब्जी में, फल फ्रूट में बहुत अच्छा फायदा हुआ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में आपको फायदा हुआ है, तो ये आप चाहिए कि ये होना चाहिए बार बार। अच्छा, खासकर एक चीज़ का ख्याल रखें तो वाइट कॉलर लोग मजबूर ना हो, तो ये हमने जो कोशिश की आपको बताई जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रोडक्ट पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर ये कुछ बेहतर है बचत एक्सपो? कुछ बेहतर है, इसीलिए तो यहाँ सेल करी है। It's 9 p.m. ICE 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the sector. Strategic seminar will also help facilitate sessions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं ऐसे जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा अली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको ऐसा बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे, और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट। Ideas 2020 bring together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, 2G, and 2D joint venture and investment in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The development of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, E2G, and E2D joint ventures and investment in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कंदकोट से आया हूँ। कंदकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो देखिए ना आगे इसके रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए खरीदारी करने के लिए। ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो की गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया सब कुछ। जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं, तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कंदकोट से एक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल भी यहाँ पे बन गए हैं। पान के केबिन खुल चुके हैं। हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचा, आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है। हर साल होने 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं। अरे इधर ऐसा तगड़े नहीं, सारे तोड़ गए जानवर। अच्छा, सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी भी सारा दे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके तावन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी कम दी है। सानू 12-13 दिन आए, बाकी ये हर साल ही होने, किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल ये खीरे बच्चे हैं सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं, देखो आगे वही खा रहे हैं।
तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी पूरी मंडी पंजाबी सेरा बनने विच। ये जरा देखें अदनान, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं। किस आइए आइए जरा, तो इधर आ जाएं आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात की। ये जरा, ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? से भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा देखो आपको सका। बहुत जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मजा आया, और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप शेर ने, जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। शेर ने देखा शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। प्लाट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजबूती तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो इसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको व्यापारियों को यहाँ पे फराहम की गई है कि आएँ और आके आप बिजनेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फीस फ़ी ऊँट 1250 रुपये है, कि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी की कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो फिर एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराहम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए। एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियो वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, कुछ भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान हैं और आके अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त सा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच गए। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की,
वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं 15-20 दिन रखते हैं, फिर यहाँ आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आएँ और आप आके खरीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अली जामा पहनाया हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरी आएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड हैं। इसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बदर एक्सपो ने, और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। खासतौर पर कराची में हमारी जनरेशन, हमारी फीमेल खासतौर पर बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, काफ़ी रश है, लोग बड़ा कर चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके। थैंक यू बदर एक्सपो की इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया। प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बदर एक्सपो की तरफ से जो एग्जीबिशन लगी है बचत बाजार की, उसमें इनोवेटिव की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा ये जितने भी स्टॉक आप देख रहे हैं सारा प्रीमियम क्वालिटी लगा हुआ है और ये लोकल मार्केट में हमारा चल रहा है। इस पर हम टोटल जो अपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो फ्लैट 20% दे रहे हैं मार्केट के। अगर मार्केट में एक चीज़ 240 रुपये की है तो हम 200 रुपये की ऑफर कर रहे हैं, और ये मार्केट में जो प्राइस ये 200 का है, हम 50 का यहाँ सेल कर रहे हैं। बदर एक्सपो का अच्छा एक इवेंट है और पिछले साल भी हमने लगाया था, इस साल भी हम लगा रहे हैं। तो अच्छा एनवायरनमेंट भी है, लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है और हम भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना इनपुट डाल रहे हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। In 2024, brings together stakeholders across diverse defense industries. The foreign exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investment in the sector. A strategic seminar will also be facilitating discussions on global challenges within the defense sector. The edition of it will be held from 19 to 22 November 2024, Karachi Expo Center. तासीर अहमद नाम है, मैं बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, MG की डीलरशिप है, जैक हॉलैंड ट्रक डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनको फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स,
लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम EN सर्टिफाइड भी हैं, C सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, आई सर्टिफिकेशन भी है। और इसके अलावा किस्म के जो ब्रांड है हमारे पास, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो हाईएस्ट हो, वो आपका फायर ट्रक है या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, यहाँ पे रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जब एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ के ऊपर बाकी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंसेज भी हैं और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है। इन सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं फूड इंडस्ट्रीज़ का CEO आप लोग मुखातिब हूँ। आज हमने यहाँ पर बदर एक्सपो की हिसाब से जो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से हमने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए हैं यहाँ पर। और हम तकरीबन 15 से 20% तक अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। हमारी एग्जिस्टिंग जी के ब्रांड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम उस पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने इसका सब्सिट्यूट भी लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको भी बहुत रिजनेबल रेट्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। इस तरह हमने और मजीद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के भी हमने सब्सिट्यूट यहाँ पर हमने नुमाइश के भी रखे हैं और लोग रखे हैं कि लोग आ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फ़ायदा कर रहे हैं। और मैं बदर एक्सपो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं ये प्लेटफॉर्म अता किया। और मैं लोगों को भी चाहती हूँ इसको आके अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। इस वक्त हम जा रहे हैं मवेशी मंडी और सुपर हाईवे से जस्ट हमने लेफ्ट टर्न लिया है। अगर आपने देखी होगी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी के बाद फ़ौरन एक बड़ा फेमस अल हबीब होटल आता है, उसके फ़ौरन बाद नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता मुड़ रहा है जो रास्ता कोयटा को भी जाता है। हम जस्ट उसे मुड़ें, और अगर हम वहाँ से मुड़ते हैं तो फिर आप गूगल मैप में ज़रूर देख सकते हैं कि 8 मिनट का रास्ता, तकरीबन 1 मिनट हम और चलें तो 9 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम मुड़े हैं नॉर्दर्न बाईपास से। और आप देख सकते हैं ये रोड जिस तरीके का है, बेहतरीन किस्म का बना हुआ है, तमाम की तमाम सहूलतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही आप नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर चलेंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर, तो ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आप देख रहे हैं। यहाँ सुपर हाईवे से हम लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद लतीफ़ ग्रीन सिटी के नाम से आपको ये पीछे बोर्ड दिखाई देगा, ये इलाका लतीफ़ ग्रीन सिटी की जानिब जा रहा है। और यहाँ वैसे भी देख सकते हैं मवेशी मंडी, कैटल मंडी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर सुपर हाईवे के बाद यहाँ दस्तयाब होगा। और उसके बाद आप लतीफ़ ग्रीन सिटी को जो रास्ता जा रहा है आप इसके लिए चले जाएंगे। आप जिस जानिब देखेंगे तो फिर आपको मेरे पीछे देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी खड़ी भी दिखाई देगी, बेहतर अंदाज से काम हो रहा है। और अगर आप मेरे इस जानिब भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी खड़ी भी दिखाई देगी। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए ताकि आप बेहतर अंदाज से आके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ माशी बहरान अपने अरूज पर है और लोग बेयारो मददगार इंतज़ार में हैं, लेकिन एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि हम या तो जानते बूझते या अनजाने में लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप गरीब हैं। यानी आप ऐसी लाइनों में लगे जहां गुर्बत का एहसास हो। ये मैं गवर्नमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। NGOs तो जो अपना काम कर रही हैं उनको तो खराज तहसीन करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये अपने उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस अंदाज से
लोगों को रिलीफ देते हैं कि उसे गुर्बत का 100% यकीन हो जाए कि वो गरीब है। यानी हमें खुशी होती है कि हम बड़े बैनर लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रिलीफ बाजार है, ये बचत बाजार है, यहाँ गरीबों के लिए डिस्काउंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हमें उनके इस्तेकाक का और उसको मजरू ना करने का सबसे बड़ा एहसास होना चाहिए। हम अगर किसी को रिलीफ दे रहे हैं, वो जिसको दे रहे हैं वो इस मुल्क की वो अवाम है जिसकी वजह से हम इक़्तिदार में आए। तो आज इक़्तिदार में आकर हम उनसे जिनसे वोट मांगते हैं या जिनसे हम ये तवक्का रखते हैं वो हमारे लिए खड़े होंगे, तो ये कैसा जुल्म है कि हम गरीब को ये एहसास इस शिद्दत से दिलाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गुर्बत की आखिरी लाइन पर हो और हम कोई बादशाह हैं जो तुम ये एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने यूटिलिटी खोल दिए हैं या हम तुम्हें चंद कतारों में खड़ा करके चंद लोगों को कम रेट पर दे रहे हैं, तो आप मुफ्त में दें तो आप समझेंगे आपने कोई बड़ा एहसान किया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि आज ज़ुहैर नसीर ने जो बचत एक्सपो में ये इंतज़ाम और एहतमाम किया है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका जहाँ पर तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं और इनका या मेरा काम यह है कि हम उसको ये मेक श्योर करें कि वहाँ रेट्स कम हैं और उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ लेने आने वाला कोई नहीं, यहाँ हर वो शख्स मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मुझसे ज़्यादा इज्जत रखता है अपने घर में, अपने ख़ानदान में। तो हम बार बार ये तस्करा ना करें कि ये हमने गरीबों के लिए या कोई मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यहाँ भी जो हो रहा है वो अपना कारोबार हो रहा है और शख्स भी आता है वो खरीदता है। ये हमारा ज़रूर काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। असल ये होना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन हालात में जहाँ माशी बहरान मौजूद हो और हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करें। देखिए, अमीर लोग जो इंटरेस्ट हैं वो क्या ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट कम होना चाहिए, हर बिजनेस में यही बात करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि वो ये कह रही हो कि इन गरीब बिजनेसमैनों के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दी? नहीं, वहां इंटरेस्ट रेट अपना हक समझ के कम करा जा रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिलीफ दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर। लेकिन मैं समझता हूँ ये लफ्ज हदफ होना चाहिए पाकिस्तान की दृष्टि से कि जहाँ आवाम के लिए अगर कोई रिलीफ हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि हमने मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए बड़ा कोई एहसान कर दिया। तो ये एहसान नहीं है, ये हमें रिलीफ देना है। यही हुकूमतों का होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए जो उनका हक है। जैसे एक बड़े सनतकार का इस मुल्क पे हक है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कराए, बिजली के नर्ख कम कराए, गैस के नर्ख कम कराए। तो अगर गरीब को गरीब कह के बार बार उसकी तस्वीर की जा रही है, अगर मैं ये कहूं कि गरीब को गरीब हमारी हुकूमती पॉलिसी ने बनाया है, वरना आज एक आम आदमी जब मुल्क से बाहर जाता है तो वो 2-4 साल में अमीर कैसे बने? क्योंकि वहाँ हुकूमतें उसको इज्जत देती हैं और उसको मौके फराहम करती हैं कि हमने नहीं दी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी हम अज़्म करें, और मैं जज साहब यहाँ खड़े हैं और ये मेरी बात की तायीद करें, वरना ये ना करें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी अहद कर लें कि हमने कराची एयरपोर्ट से लेकर सीवीयू तक और सेंट्रल में हैदरी तक अगले 5 सालों में 100 लाइन्स बनानी है, 100 जिला, क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम अहद कर ले 5 साल में ये 100 बन सकती हैं और अगर ये 100 बिल्डिंगें बनना शुरू होंगी तो आपको हर किस्म की मुलाजमत अच्छे पैसों पे इस शहर मैसर होगी। जब आप दुबई उतरते हैं तो आप ये 2000 बिल्डिंगें देखते हैं, आप मलेशिया होते हैं तो 2000 बिल्डिंगें हैं, दुबई में 2000, इस्तांबुल में 2000 में। तो मेरे शहर में जो माशी हब है पाकिस्तान का, जहां पर अगर इमार के अंदर अपार्टमेंट लेने जाएं तो 20 करोड़ रुपए का है, तो अगर ये 100 बिल्डिंगें लेगी तो ये 2 करोड़ लेगा। इस पर हमने काम किया है और मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है और इस
को भी मैं गवर्नर इनिशिएटिव का नाम दूंगा। प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स को मैं बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, उनको कहूंगा कि कम रेट के ऊपर लोगों को रिहायशी मंसूबे दें। जिस तरह यहाँ एक्सपो है, इसी तरह कम रेट पर अब ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी तो लोगों को रिहायश भी सस्ती मिलेगी। हमने काम करना है, हमने इस शहर को, इस सूबे को तरक्की देनी और ये मुमकिन है। आज कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। हम ज़राई मुल्क है, पूरा सिंध जो है हमारे पास जमीनें हैं। अगर हम किसानों को, काश्तकारों को सही बीज की फैसिलिटीज दें तो आपकी क्रॉप जो है वो बेहतरीन हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। तो यहाँ अब सिलसिला, जिस तरह हमने गवर्नमेंट हाउस में आईटी का इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवा दिया। आज 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। आप मीडिया गवाह हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे रमजान मुबारक के लिए आज खुले हुए हैं, आम के लिए। मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस से ड्राइव आज तक हो रही है, मीडिया गवाह है। आज मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस शहर की डेवलप के लिए मैं काम करूँ और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल में हम 100 मंजिला 100 बिल्डिंगें बनाएंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्री जो कि खत्म होती जा रही है, आज मैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा हूँ उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर उनको एड्रेस किया है तो क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री बनाए, उसे क्या जरूरत है कि वो इस्तांबुल में जाए, क्या बजाय इसी शहर, इसी सूबे में इंडस्ट्री भी लगेगी, इमारतें भी बनेंगी, ज़राअत पर भी काम होगा। और मोदी को भारत का वजीर आजम है जो उसने अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि मुझे 12 वोट दो क्योंकि मैंने 5 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान को भीख मांगने वाला भी बना दिया। वो अपनी तकरीर में कह रहा है, आज वो IMF के सामने हाथ फैलाया है। तो हमें एक गैरतमंद कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझ समेत सबको ये आज़म करना चाहिए कि मोदी के इस बयानिए का जवाब पाकिस्तान में तरक्की करके देना है। ज़बान बातों से जमा कर से कुछ नहीं होगा। आज मैं आने से पहले कर्नल शहीद सैयद काशिफ अली के घर गया, उनके साहब से मिला, उनका जज्बा मैंने देखा। वो इस बात पे खुश हैं कि मेरे बेटे ने लोगों की जानें बचते हुए जान का नजराना दिया। उसके बाद नसीब सोमरों के पास दारुल सेहत हॉस्पिटल, वो फख्र सिंध है, फख्र पाकिस्तान है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। हमारे पास जफर अब्बास है, हमारे पास सैलानी जैसे बशीर फारूक साहब है। इस सबको बिठाना होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ मैं बैठूंगा। कोई वजह नहीं है कि मेरा सूबा और मेरा मुल्क तरक्की ना कर सके। सिर्फ कुदरती ज़खाइर से माला माल मौजूद है। और एक और मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा तनकीद की जाती है, जब भाई भी कहेंगे आप जो इतने सारे काम करते हैं इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हैं कि को हटा दें। आपकी मेरिट, आपके काम आपके सामने आके खड़े हो गए। तो जफर भाई, मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ कराची गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ये थर में भी होगा, सखर भी होगा, ये नवाबशाह में होगा, लाड़काना भी होगा और हैदराबाद में भी होगा। इंशाअल्लाह ताला IT की तमाम केसेस इन तमाम शहरों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। और हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए। जिस तरह इस 50,000 बच्चों को हम जो $8,000 का कोर्स करवा रहे हैं फी बचा, और 50,000 ऑन साइट पढ़ रहा है, 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहा है। सिर्फ यही कहूंगा कि रोक सको तो रोक लो। आवाम के लिए दिन और रात खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात पे मुझे उम्मीद है कि हम IT ही इस सूबे सिंध को इस पाकिस्तान में IT का सूबा बनाएंगे। ये शहर कराची IT सिटी बनेगा और यहाँ हर पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा IT के कोर्सेज करेगा और इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालेगा। और मैं उन सब के साथ शाना बनाना खड़ा हूँ। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निदा है। मैं जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोग के लिए। हम अपनी लैब के बारे में आपको बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। ID 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The Full Action offers a platform for E2G, BTV interactions, joint venture and investments in the sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense. The collection of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मिलते यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनी जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कंदकोट से आया हूँ। कंदकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखिए ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। और जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो की गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया। सब कुछ जो हम प्लेन उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कंदकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं। पान के केबिन खुल चुके हैं हर जगह पे। आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है, हर साल होना 16-17 साल आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? इधर ऐसा तगड़े ने वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किस काम की है। आज 12 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल ही होने किसी साल भी ना परेशानी नहीं होती थी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई? तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे ये खीरे बच्चे ने सारे।
अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे? हाँ ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई वस आंदे ने। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में, क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? देखो आगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाब पंजाबी जवान आ कोई कराची वाला नहीं पंजाबी ये जरा देखें अदनान, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा तो इधर हैं आप, मेरे साथ इधर है ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे हैं, ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना मज़ा आया, और हम लोगों को भी बता रहे हैं पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं, पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल असल चीज़ है कि तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ासे मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजबूरी तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको व्यापारियों को यहाँ पे फराम की है, आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी अंदाज से अदा करने का मौका मिला है। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती कि मंडी में दाखिला फीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी की कीमत 2000 रखी गई है। तो फिर मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आप देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ मवेशी मंडी में किया गया। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी खरीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा।
कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ कि आप अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें, कुर्बानी के लिए नुसरत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जान के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आपको चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एशिया की बड़ी मंडी कहें या वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी, जिसमें 3.5 लाख से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। मवेशी मंडी के नाम से ही यहाँ पर आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं इनके तमाम मुतमिनीन जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आवाम के लिए सहूलियात मैसर की हैं। बदर एक्सपो हमारे जोएब नसीर यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा मीडिया यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। मैं समझता हूँ कि एशिया की बड़ी मंडी होने की वजह से और कराची के अंदर जो लोग कुर्बानी शौक़ से करते हैं, खूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ मुझे रोज़ाना टीवी पर नज़र आई है। और हर साल की तरह मैं ख़ुद भी पिछले कोई 12-15 साल से इस मवेशी मंडी में आता हूँ। पहले जहाँ लगती थी वहाँ भी हम जाते थे, पिछले साल यहाँ आए हैं और अभी विज़िट भी करना है। ये भी देखना है कि यहाँ जो रेट रखे गए हैं वो एक आम आदमी की रीच में हैं या नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आखिरी के 5 रोज़ होते हैं, इसमें देखने में यह आया है कि खबरें आती हैं कि जो व्यापारी हैं वही लुटना शिकार हो जाते हैं, जो ग्राहक आता है उसको भी शिकायतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से IG सिंध को भी मैं ये कहूँगा कि वो स्पेशल अरेंजमेंट सिक्योरिटी के यहाँ प्रोवाइड करें, रास्ते में पिकेट्स लगाएं, ताकि ना ग्राहक को प्रॉब्लम हो ना व्यापारी को प्रॉब्लम हो। जो एक फैसिलिटी लोगों को दी गई है उससे वो अफादा हासिल करें। और मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा फरीदा जो हम पे फ़र्ज़ है, जो साहिब सर्वत लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी का सिलसिला है वो साहिब सर्वत लोगों को पूरा साथ जारी रखना चाहिए, चाहे वो सदक़े की सूरत में हो, अल्लाह नाम की सूरत में हो। क्योंकि इस वक्त जहाँ माशाअल्लाह इतने मुश्किल हो, वहाँ एक मिडिल क्लास और एक गरीब शख्स के लिए बकरे का या गाय का, बैल का गोश्त खरीदना नामुमकिन हो गया है। अल्लाह ताला ने एक फरीज़ा रखा है जिसे लाख लोग फज़ियाब होते हैं और कई महीने तक ये गोश्त इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो यहाँ जिन्होंने ये सारे इंतज़ाम किए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, बाकी भी उनकी टीम मौजूद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इंशाअल्लाह मैं विज़िट करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ क्या रेट्स रखे गए हैं, क्या चीज़ है। आप सबका
IDs 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2 interactions, joint ventures and investments in the sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of these will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं ऐसे जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा अली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। मैं अपनी लैब के बारे में आपको ऐसा बताती हूँ। हम लोग की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। खरीदे जूस वगैरह लिए। तो ये जूस और फ्रूट पे आपको डिस्काउंट मिला? जी जी मिला, बाय 1 गेट 1 था जूस पे। और फ्रूट में भी मिला? फ्रूट पे भी आधी कीमत पे था। बाहर जो मिल रहा है 120-100 रुपये मिल रहा है, इधर 60 रुपये मिला तरबूज। तो ये अच्छा मकसद है कि रमज़ानों में फ्रूट आप यहाँ से ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल सही बात है। आपको माहौल कैसा लगा जो बदर एक्सपोजिशन ने आपको प्रोवाइड किया? माहौल ठीक था? जी माहौल बिल्कुल ठीक था। लोग आ रहे हैं जा रहे, ज़्यादा ना कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी जो फ़र्क है चीज़ों में, जो हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, तो अच्छा है कि इनिशिएटिव लिया है, अच्छी चीज़ है, होना तो इस तरीके के एक्सपो जो लगी है ये होनी चाहिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ गई है उसमें ज़रूरी है कि इस तरह के स्टॉल लगें, एग्जीबिशन इस तरह की हो एक्सपो में।
ज़रूरी है, होना चाहिए। तो आप खुश होके जा रहे हैं यहाँ से? अल्लाह का शुक्र, जी हाँ, खुश हैं। कितनी शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं यहाँ से? कुछ बचत भी हुई नहीं हुई? बस बचत तो है, बचत के बिना तो कुछ लेते नहीं। महंगाई इतनी हो गई, अब बचत की शुमार में हम घूमते रहते हैं कहीं पे बचत मिल जाए। तो ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने जो आपके लिए बाजार लगाया, आप मुतमईन होके जा रहे हैं? हाँ हाँ, मुतमईन होके जा रहे हैं। हाँ बहन, आप कैसी कोई शॉपिंग वॉपिंग की आपने? मुतमईन? It's 10 p.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu. Good evening to you people wherever you are in the world. We are live here yet again for match 27 where Clifton Capulars are up against Liari Legends from DHS Point Academy Karachi. A little while ago, both of the captains were there in the middle with our colleague Danish Anish. And the news from the centre was that Liari Legends have won the toss and bat first. Here we go. It's match 27 and we are all set. The players are just about to get ready. A full toss this time and so the ball increased by 6 to start. Qari Hamidullah straight away got into his class act. This is a big swing and he's got the connection all right. It's a first left-hander and it's a good one. Typical left-handed leg-sided swing. He goes again. Another one, 2 of 2. This is bigger. They landed on the second tier. He goes for the massive shot, but doesn't connect. And this time, it's Farhad Abdali who doesn't make any mistake. And look at the brain. They're relieved. Clifton Tyler's. Badar is gone for 15. 26 for 1 is the score. And by taking gambles, you can do that. This time on side edge, and this time it's been taken at short third. Catching has been good in distance at least. Farhad comes and gets a wicket. He's gone for 431-2. This time it's a connection. It's Hamidullah who's got in the middle of the bat. And there you go. It's half a dozen the result. Over square leg. It's a leading edge chance for the bowler himself. Imran is going to take it. Once again, another wicket has gone down for Liari Legends. Qari Hamidullah just not timing that sweep shot whatsoever, ending up giving a dolly of a catch to the bowler. Hamidullah went for 14 on 9 deliveries, 39 for 3. Big heave on the leg side. Looks like he has got plenty on it. What a connection. Full has been deposited into the stands on the leg side. Shot asking to be hit, getting the elevation and the distance. Another 6 this to the captain. Not good bowling from Imran. Shot again. It's flat, it's hard, it's long, and that's going to be the legs. What a start this is from the captain. 3 sixes in the over. Full toss. Might be given a no ball. It's going to go all the way for 4. We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the left arm is aloft. Not only it's a no ball, but it's a boundary as well. Bowling the last over of the innings. Outside edge and taken. Well, that was dying to the wicket keeper. Umar Badar behind the stumps. Still managed to take it. A wicket of the very first ball to Mansoor. Ashraf Pathan's cameo comes to an end. 23 of 9 for the captain. Full toss. Thumps it down the ground all the way. That's a good connection for Irana Mohsin. If you bowl in the middle on his body, definitely you're going to get hit. So one picked up, it's up, and it's over. Really good hit this from Duff. He was waiting for that slower length, and as soon as he got it, he had no hesitation. It's pitched up. Once again, Dawood has deposited that over long on for yet another gigantic 6. And a perfect way to finish the innings. 3 maximums coming in that last over of Mansoor. Liari Legends have put up a very good score. They have managed to score 92 runs for the loss of 4 wickets.
शाह स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद आने को है इस दूसरी इनिंग्स की। राना मोहसिन असद शाह के लिए, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर बीट हुए। फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर विकेट कीपर के पीछे, वरना ये 6 रन होते, लेकिन 2 रन फिर भी हुए हैं। इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और इस गेंद को ओवर द टॉप ऑफ साइड में, और गेंद को कवर्स और पॉइंट के दरमियानी पोजीशन पर 6 रन के लिए बाहर डिस्पैच कर दिया। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी खूबसूरत गेंद, एज हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया, और सोहेल फहद मियां जन्नू की बड़ी विकेट लेने में कामयाब। 7 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस फहद आलम। इस गेंद को खेले, मिड ऑफ को पीट किया, और गेंद गोली की तरफ बाउंड्री से बाहर, चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट, ओह शॉट यार, गेंद घास के साथ एक तरह से चिमट कर रह गई है, और फिर रगड़ खाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। इस मरतबा ऊंचा शॉट, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, जोरदार और शानदार छक्का, काफी बुलंदो वाला स्ट्रोक। और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे लॉफ्ट किया, फील्डर ने हवा में जंप किया और कैच करने में कामयाब। अहमद विकेट लेने में कामयाब हुए उमर की, और 39 रन पर दूसरी कामयाबी। बाजवा 1 रन आकर आउट हुए, 39 for 2। इस गेंद को घुटने का बेंड करके ऊंचा खेले, 2 फील्डर आए, मगर गेंद दोनों के ऊपर से बाउंड्री से बाहर, छक्का। Outside edge, gone. Tahir Pindi goes once again outside the off stump. He chased it, missed outside edge, big deflection, and good take behind the brief inning over of Tahir Pindi. Outside the off stump, he lifted. Is it long enough? Wide of the off, Hassan Shah chased it beautifully, and what a finish of the over. Change of pace, going for the run, could be tight, oh gone, certainly gone. And wicketkeeper is not happy at all. He wanted him to throw to the batting end. Wicket falls here. He goes for none, 4 for 63 on the board. He goes for it, has it lofted beautifully, over long off. Not quite, he's gone, good catch. He's yard short of Shah. He tried his best to clear the long off boundary. Well picked up by the fielder, and Ahmed has got the breakthrough. It's a big one. He goes for it. Has he struck it well enough? We're coming up. I think it goes for 6. Just enough good connection from Arbaz, who came to the crease, timed it well, and cleared the boundary. He goes for it. Chance or 6? Forget about chance, a huge one. Lovely connection right off the middle of the bat. Length ball put away by Kamran. Got him! Hit the timber. Beautifully bowled. Lovely line, lovely length. And Arbaz has to walk back. Take all time before the run-up. Shows off now. Salman hitting the stumps. Arbaz goes 6 of 2. Goes for the big shot. Should cut off. No, in the gap. It's a boundary. Good one. Very full. Plenty of pace behind the ball. He's coming back for 2. And comfortably taken. The scores are absolutely even. You are spot on, Jainat. So 90 for 6. Exactly after 6 overs. There's no lead. Nobody's ahead. Nobody's behind. Good evening and welcome back to all of you folks wherever you are across the globe. We welcome you once again from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of the night is off and running. First innings is done and dusted. And the first innings, both the sides couldn't separate each other.
Left arm bowling over. Now let's play. Let's play, boys. Outside the off stump. Will be given as a wide. And here goes Painter, announcing his arrival with his first maximum, and it's a big one over long. This is Painter, we all know. Yeah, that's the delivery he was waiting for. You're right, but Scott seems to be a master in doing that. And he's a masterer if you bowl him there. That's all right in the Stains. That's Nizar, we all know, his first 6 of this innings. Would have got few runs as well. There we see the owner of the H at the and Clifton Popular. That's wrong, and pays the price with a boundary. Does Farhad Abali. So a boundary to finish that over. 2 done, it's 20 for none. He miscued one that is in the air, and it's been accepted. Easy one for the fielder at backward point, and Paya is gone. Well, technique again comes into play with those type of shots. He gone for 8. एक और बड़ा उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर ये छक्के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद और फरहाद की गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद के पीछे भागे हैं, बिल्कुल बॉल के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जो है बढ़ गई और उन्होंने अपने कदमों से गेंद को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। इस सियासत में दोनों बैट्समैनों ने इस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ये रन आउट की अपील की जा रही है। दाऊद को लियारी लेजेंड के वापस जाना होगा 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के के साथ 13 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए। उमर बाजवा इस ओवर में पहली मर्तबा आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेले हैं और फील्डर को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ बड़ा शानदार शॉट है निज़ार लेफ्ट की जानिब से और इस बार उठाकर खेले हैं, गेंद हवा में और तैरती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। उमर बाजवा एक मर्तबा फिर आए गेंद की और इस बार गेंद को करने में कामयाब हुए हैं। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है और ये गालिबन इस ओवर का दूसरा छक्का होगा। यहाँ स्लोअर उमर बाजवा की जानिब से और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं अशरफ पठान 6 रन के लिए। अशरफ पठान फुल फॉर्म में रहे तो इस ओवर में 6 छक्के मुझे मुश्किल दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन इस बार अशरफ पठान ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी है जबरदस्ती और साथ ही वाइड बॉल का इशारा भी है अंपायर की जानिब से। 2 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर अशरफ पठान का। बार फिर से तैयार हैं, सामने मौजूद है निज़ार लेफ्टी। इस बार निज़ार लेफ्टी की जानिब से चार्ज किया गया है, कोई नहीं यहाँ पर फरहाद अलमदारी के पास मिड विकेट पर। इस ओवर में आखिरी मर्तबा और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे विकेट कीपर गेंद के नीचे और उन्होंने गेंद को कैच किया। 96 रन का अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को। 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स ने बनाए हैं और आखिरी 12 गेंदों पर 47 रन बने। Here's the first ball. And here's the first big shot. It's into the gap. That's going to run away for 4. Typical for Halmia Chunnu start this. It's up in the air. He hasn't timed it. There is a fielder at long off who is trying to get underneath that, and he has taken it. Wow, what a comeback this is from Rana Mohsin. The revenge has been sought. Fahad Mia Chunnu dismissed. Pitched up. Hit away down the ground. There is a fielder out there at long on, but the ball has gone past him. He goes again. This time getting the elevation and the distance, the captain. And that ball has lowered the roof. Slower one. Picked up. It's up in the air. He hasn't timed it. Fielder getting underneath that. And he has taken it in the, well, 6th or 7th attempt finally. And once again, it's Umar Baजवा who disappoints. Bajwa goes for 1, 19 for 2. Meanwhile, Sohail is continuing. Powerfully. Look at how fast that ball has traveled across the boundary ropes. Well, that time like a bullet. Full toss.
It's up in the air. Rana Mohsin will just watch that ball sail over his head. And you also could ask from the field. That's what you told me. Shot. Wow, that was some hit from Asad Shah. Once again, the ball has landed on the roof. Well, his name should be printed on that roof because that's how many times he has hit that. Full toss. He has hit that up in the air. He hasn't timed it well enough. There is a fielder who is trying to get underneath that, and Daud Sulaiman takes a really good catch. In fact, that has been signaled as a no ball. Wow, that is interesting. Flicked away. Not the best of timing. Has got the placement right. Yes, it goes for 4. Flicked away. High in the air. Somebody wants it. Should be taken. Gone. Asad Shah goes. Salam has got the breakthrough, exactly what his captain wanted, and it's a big one. Pulled away. He has got the timing right. Yes. He's found the fence. 1 bounce into the boundary. He is off the mark with 4. क्रिकेट के अंदर उनका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एक कल तक का जो मैसेज था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक जुमला के यार तुम लोग बहुत जबरदस्त खेलो, इसी स्पिरिट के साथ फिनिश करना, इसी स्पिरिट के साथ मैच खेलना, और तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आ रही है. Outside the off stump, in the air, flat. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. Beautifully played by Tahir. Went for it. Much higher, much longer. 6 more. Wonderful from Kaman. Goes for it. Onside. It's on. Comfortably taken. Kamran goes. Well, it's all happening. It's a wicket. Salam Bowler making a comeback. And cameo is over from Kamran lefty. He is walking back. He goes for it. Big shot. Is it long enough? He's got plenty of height. It's over the rope for 6. Haq Nawaz beauty. Oh, what a time to middle one. It's Haq Nawaz in the building, announcing his arrival at the crease. Goes for a run. Could be run out here. Oh, he misses. Will come back for 2. Scores are level now. Scores are level. Pressure on Liari Legends. Going back 3. Good this time. Nobody was afraid, but the batsman was way out. But in the end, after runs, the run out took place. They have wickets in hand. Obviously, he missed the opportunity. It's the red light, the confirmation, official confirmation. Short backward point. Everybody is ready to stop a single. One important one. Look at Have a look at those butterflies around the bat. Looking to stop 1 run. Here we go. Easily done. Victory goes to Clifton Popular. It goes for the boundary. Tahir finishes the job, and look at that celebration. Everybody, every supporter of Clifton Popular, they are in the ground. What a match. Yeah, back foot punch, a proper cricketing stroke by Dr. Pindi. Kept his calm, kept his cool, and saw his team to victory. What a game of cricket we have had. वेलकम बैक. एक बार फिर आपको कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से केटीपीएल सीजन 3 कराची नाइट्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स का मुकाबला है, और लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया. गो और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए. लियारी लेजेंड्स एक इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए तैयार. पहले बल्लेबाजी करेंगे वो कराची नाइट्स के मुकाबले पर. ये बड़े अहम मुकाबले में इससे पेशकश हुई एंगल पे जब पॉपुलर आखिर में जीत गए. और इस मैच की शुरुआत ही छक्के के साथ की है हबीबुल्लाह ने. बड़ा जबरदस्त आगाज, और ये वो आगाज है जो चाहते थे ज़ुहैर नसीब.
KTPL की रूहें रवा, और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है, मिडल हुई गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ द बैट। एक मरतबा फिर अली शेर आए और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है और ये फलक बोस तीसरा छक्का इस मैच का हैट्रिक। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर आगे हैं तो फील्डर गेंद पे भागेंगे जरूर, लेकिन वो गेंद को उठाने के लिए तो अली शेर का एक बहुत ही महंगा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां उन्होंने 25 रन दिए। इसी दौरान शफगाय और शफीक की पहली गेंद को बोल कर दिया है और कोई फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर के लिए। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर क्या गेंद तक पहुंचेंगे, बिल्कुल महफूज हाथों में ये गेंद महफूज हो गई और नजीर की गेंद अपने अख्ताम को पहुंची। और अब वापस लौट रहे हैं और लियारी लेजेंड्स का 32 पे एक खिलाड़ी आउट हो गया। और काजी की पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है छक्के। अंपायर और बैट्समैन हो राजी तो फिर क्या करेगा काजी। एक मरतबा फिर इमरान, और ये दूसरा लगातार छक्का, 3 बार तो काजी करवाते हैं। हाँ, इन्होंने 2 करवा दिए। वाओ, बहुत जबरदस्त बैटिंग, कोई शक नहीं इसमें। तो काजी साहब पर बहुत मुश्किल में है और अब तक 4 छक्के वो इस ओवर कंसीड कर चुके हैं। और एक और जोरदार शॉट, 6 रन से बाद बनेगी नहीं, लेकिन यहां पर फील्डर ने इसको कैच में तब्दील कर दिया है। 47 रन बनाकर 12 गेंदों पे आउट हुए और 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता और विकेट लेने के बावजूद कारी इमरान जो है उनकी प्यास नहीं बुझी और उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली। इस तरह आउट हुए बिना कोई रन बनाए दाऊद सुलेमान, 60 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स मुकम्मल। It was short, it was wide. He absolutely nailed that on the offside, Hassan. It had to be the umpire signal. In fact, the arms are aloft. What a hit that was. Toss gets the treatment it deserves. It's up in the end, it's over the boundary ropes as well. He goes once again. Wow, just hear the sound of the bat. Wow, that was some hit from Hassan. Another full toss, hitting it straight back past the bowler. The result is going to be the same. Not good bowling this from Imtaz Imti. It's their 4th maximum of the over. He goes for it. He absolutely slaps it, and all the fielders are just going to watch it sail over fielder's head. 5th maximum of the over. Extraordinary batting this from Hassan. They are going to be the 4th side. And the onslaught, in fact, that has been taken. Wow, that was a good hit. But it went straight to the field at a deep mid-wicket. Shoban Said walking back without even troubling the scorers. It's a 94 for 4. This time he's tried to belt it. And this time it has been taken. Finally, Ubaid Lefty has managed to take one at long gone. That is how Hassan has now been dismissed. He bowls it short. He slaps it. Once again, the ball gone towards Ubaid Lefty at long gone. The ball just bouncing in front of it. They're looking to come back for the second run. And there's a collision between Haris Ali and the runner. So they'll get 2 runs in the last ball of the over. That means Liari Legends have finished on a very strong score. They are finished on 112 for the loss of 5 wickets. अब इस मैच में अच्छी फतह दरकार होगी अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो क्लोज हैं लियारी लीजेंड्स इस वक्त। जो रन्स भी वो बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। इस मरतबा उठा दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। और एक आसान सा कैच लेकर यहाँ पहली विकेट हासिल कर ली है उस्मान जान की। और विकेट गवा बैठे। ये क्रिकेट के फुल टॉस गेंद पर भी विकेट चली जाती है और अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है। वो कराची में पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक स्टार हैं। तो कराची के असद शाह हैं, आपका हारिस अली खान है, यासिर मुश्ताक हैं। आई थिंक आई फॉलो ऑल ऑफ देम एंड दे आर ऑल माय फेवरेट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स।
तक 14 रन से बनाए हैं, एक विकेट गंवा चुकी है। इस पर दबा गेंद पड़ने के बाद अच्छा क्या खेले हैं उबैदुर, ये गेंद जाएगी 4 के लिए। तो खूबसूरत अंदाज उबैदुर रहमान। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ एफर्ट करनी होगी बॉलर्स को भी। इस पर दबा हिट लगा दी है, गेंद हवा में इतना पड़ेगा और गेंद चली गई है 6 रन के लिए। इस पर दबा उठा के खेले हैं, देखना पड़ेगा और गेंद जाएगी मिड विकेट की बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। गेंद को ग्राउंड से बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि कहां गई है। इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, जोरदार अंदाज में खूबसूरत शॉट, छक्का। और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं, जोरदार और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री से दूर, छक्का। 71 for 1 मौजूदा स्कोर। और इस गेंद को अप्पू ने उठाकर खेल दिया। बड़ा जबरदस्त इनिंग्स को मुकम्मल करने का अंपायर के हाथ फजा में बुलंद और कमर पे हाथ रख लिए भी सलाम ने, और फिर उन्होंने अप्पू को कहा वेल डन। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स में बनाए हैं। इस तरह 35 रन की बर्तरी लियारी लेजेंड्स को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। Welcome, good evening once again as we prepare for yet another innings, the third innings of this last and third match of the night. Liari Legend, they're playing second game of the day, consecutive games, and Liari Legends are 35 runs ahead. Here we go. And there you go. On the legs. Hit me delivery and hit me is the answer by Hamidullah. First boundary. Well, he's playing with the ball and it's paying for him at the moment. He's launched it. And he's launched it in the hands at the moment. Well, he's been gonna on that occasion. Long on, grab the catch. Made no mistake here, and Hamidullah goes for 4, 1 for it. This is a proper connection. This is Hassan Painda. And it's his first 6 innings. It's a fine shot, picked it up from outside the off stump. Beautifully struck. और मैं खुद कॉलेज का पार्ट हूँ, स्कूल का पार्ट हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है वो जो है वो हमारे स्कूल के लेवल पे इंटर रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमारे ग्रास रूट लेवल से लोग या बच्चे यहाँ पर आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो आप जैसे पिछले सीज़न का भी रेफरेंस दे रहे थे कि पिछले सीज़न से आप सीज़न तक मज़ीद बेहतरी आ रही है, इम्प्रूवमेंट है, और टैलेंट आप क्या समझ रहे हैं ये लीग कितनी कामयाब होती नज़र आ रही है मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को रिकग्नाइज करवाने में? Goes through the offside. That hit like train through the covers. It went to finish. Well, this is Hassan's territory. This time he's giving it a go. And it's a helicopter, reminding me of Mahendra Singh Dhoni with that stroke. Another 6 for Hassan, and that brings up the 50. One way to bring up the half century of the side. This time he's waited for it and waited for it for this, because he sends him over square leg for the maximum. That's a bad line, nicely put away. And that's gone for 4. That's gone for 4. I thought it would have been stopped somewhere in the outfield, but it couldn't. And he has spread that away and that went beautifully. And here comes his half century with the 10-6. What a way to bring it up. He goes again, bigger and better, and it's dropped right in front of us. Oh, thank God. We are behind the glass. They are asking for the more trouble. And Nizar lefty this time around whacked that away beautifully for the 6. And he has blasted that away onto the onside. It's gone country mile again. 6 more. That's good. And there we go again. Hassan Painda is in a tremendous form.
Nizar has got that away and got that away terrifically. 6 more into the offside. Hey, Hassan, you little beauty. What a good shot. Can't really stop him because he's really taking them to the cleaners. And goes again. In the air. Going, and gone. Wow, what a batting. And he goes again. And that's 6 more. He's not stopping tonight. What a weight in the proceedings. Hassan, you beauty. 85-23 balls. Wow, what an innings. A monumental effort. 176 runs will be the biggest target to achieve for Karachi Knights. It will be very tough. So Haris will face the first delivery. The final innings is about to come in here. Yes, Ahmed Kulfi is absolutely ready. He's got the new ball in his position. Inside edge. Is he gone? Umpire is unmoved. That is quite interesting. We heard something. Maybe the bat hit the ground. Nothing happened. 177-35 balls now. Big shot, nice and clean, absolutely brilliant. What a connection there is. That is sailed over straight as an arrow from Haris. Top class stuff. That was a fabulous shot. Missed it. And could be a boundary behind the stumps, missed by the keeper as well. But it got there. We have to wait for the umpire signal. Yes, leg by given. Whatever, they will take it. 4 valuable runs for them. Big shot, over mid-off. Has he cleared the boundary? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence. So finally, a good decent contact from Ubaid lefty. Pulled away by Haris. He's found the gap and he's found the boundary as well. So boundary to end the over. Oh, full toss, weighted beautifully, spanked away down the ground. Good decent connection on this occasion from Ubaid lefty. Half a dozen to his name. That was a rank bat, full toss. Swiveled away. Will get boundary. Haris is the man who's got that boundary. That's down the ground, and that's massive. That's a 6. A very good hit by Haris. He's been in good form. This time it's a proper connection. And yes, result is also in the favor of the batter. He has hit that lefty. He goes again. That's even a better connection. And it eventually goes over the line. I said better connection because that was the longest part of the ground. So, well, this time I have with me Mr. Haris Ali Mithani, who is team owner, Liari Legends. Thank you, sir, for joining us. Thank you. अभी बात कर रहे थे आप कुछ चंद ही बॉल्स हैं कितनी उम्मीद बाकी है आज के मैच को जीतने के लिए पॉजिटिव है आज के मैच को लेकर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सीजन 3 में लियारी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने. This time it's Usman Jan who's got hold of that, and it's gone all the way. First 6 of this innings for Usman Jan. Full leverage left. And that's even bigger. That's a good hit. Usman Jan with his second 6. Oh, what a way to finish things off. Sam gets his man. It's the timber. It's a wicket of last ball. Haris was castled. Wonderful ball to finish the match. And so victory goes to Liari Legends, a comprehensive one. They won it by 1 runs. Hassan was batting full all together. Yorker on next jump. And celebration has begun, and their spot in the semi-final has been cemented.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you far across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DHA Dabangs are taking on Malir Malangs all the way from DHA Sports Club Moin Khan. And the new front center has been DHA Dabangs captain Sir Mushtaq has won toss and opted to bat first. Right then, we're all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Here we go. Nicely bowled and respect earlier on given by Waqas Sher. Semi-finals first hit in front of your eyes and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. Too many butterflies under the ball and none of them could catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bound, but he's used that piece of Majid Goli. There you see. This time he's got hold it and he's got plenty of it because it's 6 over square leg. First one by Khurram Shehzad. Goes through the offside. How good is that? What about timing and placement? Khurram Chakwal, you little beauty. Oh my goodness gracious me. You're not kidding me. It's all about the timing. Nearly hit our cameraman down there. It's gone for the maximum. You wouldn't see a better stroke than this. It's gone over wideish long on for yet another maximum. It was flat and it was long. My word, this guy is unstoppable tonight. Well, this time it's Waqas Sher who is in the air and one bounce into the boundary for over extra cover. There you go. He's good there. He's good everywhere. One bounce into the boundary to get entirely out of throughs, but still managed to get 4. Because partner is unstoppable tonight. This is Chakwal's now, I tell you what. On 47 with that 6. Hammers it down the ground all across the turf. It's in the gap between on and mid-wicket. DK himself standing there at on. It's just going to be a single. Talking about Malir Malangs, well, after the first 5 games, they were leading the points table. As we see, 50 comes up for Khurram Chakwal. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat to the out. Starts off with a short delivery. That has been nailed over square leg. That's going to go all the way for 6. That'll be the story of the inning so far. Goodness me, how clean is this? It's a low hit from Khurram Shehzad. Slower delivery. Wow, that is a very good hit. That is still in the end. Finally, it has landed, but way beyond the boundary ropes. It's length, and when you bowl length to a guy of that cap, that ball is going to disappear. That delivery, juicy length offered to Khurram Shehzad and beautifully put away. It's short, it's wide. This time it's Chota Wiki who has deposited that ball over the side screen. That's a magnificent hit once again. Fuller in length once again. Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball over pitch outside the off stump. He has absolutely launched it and launched it in a magnificent fashion. Quad head on the leg side. There is a fielder out there that will definitely look to come back for a couple of the last ball. And the wicketkeeper couldn't gather the ball. But plenty of damage has been done, and Malir Malangs did not pick up any wicket. 118 for none. It's a marathon performance. It's a huge performance from DHA Dabang in the semi-final. और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद ब्लॉक होल्ड में मिला। मिमरान की शानदार फॉर्म जारी है, शानदार छक्का।
बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सामने की जानिब। ये ले जी, तेज गेंद, क्या जवाब दिया है यहाँ इमरान खान खट्टर। इस बार गेंद मिल गई रडार में जहां चाह रहे थे इमरान। मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। टेप बॉल में इसको कहते हैं, बिल्कुल मुंह में दे दिया और बोल्ड कर दिया। जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे दाऊद खान पठान। डीके गॉन फॉर 7, 28 पे 1 और फौरी बैकफुट पर गए और उनका शॉट खेला अंदर कैच लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त में हवा में उछले बट बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें दिला दी यहाँ पर। पेस बहुत अच्छा था और कैच भी उतना ही अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीर तारीफ बनती है, लेकिन खुरम चकवाल की भी क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो और बॉलर के सर के ऊपर से खेला। पावर मौजूद थी तो 4 रन। बोल्ड इस मुतवा हसनैन की बड़ी अच्छी गेंद और मुख्तार के पास कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से एक और विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। 45 रन 3 विकेटों पर। और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज होगी उतनी ही तेज दूर तक जाएगी। ये शॉर्ट डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर गेंद को एज पर बैठे हैं विकेट कीपर यासिर मुश्ताक के हाथों में और वापस आ रहे हैं आउट होकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी। 30 रन बनाकर इमरान आउट हुए। 55 में 4। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं और उबैद ने पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर। उछलकर उन्होंने अपनी जंप को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। अगली गेंद एक मरतबा फिर ऊंचा खेले है। क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा, देखना होगा। गेंद हवा में, फील्डर गेंद नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और छक्का। स्ट्राइक रेट 600 का बरकरार। 2 पर 12 रन। और इस गेंद को ऑन साइड में हिट करने में तो कामयाब हुए, मगर काउ कॉर्नर से फील्डर जरा वाइड मिड ऑन की जाने पाए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर ने बॉलर से गेंद ली और इस तरह 6 ओवर के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्होंने कंसीड की है डीएच दबंग्स को। डीएच दबंग्स जब अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू करेंगे तो 44 रन के फायदे के साथ आएंगे, जो कि यकीनन काफ़ी बड़ी लीड है। Welcome back again from DHS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi, where Super KTP Season 3 is going towards the end, and the first semi-final is being played between DHS Dabang and Mali Mines. And overall, DHS Dabang dominated so far, and they got a lead of 44 runs, a healthy lead in the first semi-final. So it's all set. First ball of the new innings. Outside the off stump, they tried to check initially. Wide given. Big shot, land ball, put away in style. What a wonderful blow. Goodness me, how good is that from Chorawicki? Could be out. Oh, he dropped it. It was a tough one from no end of the bat. And the fielder dive forward was never easy. I think he's hurt himself. And it's coming to the innings in style. It goes for 6, I guess. It's a flat one. Beautifully timed. That was some shot. Wrist work was there. It goes offside. Chorawicki. One bounce into the fence for 4. What start that is? Pulled away. Should be a boundary. 4 more. Runs are flowing here for DH Dabang. Big full toss. Has it got enough length? Should be taking it long off, no mistake. So finally wicket falls.
full toss, hit high on the bat, no timing at all, and Chodavicki has to walk back. Waqas went for 25 on 11 deliveries. 50 for 1 DH at the bunks. Oh, goodness me. Two men are converging, just or six. It's over the rope. What a way to begin the innings. Arsalan, the man in form, as I mentioned, picked it up from outside to pick up half a dozen. He goes again over long off. Six more. Comfortably holdings. Terrific batting from Arsalan. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for 6. Magazine batting. Again, it is in the air. And I think it has come down right in front of our commentary box. Wow, Arsalan is absolutely having a go at everything. This one is hit away and hit away beautifully for a beautiful 6. Oh, Arsalan has given this a go. Fielder is padding back a little bit. Oh, has he grabbed it? Yes, he has. He paddled back a bit and then grabbed that one nicely so the wicket goes down here. Oh, wow. This is going into the hands of the fielder. Oh, it is, yes. Umar Shahzad goes for 1. 105 for 3. And batsman got excited there as he got that away and got that away all the way for a 6. Out of the middle of the bat, 6 more. This is in the air. Has he timed enough? Oh, yes, he has again. What a great timing on that occasion by the batsman. And he goes again. And goes well as well. Another 6. So 6s are coming like a single hit. Last ball of this innings is coming up. But it won't, because it's going to be a wide, I reckon. Yes, it is. Wide called. Although batsman is being run out as well. And the newcomer will go. But ball will be bowled again. Yeah, 2 runs of the wides will be added to the total, but Salu has to take a long walk back to the dugout. And Khurram gets that away into the leg side. There's a man back along the boundary who comes up a little bit. They are turning for second. Oh, and now they are turning back for the third. And this is going to be out or not. Umpire has referred it to the third umpire. Let's see what will be the verdict of the third umpire. He should be given as out, but a couple of runs would be enough for them. So they have finished their second innings at 129 and they're allotted 6 overs. It means Malir Malang will be requiring 174 runs for the victory in 6 overs. Badar Abbasi, what a time he's having. It's his 3rd game and so far he has created so much impact. Big shot to the onside. Nobody's out there. Return batter. He has cleared the rope and also the boundary. Beautifully played. First 6 of the innings. Got him. Cleaning up. Beautiful here. Abdul Qadir was right on the block hole. Yorker. And Mimran has to walk back. And he got 6 for 1. 6 to his name. He chipped it beautifully over the ring. One bounce into the fence for 4. Lovely shot by Meesum. What a way to get a mark. That's some hit. Outside the option. He goes for it over offside. Nice and safe. One bounce into the boundary. और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा. एम्बियंस बहुत अच्छा है अभी स्टेडियम है, उसके बाद फिर शायद नेशनल स्टेडियम चला जाएगा. मैं समझता हूँ कराची को क्या पूरे पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है.
Flicked away to the onside. Has he got the timing right? One bounce, it lands 4. He has 4 given. Nicely timed, leg side-ish and well put away. Very impressive, Abdul Qadir. Flicked away, wrist work comes into play. Gone this time, no mistake whatsoever. And Abdul Qadir struck in the last ball of his spell. DK has to walk back. Good catch in the outfield. So 2 wickets have gone down. It's 35 for 2. DK goes back for scoring 19. And time to go for us downstairs once again with Nadidar. कोई फलाना कुछ है, कोई जुनैद जानू है, yes, पैंडा है कोई, तो वो बड़ी एक यूनिक चीज़ है, डिफरेंट है और इट्स वेरी यूनिक. Yes, Charlie ji, thank you so much sir for joining us on the sidelines. And now let's go back to Combox. ये दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की क्रिकेट है. इस दौरान शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है डीप उसकी जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. एक और जोरदार छक्का इस दौरान हसन लगा है. 62 रन हो गए, 2 विकेटों के नुकसान. फिर शॉर्ट बॉल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और हमेशा बहुत ही कम बैट्समैनों को देखने में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कवर खेलेंगे. स्पेशली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन, ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि कराची जैसे माहौल में, मौसम में ये एक्टिविटी प्लान की गई है. और मैं इसका क्रेडिट बदर एक्सपो को देता हूँ और पूरी जो कराची की जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं वो देता हूँ. और इस मरतबा भी ऊंचा खेले हैं, इस मरतबा भी आउट हो सकते हैं अगर फील्डर कैच करें तो. कोई नहीं. अच्छा कैच लिया ये. और फॉर्मेट देखें, जैसे हम कह रहे हैं कि टी बॉल क्रिकेट हो रही है, 3 स्लिपें लगी हुई थी यहाँ पर. Catch out, easy catch. Mr. Fahim Siddiqui, who is senior journalist and president of KU. Sir, thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया. Well, usually journalist खबरों के लिए भाग कर आते हैं, लेकिन आज क्रिकेट के शौक में मैदान में भी दौड़ लगती होगी आपकी भी. बिल्कुल ऐसा ही है. और यहाँ पे मैं आया हूँ तो क्रिकेट के शौक में ही आया हूँ. और ये जो कराची में आपने मेला सजाया हुआ है, जबरदस्त मेला है भाई. क्या रंगारंग है. बता रहे थे जो है कि 82 माइक में ये देखा जा रहा है. ग्रेट. 84 प्लस. यस. और उसके साथ अगर हम ये कहें कि क्रिकेट, हम तो क्रिकेट नेशन को है ना, क्रिकेट लवर है हम तो. ओके सर, हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे जरूर. यह मैच खत्म हो गया है. विल गो बैक टू कॉम्बॉक्स. बहुत शुक्रिया. 102 रन से कामयाबी हासिल कर ली है. मलंग को शिकस्त हो गई है. पहले सेमीफाइनल में 72 रन पर सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 6 ओवर मुकम्मल हुए. सेकंड इनिंग्स और 101 रन से टीएच दबंग ये पहला सेमीफाइनल सीजन 3 जीत लिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. It's 11 p.m. Welcome back from DHA Sports Club Moin Khan Academy in the second semi-final UEL Amin Karachi Table Premier League Season 3. Clifton Populars are up against Liari Legends here at DHA Sports Club Moin Khan Academy, and this also promises to be an extravagant contest between these two very strong sides. If we talk about the toss, it was Clifton Popular, and their captain Asad Shah has no hesitation in deciding to bat first once again. And he'll be raring to go in the second semi-final. We are all set for the first ball. Rana Mohsin up against the opposition skipper Asad Shah. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a full toss. It can well and be a no ball. Yes, it has been a signal as a waist high no ball. Might have slipped out of his hands. Yeah, it looked like as we slipped out of his hands. Outside the off stump, playing it over extra cover. It's up in the air. One bounce and into the fence, making full use of that free hit, Asad Shah. He goes straight. Wow, that is some hit from Asad Shah. Take that one. Absolutely gorgeous hit that one was. He banished that one from that presence. It's short. It's pulled. My goodness, how far that ball has went.
For a moment, I thought was a little late onto that stroke, but still got so much bat onto it. Oh, Zishan, take a look at the reflexes he had. Low full toss, picked away on the leg side. Asad Shah's love affair of hitting maximum in this tournament continues. And look at the spectators. He goes again. This time it's flatter and longer. Brilliant way to end the over. This from the captain. This time it's Fahad Mia Chunnu who has decided to go big. There is a fielder trying to get in the knee and he has taken it. Wow, what an attack makes this. Fahad Mia Chunnu was kept side and that has resulted in his wicket going down. Alhamdulillah, Popular is there now. Or may I wish them good luck to Zohair Saab and his team, Badar Expo and everybody. ये देखिए 6 लाख है। चलिए उसी के साथ हम आपको थैंक्स कहेंगे और कॉम बॉक्स में जाने वापस जाएंगे। Again, it's straighter, and the fielder at long on will be just a mere split. Oh, that was a gorgeous hit again. Wow, right out of the beat of the bat. It goes offside. It's high and handsome. Wave again. I think it's landed on the rope. But a fine striker over cover. It played with real authority. Lifted. It's high in the air. Who wants it? 2 men are converging. Oh dear, they made a mess of it. Could have saved. They could have saved boundary again to Clifton Popular. And Asad Shah has brought up his half century. What a wonderful show. Lifted. Has it got the timing right? It's high in the air. That's gone way over, I think. Oh yes, it's a big one. Asad Shah continues to amaze us. TV artist Matira is present as well. She's enjoying this contest. Big shot to the onside. Has it got the distance? Yes, big hit. It's a crowd. Tahir Pindi picks up a maximum here. What a start of the new over. In the air, could be out. Missed time shot. Oh, drop. He's dropped a sitter. Goodness me. Should have been taken at this level. He goes for it. Has it got the good connection? Yes, it's a big one. Not finished from three. Asad Shah is but overall it's a good over from Rana Mohsin. 10 runs off the over. It's a good total. 109 first innings. 6 overs have been done and dusted. First ball, it has gone high up in the air. The fielder at long on is trying to get in the knee. That the ball just goes out of his reach, but they still get a couple of very first ball. Who would know better than you, Kainat? It's short. He has tongued that Qari Hamidullah and has sent the ball into the crowd. Once again shuffling across the crease, hitting it flat. Has that gone all the way for 6? The umpires will definitely take a... Yes, the arms are aloft. What a hit this is from Qari Hamidullah. And I'm so excited क्योंकि मुझे लगता है that ख़वातीनें बहुत सारी चीज़ कर सकती हैं and sports, all of that. So taking the stand बहुत ही अच्छा होगा for the women. छोटे-छोटे प्यारे tournaments ही ना प्यारे-प्यारे खूबसूरत सितारे पैदा करेंगे. You rightly said, and we're super excited about the game as well. We have just witnessed a wicket going down for Farhad. Well, finally, wicketkeeper has managed to take a catch, and his lefty has been says Liari Legends have lost their first. It's 27 for 1. बहुत मुश्किल होता है और हम देखने वाले को तो और मज़ीद मुश्किल होता है. ओए होए 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 क्या हुआ? It's a 6. In cricketing terms, it's known as a 6. Slow one picked up. It's hard, it's flat, and it's long. Hamidullah is a hope for Liari Legends at the moment. It's full toss. Pick to the side. My goodness. That's a flat hit. And once again, that has sailed over the boundaries.
If Hamidullah keeps on going like that, Lyari Legends are definitely going to get some lead. फरहाद की इस गेंद को बैट्समैन ने ऊंचा खेल दिया। कारी हमीदुल्लाह का जोरदार छक्का, खूबसूरत क्रिकेट और इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अपना नाम खुद बुन रहे हैं। एक और जोरदार शॉट, कारी हमीदुल्लाह के बड़े खतरनाक हैं। एक और छक्का, इस बार ऑफ साइड में ऊंचा खेले, फील्डर मौजूद, कैच लेने में कामयाब। यहाँ कामयाबी, कारी हमीदुल्लाह खतरनाक हो गए थे। 47 रन बनाकर लौट रहे हैं और इस 58-47 बनाकर कारी हमीदुल्लाह आउट। इनको ऑन साइड में उठा दिया, फ्रंट फुट पे आते और गेंद तमाशाइयों के बिल्कुल सामने और तमाशाइयों ने डांस करना शुरू कर दिया। एक और छक्का और ये वो चीज है जो बार बॉलर करते हैं मगर बचे हैं। He got away with that one. अब रन आउट चांस भी हो सकता है। रन आउट चांस स्टिल है क्योंकि अंपायर ने, तीसरे अंपायर टेलीविजन अंपायर की जानिब रेफर किया है कि वो ये देखकर बताएं कि बैट्समैन पहुंचे हैं कि नहीं। यस, रेड लाइट कम्स इन। तो एक और विकेट यहां पर गिरी है 67 के स्कोर पर। हवा में, लेकिन वॉज दैट ऑफ द बॉडी, लेकिन रन आउट का चांस है। यस, अंपायर ने इस मरतबा जहमत नहीं उठाई तीसरे अंपायर को भी रेफर करने की, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन रन आउट हो गए हैं और अशरफ हैं रन आउट होने वाले बैट्समैन। फ्रंट फुट आके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बेल्ट किया है गेंद को, बड़ा खूबसूरत छक्का हसन का। और इस छक्के के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। लियारी लेजेंड्स ने 78 रन किए, 4 विकेटें गंवाकर, और अभी 31 रन पीछे हैं पहली इनिंग्स के टोटल से जो कि क्लिफ्टन पैपुलर ने किया था। Welcome back once again from DH Sports Club Moin Khan Academy. Second semi-final is being played between Lyari Legends and Clifton Popular, and now second innings is about to begin. They are thrown ahead, none for none. Ahmed Kulfi is ready. Fahad Mian Channo is ready with the bat. Ahmed Kulfi is with the ball. He streams in and straight away bowled a full toss, and I reckon straight away bowled a no ball or not. Let's see. Yes, that was a no ball. This is not the start they would have liked. And hit that one over the top. It bounced away to the point boundary for 4. Wide of the off stump, not a right line. It was full. Length was okay, but line was a problem. I do, we can say, and like I'm not a big fan of cricket, but I do support since my father loved it. So yeah, this is why I'm here, and I'm also supporting Clifton Popular today. Fahad Mian Channo hit it in the air. Oh, put it down. No, order. What have you done? Covers. Oh my God. And now Fahad is telling, if you drop me, I would whack you like that. Absolutely gave it a dunk. What a hit. Fahad Mian Channo whacked that away over backward square leg, in fact over conventional square leg, and it's gone for 6. Terrific. Oh, he got that away and got that away over mid wicket for another 6. What a love shot. Brilliant shot. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं PSL खेल रहा हूँ और मैं PSL की कोई टीम बाय की है। मैं I was astonished to see कि यार कमाल, मतलब कमाल का क्राउड है, कमाल के जो है टीम है, कमाल का ऑर्गेनाइजर है। You know, it's third season और you know season wise ये लीग improve होती गई है. So this is the achievement for KTPL. It is very wonderful. Just to see, you know, just to be here और enjoy करना is just phenomenal. Honestly, मेरे लिए तो बहुत मजा. Ah, yes! It's the maximum. I like them there. Oh, yes! Oh, my word. This is carnage. Absolutely carnage here. Unbelievable hitting by Assad Shah. It really is. I mean, I am running out of words to describe this master knock.
जितनी मैनेजमेंट है केटीपीएल की, जोहर नज़ीर भाई और जितने भी लोग मिलकर हमको आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट दिया है पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, और क्रिकेट को एंजॉय कर एक और चक्कर लगा दिया फाद ने। बिल्कुल एक और चक्कर लगाया और यहाँ हम आपको थैंक यू कहेंगे और वील गो बैक टू द बॉक्स। He has killed that! He has definitely killed that a long way! All gone! What a way to bring up the 100 for the team! He hardly seemed to have hit that. I tell you what, it looks as if he's got a knife in his hands! He's really slaughtering them! Big time! It's a sword in his hands, Fahad Miachu. Bowl him! Unbelievably got his man through the legs. It wasn't on the cards, I can tell you. It was a slow delivery. Well done, Sohail, you little beauty. You miss, I'd say. So lefty Fahad Alam walks back after scoring a magnificent knock of 47. Whipped away. Very good looking shot too. He got himself a boundary. Umar. Well, that's what he can do, Umar Bajwa. Goes through by this time. He goes over the top and gets the connection all right. It's a big 6 to finish things off. What a way to end the proceedings with the bat for Clifton Pebblers. And their lead is now of 162, which means that 163 will be the top for Levy Legends stays down. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, ऑन साइड में अच्छा शॉट, फील्डर दौड़े जरूर लेकिन गेंद को रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। इस गेंद को ऊंचा खेले, खतरे में है, फील्डर गेंद के नीचे, विकेट लेने में फरहाद कामयाब और उन्होंने सेंड ऑफ भी दिया बैट्समैन को। खुशी का यार, इस तरह हसन की बड़ी कामयाबी पॉपुलर्स को मिल गई। 3 बॉलों पर बड़ी विकेट, 1-4। कारी हमीदुल्लाह ने गेंद को खूबसूरती से हिटा। ऐसी बहुत सी हिट्स दरकार रहेंगी अगर जीतना है, लेकिन ये बार पहली बड़ी हिट है कारी की, छक्का। अच्छा शॉट। इस मरतबा भी गेंद को खेलने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्लाह का खूबसूरत अंदाज, ऑन साइड पे एक और छक्का। पीछे गिरी गेंद और उसका फायदा उठाया कारी हमीदुल्लाह ने। शॉर्ट गेंद, इसे स्क्वायर लेग यानी पहले रन आउट शॉट, रन आउट हो जाएंगे कारी हमीदुल्लाह। निज़ार नहीं और कारी बढ़ते चले आए और इससे भी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर है जो इस वक्त लियारी लेजेंड्स की है और इस तरह एक और विकेट जो है वो लियारी लेजेंड्स की गिर गई। बहुत ओवर इमरान का, इस बात में कोई शुबा नहीं अब तक। और जोहेर नसीर का खूबसूरत शॉट, बैकफुट पे रॉकेट होते हुए गेंद को बैकफुट स्क्वायर लेग से बाहर टका। ओह गुड हिट, ये देखें इस गेंद को ऊंचा खेले हैं बैक स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद रोल करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर, चौका। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड में और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका। Goes big, does Zohair Nasir. Has he connected well enough? Yes, he has. It's 6. He's enjoying his batting. There you see, everybody seems to be enjoying this. UBL presents KTPL Season 3. Hitting it away on the offside. There is no protection out there. It's going to get boundary. Nizar lefty. On the leg side, it's up in the air. And it has gone all the way for 6 again. He's just enjoying his time out there now. Nizar lefty. Slower one picked up on the leg side by Nizar lefty. He's got the height and the distance. Once again, the ball landing into the leg side, into the crowd. Oh, he goes once again. My goodness, how well has he timed that? Wow. He's putting up a show here tonight, Zohair Nasir. Tell you what, he's got something in his armory. What do you mean? It's Zohair Nasir with his bat. Yet another Ximam. Come on, you can hit them.
Oh, he has been knocked over. It was a full toss. He was coming down the track, yorked himself, and the ball landed in the base of the middle stump. But a brilliant cameo comes to an end from Zuhair Nasir. 28 of just 11, dealt in just maximums. Outside edge, that should have been a regulation chance. It's all happening for Clifton Popular. Yeah, this is a field we can witness in Test match cricket. Ahmed Kulfi is clearly disappointed. Out for a golden duck, it's 88 for 4. Down he comes. Up she goes. Out of the ground. 6 more. Ashraf Patang say to the opposition, centre fielders back in their position. Pitched up, makes it into a full toss, hits it. Over, long gone. Back-to-back maximums for Ashraf Patang, but that's not going to be enough. They scored 100, the loss of 4 wickets, but still they have suffered a huge defeat by 63 runs in this second semi-final. Won that second semi-final and advanced to the final. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब सानी है। मैं डोमेस्टिक सेल ऑफिसर अहमद फूड से। तो हमने यहाँ पे बचत एक्सपो में स्टॉल लगाया हुआ है अहमद फूड का। तो हमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बचा है वो ऐसे आप सब रस लेंगे 800 ml, वो मार्केट में 430 का है और हम आपको दे रहे हैं 250। और ऐसी कैबल मार्केट में 30 का है, वो आपको दे रहे हैं 320 रुपये का। तो काफ़ी हम बचत दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप आइए लाजमी। यहाँ पे हमारा अचार भी है 600 रुपये का मार्केट में दे रहे हैं और यहाँ पे 400 हम यहाँ पे आपको स्टॉल पे देंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो बहुत ही आप यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में ले सकते हैं। तो जैसे कि देव अहमद के सब आइटम ये पाकिस्तानी ब्रांड है, को प्रमोट करना चाहिए और इसराइली जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम यहाँ पे कराची के लिए आया है। सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास और जो भी आएगा उसको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। भाई क्या हाल है? अच्छा भाइयों, हम हैं अलनूर राइस मिल पंजाब रहीम यार खान से। ठीक है, हमारे कराची में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑलरेडी हमारा चावल पूरे कराची। लेकिन इस बार हम बचत एक्सपो में, जो कि बदर एक्सपो वालों की तरफ से था, जिनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम कराची की आवाम की खिदमत कर सकें। तो ये अपना जो प्रोडक्ट है जो कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में अलनूर राइस मिल, अलनूर इंटरनेशनल और अलनूर ग्रुप आता है। तो मैं ये आपको एक अपना प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ जो हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये डबल स्टीम डबल फ्रिज 1121 प्योर कायनात 1121, जो कि ये आप देखेंगे, इसको जूम करें। ये चावल आपको दराज पर 120 रुपए किलो। ठीक है, बात अगर मार्ट है 480 450। और ये हम चावल कराची वालों के लिए जो इसमें है 330 रुपए किलो, चाहे 1 किलो लें 50 टन लें। ठीक है, हम सबको वेलकम करेंगे। हमारे पास पीछे लॉट पड़ी हुई है। मिल डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेलकम करते हैं, रिटेलर को वेलकम करते हैं, आम पब्लिक को वेलकम करते हैं। आए, ये नादिर मौका है, पूरे साल फिर से आपको ये चावल 330 रुपए किलो में कोई भी नहीं ला के देगा। ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको चावल पसंद ना आए, आप पीछे दिए गए नंबर पर बताएं कि आपको चावल पसंद नहीं आया। कराची में आपको चावल चेंज भी कर देंगे। कराची में ऑलरेडी 5 से 10 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलनूर राइस मिल्स के। तो आप बिस्मिल्लाह एक दफ़ा। और आखिर में एक और दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो वालों का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं
महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening everyone. It's KPL season 3 grand finale. Clifton Popular taking DHA. The Bungs were DHA Sport Club Moin Khan. The Bungs won the toss and they are playing first. Here we go. Players are ready. Everything is in order. Everything is in readiness for the first ball to be bowled from the far end or from the ocean end. Irfan Nona to start the proceedings. Chota Wiki is ready. Irfan steams in. Here's the ball. Outside the off stump. And he started off with a wide run straight away. Chota Wiki has got that away. And here comes the fucking final. That's Tom. Well, that's gone out of him. Chota Wiki has got it in the air and got it towards the deep boundary. Oh, good hit. He got that away over the top cover and racing like a triple at the boundary before. Oh, he's in some form. Khurram Chakwal has played that away. This is Khurram Chakwal. It's gone for the journey. He has hit it again and hit it well. Oh mine, Khurram Chakwal already smashing them out. What a magnificent dog. 2 sixes in a row. Khurram Chakwal at his level best as he bashed that away over long off. And look at it out. Khurram Chakwal, you little beauty. Grand finale. 46 for none in 2 overs. And Chota Wiki has picked that away and away for the corner. 6. And again, better and bigger. Chota Wiki is making middle of the bowling. Wow, short yard. Wiki has hit it and he grabbed it. What a good catch. Oh, what a great catch it has been. Chota Wiki drove that one very hard, but he plucked that one from the air. Magnificent effort. Is this the first just in the tail? Is this the first one in the match? Dear Salan. He got that one away over the top of covers and it bounces away to the boundary before like a tracer bullet. Wow, good shot. Khurram Chakwal put that away and put that away in style. 6. Put it. Has he got enough bat on that? He has. Wonderful. First 6 of the over. Drop the ball short. Has he got the elevation? It's flat. Gone this time. Wagner Chinu picked up a catch. He was nice and relaxed. What a shot. Arsalan Jamshed went for 11 of 5 deliveries. 79 for 2. DH the Bungs. Chance. Leading edge. Who wants it? Should be a simple catch. Got him. Over goes without shooting. What an over it has been. Imran has picked up a wicket. 2 in over. And Didi is the supporter. Outstanding over from Imran and the short stay from Umar Shahzad goes without troubling the scorers. 3 for 79 on the board. Flick of the wrist from Khurram Chakwal. And it's on the way. He's what is in once again. A terrific shot of the wrist. Big full toss. He goes offside. Smashed away. Fix. One shot again from Khurram Chakwal. Bad delivery. Put away. Smashed away to the onside. What a strike that is. He has absolutely nailed it into the crowd for half a dozen. From the ball short, smashed away. Khurram Chakwal has made him pay. What a blow that is. Shot outside the arm. That is on this occasion. And what a good strike that is. Up goes the arms. Waited, smashed away. Down the ground. 6 more. Yes.
It's a what a batting performance. He's already brought up his half century in the previous ball. Big shot on the onside. That is gigantic. That is huge. It's a tremendous batting. 69 of just 17 balls. 6 overs and done and dusted in the first innings. And look at the score. What a big score. 3 for 128. Well, DH, the Badar must be really happy with the effort. The boys have shown 1.8 in big overs. फर्स्ट बॉल आने को है और मिड विकेट पे खेले वाहद मियां चन्नू, फील्डर मौजूद कोई रन। खासा है कादिर कश्मीरी का कि एक तो जबरदस्त पेस से बॉल करते हैं, साथ साथ इनको पिच पे मूवमेंट भी मिलता है। और इस गेंद को खेल दिया असद शाह ने। गेंद हवाई रास्ते से होती हुई बाउंड्री से बाहर। ऐसा लगता है कि आज रुकने वाला नहीं। बड़ा जोरदार शॉट इस मरतबा फहद चन्नू की जानिब से। पहला छक्का। फहद मियां चन्नू ने ड्राइव किया और गेंद गोली की तरह डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रन। यही करना पड़ेगा, बॉल को अपने मिनट पर खेलना होगा जब आप जहीर कालिया का सामना कर रहे हो। तो इस मरतबा मिड ऑफ को क्लियर किया फहद मियां चन्नू का खूबसूरत शॉट हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब का। और इस मरतबा जोरदार शॉट यार, छक्का। शानदार अंदाज में बैट स्विंग दिखाई अपनी यहाँ पर असद शाह ने। इस किस्म के शॉट्स खेल के ये टॉप स्कोरर बने हैं अपनी टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के। और फहद मियां चन्नू ने कहा कि भैया बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। जहीर का पैच किया, लॉन्ग वे बैक, छक्का। इस दौरान अगली गेंद फहद मियां चन्नू goes downtown and goes country mile। जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू का। जी हाँ, उमर ने स्टार्ट लिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और बड़ा ही दिलकश शॉट डीप विकेट के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत का क्रम गेंद गिरी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो पहले बॉल पे 6 रन ले लिए इन्होंने। उमर क्या करते हैं, एक दफा फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये भी मेरे ख्याल स्क्वायर लेकर मिड विकेट के ऊपर से और अच्छा, बल्कि मोइन खान कमी जो कि इंटरनेशनल सतह का ग्राउंड के बाहर बॉल फेंक दी गई। शॉर्ट गेंद भी सोचा इसको कि खेले, लेकिन लगता है कि एज कर बैठे। जहां विकेटकीपर ने टैप किया और यहां पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए उमरी पेसर और उनकी विकेट नंबर 22। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए उमर। 5वां जोरदार और खूबसूरत छक्का अगर उन्होंने इस ओवर का इख्तिताम किया है और इस ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 85 पे 1। फहद मियां चन्नू 45 पे। इस गेंद को फहद ने स्विंग किया, फील्डर मौजूद, डाइव फॉरवर्ड किया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए और 87 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 2 गिर गई है और फहद मियां चन्नू 45 रन बनाकर आउट हुए। बहुत बड़ी तादाद को आप मौका दे सकते हैं कि वो आएं और इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। इस दौरान जोरदार शॉट ताहिरी पिंडी का और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 100 रन पूरे हो गए आरिफ साहब। आखिरी बॉल लेकर एक बार फिर हसनैन और इस मर्द भी अच्छी गेंद, लेकिन फाइन लेके फिर से फंबल हुआ। उन्होंने गेंद को रिकवर किया, दूसरे रन की कोशिश है, रन आउट चांस लगता है फिर अवेल नहीं कर पाए और इस मरतबा 2 रन के साथ लगता है कि इक्तिफा हो गया है। जी हाँ, इन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 110। इस तरह 18 रन की बढ़तरी जो है वो डीएचए दबंग्स को पहली इनिंग्स पे हासिल हुई है। 110 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर टीम जो है वो क्लिफ्टन पॉपुलर की।
Welcome back once again from the DHA Sports Club Moin Khan Academy, Karachi, where the all-important final is going on. The first innings have been done and dusted, and the defending champions, DHA Debangs, have excelled by retrieving a lead of 18 runs in the first innings. We are all set for the start of this third innings. Irfan Nana to Chota Wiki. Let's play! Let's play, boys! Nicely bowled, full toss, just with the angle going away. These sort of form not required. Asad Shah, captain, was there on that occasion. But they're off the mark, Waqas Sher and company, nevertheless. That's hit away hard and flat. One bounce over extra. First play of the second innings by Waqas Sher, and it's a good one. And bowling full toss. Hit hard, but my word! Not an exactly wicket-taking delivery, but he will take it all day and all night. It's Irfan Nana, it's drama already. There are my Clifton Palace. Waqas Sher, early in the piece, goes for 4. 4 for 1. Rip away in the vacant region, and the ball is going towards the boundary because that is vacant region. That's why eventually it gets to the fence for Irslan's boundary. Oh, he has swatted that away flat, and in no time he's gone to the boundary. 4 more. Tell you what, that was not a slow delivery, but he just hammered away down there on the left side. He's brave enough, and he's getting the success as well. Not this time, because it's Khurram who gets into the act. Thumped it down the ground for yet another boundary. Bowled it! How about that? Round his legs, and I like that salute. Wow, Irfan, you little bitty. Tell you what, I've been waiting for a dismissal since the very first day of the tournament. Bowling a batter round his leg. And you're talking about Khurram Chakwal, who has been simply outstanding. Takes a big fish. Khurram goes for 9. 2 wickets down for 27. टूर्नामेंट को देख के अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओसाका लाइटिंग ने इस मैच के लिए इस टूर्नामेंट के नुमाया काम किया है। बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने क्रिकेट के लिए ओसाका किरिको के नाम से टेप इंट्रोड्यूस कराई है। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द इवेंट लिया गया है जब फरहाद की गेंद पर फहाद मियां चन्नू ने जबरदस्त अंदाज में सलमान खान का कैच किया और वो 1 रन बनाकर और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है उमर भाई शेखुपुरा। ओह माय गॉडनेस, क्या कमाल का कैच लिया है। टीम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पिछले इनिंग में आपने देखा था शॉर्ट कवर्स में खूबसूरत जो है वो लेकर तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं और उमर शहजाद बिना कुछ बनाए आउट। और यहाँ पर उठाया है गेंद को और जाएगा ये बिल्कुल मीलों दूर। अरसलाना की बट फख्रे पाकिस्तान जिला गुजरात से हैं और पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम के ये बड़े अहम खिलाड़ी हैं। 57 रन की लीड और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। बड़ा खूबसूरत और सोडा शॉट अरसलान का। डीएचए मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ अ कमबैक हियर। 45 रन हो गए छक्के के साथ। 4 ओवर का खेल कमल। इस पर तबाह उठा के खेल दिया है, देखना पड़ेगा और गेंद यकीनी तौर पर जाएगी तमाशाइयों के बीच में। ये है कि टीपीएल तो जिस तरीके से हमने लोगों के अंदर जाना था, लोगों को बताना था कि देखो हमारा ये एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था जो गली मोहल्लों में खेला जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इसको ग्राउंड्स के अंदर लेके आए। 15 साल हो गए, सो नॉट बीइंग मतलब 15 सालों में ऐसा क्राउड नॉट इवन इन द सबर्ब हैव टू गो एंड सी यू आउटसाइड टू हैव 2000 people inside to get it. So imagine कि जो इसकी लेवल है और जो इलेक्ट्रीफाइंग है। क्लिफ्टन पॉपुलर उठा के खेला है मुस्तफा हनीफ। क्लियर ने कामयाब हुए यहाँ पर स्क्वायर रीजन के बाहर और बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया है कि इट्स अ बाउंड्री फॉर मुस्तफा हनीफ। उठा के खेला है एक बार फिर से और ये बॉल तमाशाइयों के बीच में एक और बुलेट। मुस्तफा और सलान एट द फिगर ऑफ द इनिंग्स। यहाँ पर एक बार फिर से उठा के खेला है डीप विकेट की जॉब। फहाद मियां चन्नू के बैक टू द बॉलर और यहाँ 1 रन मिलेगा।
बड़ा कामयाब ओवर है ओवरऑल ताहिर पिंडी की जानिब से। आखिरी 3 गेंदें बड़ी अच्छी करने में कामयाब हुए। पहली 3 गेंदों में 18 रन उन्हें पड़े थे, 1 चौका और 2 छक्के और 1 वाइड बॉल के 2 रन। आखिरी 3 गेंदों में मैच 2 रन दिए। इस तरह डीएचए दबंग्स ने अपनी इनिंग 87 रन 4 विकेट पे मुकम्मल की है। 105 रन से उनकी बढ़तरी हो गई है। इस तरह चैंपियन बनने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर को 106 रन दरकार होंगे। Abdul Qadir Abbas is good to start proceedings in final innings. Just couldn't time it. Hitting the bottom half of the bat. Starts off with a dot ball. No timing at all. Try to heave it. Intentions is pretty clear because target is way above 100. Hit it over extra cover. This is bad butter stroke for someone like Asad Shah. Typical of Mr. 360. Boundary to start the inning for himself. What a start it is from Asad Shah. He went over extra cover. A well-controlled shot, lofted beautifully. Pick up. Not many batters can hit a shot like that to Abdul Qadir Abbas. He just sailed into the ground. Stunning, absolutely stunning from Asad Shah. Flick of the wrist and then dribble over the boundary. What a start that is from the captain. He hits it up. It's over long off. Wow, that is a big hit from Fahad. That's how he announces his arrival. Welcome to the crease, Zaid Ahmed Kalia. What a shot that is. Goes over extra cover. That's a flat into the crowd. What a magnificent shot. Once again, tremendous contact. Zahir Kalia, what can he do next? Once again over extra cover. Wow, what a hit that is. Elevation and the distance. Got a crowd dropping a catch. You little beauty. My word, that is a classy shot. Picked up. Down the leg side. Wow, that's a monstrous one from Wahbi Ajanu. And look at the joy now. The football was too good, but this is something special. Wrist work over long on. What a shot that is. He'll have to work a little harder because Wahbi Ajanu is absolutely amazing right now. That's the Robert Wade. Abdul Qadir over the wicket. He stayed deep in the crease, and what a shot that is. It's short, it's pulled, it's flat, and into the couch goes once again. Sixes are literally flowing like a river. Goodness me. Murtada Wahab Saab is present here. Mayor Karachi, witnessing this cracking final. Sitting along with Mr. Zuhair Nasir. It's up in the air, he hasn't timed it. Can this be taken? Oh my goodness! Oh my goodness, this is Zahir Ahmed Kalia. What has he done? The crowd, in fact, the whole team is running out to him. This is a sensational catch. And look at the reaction of Wahbi Ajanu. Will they come back? And what a scintillating performance from Fahad Alam. 42 of 14, last ball of over number 3. He hits it straight. Wow, that is as straight as an arrow. Umar Bajwa also announced his arrival. He's running, but not tonight. Remarkable shot. Absolutely remarkable. Just a hint of a helicopter shot. Asad has swept that away into the left side and picked up that, and it's gone for 4. Hasnain streams away. Oh, this one is pumped and pumped over the corner. What a timely 6 for Asad. He comes. He got that away and got that away through the offside. Well done. It's gone all the way. He slapped Zahir Kalia. What a magnificent 6. Asad Shah, you little beauty. Here he comes again. And he has hit that and hit that. Where has it gone? Oh, no, it hasn't gone anywhere. And fielder is looking very upset as well. We will have to. Here he goes. He has hit that into the leg side. Oh, what a fielding. What a fielding. Who was the fielder? And it could be a run out. It could be a run out. It is. It is a run out occurred. Although umpire has sent it upstairs, I think they want to see who has been run out. I tell you what, pressure is mounting. Umar Bajwa gets out for 10 of 7 balls and it's 95 for 2. Free eye is in the middle. Umri goes away. And Asad got that away. On the top, it's away. Has it gone?
to the boundary. Oh yes, for drama. Drama still on. So required of 2 balls. My God. 5th ball of the over. Asad has played that away. Protection is there. They take one. Will they turn back for the second? Run out chance. It is. It is. It has gone to the final ball. And Asad will have to face the final ball. And Asad and his team will need 6 runs for the victory. Javed Miyadad smash Chetan Sharma in 8 for a 6. Since everyone is up on their feet, it's commentators' turn to come and up. Get up on your seats. Here's the final ball, and Asad has hit it in the air. And oh yes, Asad has smashed that out. Oh my God, what a scene here! It looks like years ago. Crowd used to come to the ground and used to at the pace of their favorites and their ideas. Oh my God, oh my God. KTPL is ended and it's Clifton Popular. They're the champions of KTPL Season 3. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए यूबीएल के बॉल प्रीमियर लीग सीजन की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक महमूद भट्टी, डिप्टी जनरल मैनेजर पीईसी जो है वो पीआईए का एक इदारा है जो एविएशन से रिलेटेड जो है पार्ट्स वो बनाता है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट्स बना रहा है और दूसरे डिफरेंट एविएशन ग्रेड के सर्टिफिकेशंस हैं हमारे पास जो, और हम जो है चौथी दफ़ा इस आइडियाज़ 2022 में पार्टिसिपेट करने से पहले भी हम 3 दफ़ा आइडियाज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 40th edition is a platform for G2G, E2G, and E2B fractions, joint venture and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenge within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center. जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The fourth exhibition platform for G2G, E2G, and 2P actions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense. The division of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The first exhibition offers a platform for G2G, E2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The basic offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2020 bring together stakeholders across diverse defense industries. The 48 activated platform for G2G, E2G, and 2P connections, joint ventures, and investment in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The division of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4th exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on challenges within the defense sector. The edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. लगा के जी अच्छा लगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने जो बचत एक्सपो लगाई है, आपको आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल मुतमईन। कुछ रेट कम मिला? जी मिला। सुकून होके जा रहे हैं? बिल्कुल सुकून होके। लोगों को मशवरा देंगे कि यहाँ आएँ और शॉपिंग करें? बिल्कुल यहाँ शॉपिंग करें, बाहर से रेट में यहाँ से कंपेयर बहुत करें, रेट कम है। तो बोलेंगे बचत बदर एक्सपो सॉल्यूशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दाल वगैरह जो है ना, इन चीज़ों में यहाँ काफ़ी फ़ायदा है। कोल्ड ड्रिंक हो गई, लेकिन दालें वाले सब वही बाजार के रेट पे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इस तरह की कोई चीज़ परचेज़ की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क जरूर मिला और ये पहला कतरा है। जहाँ लोगों के लिए बचत का पूरा मौका है, वहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं ताकि वो भी
सस्ते दामों में लोगों को सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनका अपना किचन भी चल रहा है। एक साहिबा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो ये स्टॉल लगे मौजूद हैं। एक छोटे से स्टॉल के जरिए भी इस बचत एक्सपो से कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा थोड़ा सा बताइएगा अपने स्टॉल के बारे में। जी, मेरा नाम सना अंसारी है। मैंने आज स्टॉल आया जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों को रेट टू रेट विदाउट एनी प्रॉफिट यहाँ आप लोगों को टिकट्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं आजकल के इस महंगाई के दौर तो अपने बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी कर सकें। बाजार फूड इंडस्ट्री के स्टॉल पे मौजूद है और यहाँ पर जो बुनियादी It's 12 a.m. Welcome from DJ Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of tonight, DHA Dabangs are taking on Clifton Popular. And news from the century that Clifton Populars have won the toss and they have opted to bowl first. A little surprising for me at least, but we'll see what they have to offer. It's going to be another very good game of cricket. Looks as if it's going to be Farhad Abdali, the man on your screen, will be starting the proceedings. He's a left-arm quickie, and taking strike is going to be Casey Kuram Chakwal. There we go. And there you go. In the slot, and went to the bowling crease and sails over eventually for the maximum. This is Casey for you. As is another one. This time he goes over cover. And that's gone all the way as well. Couple of sixes to stop the proceedings. Entertainment already, Zishan. And again, flick of the wrist and away she goes. That's another one. 3 of 3. He's non-stoppable at the moment. There you go. It's a no ball. Alding saw to one and it goes all the way. 4 of 4. Well, this is an onslaught, and so far the bowling side have no answer to that. 4 maximums to start off the campaign, 4 maximums to start the innings. Could have got that Yorker right. It's not going to help. The length delivery not going to help because it's a couple of bounces and over the boundary for 4 to mid off. He goes big. This time it's Umar. And it's gone away. That has to be the biggest of the night so far. It's 37, would you believe, a first over. And there you go. Have a look at that for a shot. It's gone 4, not gone all the way, but it was an amazing stroke of cricket. It was slow in pace and it went high in the air. Now somebody has to get underneath it. Lining the basic Brewers Cup. And that's the end of Furam Jackwal. Will be much relieved, Clifton, to see the back of this guy. At the moment, Umar is going to be on strike. And Umar goes big this time. It's very high in the air. And it's safely gone all the way, I reckon. Yes, it is. Another maximum. Full toss, put away on the leg side. It's going to be a flat... No, one bounce into the fence. Is it? Yes, it is. It is go up. Well, the persistence with that line angle eventually helping the bowler's cause. 63 for 2. Shot. He goes big, and this is what Wakas is known for. It went country mile over mid-off for a half a dozen. Come on, umpire, put up your both hands. He goes big, he goes long, and it's a Wakas airliner once again, but lands in the hands. Unbelievably caught. They're losing wickets in clumps as well. They're hitting sixes and losing wickets, so it's a mix-up. End of the third over. It's 72 for 3. Another one, even bigger and better, and it's gone many a miles. Balls are traveling and hitting the boundary ropes regularly. Oh, Yasir Mushtaq has hit it in the air, and that's exactly what we're talking about. And finally, bowler got it right, and Yasir Mushtaq lifted a catch at the long on boundary, and 4th wicket falls. Oh, he caught that away and cut that away magnificently. It has gone all the way. Siptan, umpire, raised his arms and signaled it a half a dozen. Edged it
going to be out. It is. Fielder was there at the flying slip, one may call it, who took that one deadly, and another wicket falls. Facing Irfan, and he straight away launched that one, and launched that one out of the park. Another 6. What a way to start his innings. He hooked that one away onto the onside. Fielder was down at the long leg boundary, and he caught that one beautifully. He had to run, had to go a bit of territory to get under the ball, which he did pretty well, and at the end caught that one very, very nicely. 1 or 2 for 6 now. And straight away, he caught that one over wide mid-on for a 6. It's a lot of 6s. In fact, too many 6s. That was a very good ball. And it's going to be a run out. It's going to be a run out. Yes, it is. 114 for 7. Single on the last ball of the innings. And it called leg byes by the umpire. So they have finished the innings, I reckon, at 120 for 7. It's a very good score in 6 overs. The umpire calls it play. Fast bowler is going to start the proceeding from the gymnasium end. He's going to come around the wicket first up. Hit away on the offside into the gap. That might go all the way for 4. Yes, it does. So an excellent start as well from Clifton Popular. First ball has been dispatched for a boundary on the offside. This time taking the aerial load. Is that going to be the first maximum of the innings? You betcha it is. A boundary and now a maximum. And even Clifton Warriors are up and running. Short pitch delivery. That has been smoked on the leg side. That is going to go into the stands. What a way to get off the mark with that too from the captain. Hitting it up in the air. It's into the gap. One bounce into the fence, or is it a maximum? Yes, it has been signaled as a boundary. So once again, Fahad starting the over with a boundary on the offside. A big shot attempted. Down the ground it goes, and it goes over the boundary ropes as well. Once again, a 4 followed by a maximum coming from the batter Fahad. Pickups on the leg side. That's going to travel to Journey as well. All of the batters from both the teams are showing no mercy whatsoever to the ball. Shot of the day to me. Fahad. He goes straight, he goes long, and he goes for yet another maximum. That has been the story in this over. It's the third of Zohaib. 26 of the over. Another swing away on the leg side. It's into the gap. That's going to go all the way for 4 as well. So that's the over they were looking for. 3 maximums and 3 boundaries make that 30 coming from that over of Zohaib. So it's going to be Awais Salim starting the third over. Hopefully starts on the shot, put away on the offside. Beautiful batting once again. This time coming from the batter Fasad. Now he decides to go big as well, and that's going to go way over the stadium. And the crowd really enjoying it. Very good striker of the ball. He goes big this time, doesn't get the elevation, but certainly in the gap down to mid wicket. First boundary in this over. He goes big and he goes massive, and eventually comes down out of the ground. What a shot to start the proceedings. Welcome to the bowling crease. जी I'm very much excited about it और आप देख रहे हैं पीछे के कराची की रोशनियां बंद हो गई हैं और everybody is enjoying this match और खास तौर पर देखिए क्लिफ्टन पॉपुलर इस वक्त खेल रहा है। ओके यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्लिफ्टन पॉपुलर्स की एक विकेट गिर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। But this is a game, you know. गेम में ऐसा होता है। But if you bowl that length, then you're going to go the journey, no matter it's meat or the bat or not, and it goes all the way with all the pace of the bowler. He picks that one away, but straight to the throat of deep square leg fielder. Another goes down. It's Haq Nawaz, who's the latest exit. Second wicket goes down now. He goes big, and this is what we were expecting of Umar Bajwa. He's a big stroke of the ball, and that is the evidence. He chips one in the air, and he's been caught brilliantly. Very good catch there by
Khurram Chakwal at long on boundary. So Bajwa goes for 6 after 2 deliveries faced. He goes big this time, does Tahir, and he goes long as well. Over square leg for a big 6. There he goes. And I wonder if that is a wicket. There you go. Your prediction comes true, kind of. Yeah, they've managed 118 runs of their of 6 overs and lost 4 wickets, which means that they will have to trail by 7 runs. Welcome back to the DHA Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is being played. And the third innings of this match about to be get underway. DHA Dabangs has the lead of 8 runs. And for what do you make of this 8 runs lead? But lead is a lead. And straight away he had a wild swing at that one, but I think he changed his pace a bit. He bowled a slower one back of the hand. Left arm from round the wicket, and Vicky has caught that away over mid-wicket all the way for 6. Tremendous shot. Wasn't a long hit, but half a dozen. This one is picked away, and picked away for a massive 6. 6s are being hit in every part of the ground again. He's a real class act, no doubt about that. And he goes again, and goes good enough for yet another 6. This one is going, and gone away for 6. That was a some hit. And he goes again. But fielder is there at the backward square leg, and he caught that one beautifully. Chota Vicky fend for the big hit again. He has to walk back. Big hit, 15 to his name, 34 for 1 on the board. Meanwhile, Hassan is going to continue with his second left arm seam. Picked up. Is it long enough? It's sailing over the boundary ropes. Yes, it is. Perfect start to the over this from Khurram. Another slower one. This time he decides to go straight over long over, and see you later says it to the ball. Back-to-back 6s for Khurram. And now they are up and running once again, DHA Dabangs. 34 over 3 was not a threat for Clifton. Once again goes straight, goes long for yet another 6. It's the hat-trick of maximums now. This time over long on. Length. It goes flat. Is it another one? Yes, it is. Oh, someone please take it. Someone in the crowd, please take it. They'll be looking to make the grass come back. He tries to go big. He has sliced it up in the air. It could be taken. It has been taken. Second wicket goes down. They are 62 for 2 at the moment. And he decides to go straight. There is a fielder down there at long on, but the ball is going to go over his head. A bit of a counter punch now from Arsalan. He tries to go big over long off, and he gets plenty on it. Another 6 from Arsalan's bat. The lead in the first innings of about 13 runs. It's in the air and it's been caught. So Khurram Chakwal has to take a long walk. Khurram Chakwal will be walking on his way back to the pavilion. 42 of just 15 tonight for the big star. Once again, perfect execution of that yoga. It's going to be just one. In fact, they're looking to come back for the second one. Run out opportunity at the bowlers, and it's a suicidal run out. There was no way he could have come back for the second run on that occasion. That just did not even cross the inner ring. I wonder what the chemistry was going on between both of the batters. Full toss, picked away on the leg side, and a much needed maximum for the Dabangs. Missed out his left time by just a few inches. Felt like he was waiting for it, Arsalan. He goes for another one. Full extension of the arm. That's the shot of the night. Over long on for a gigantic 6. Oh, forget about the distance. How about the height? So the innings of the Dabangs is over. 105 is the equation. Clifton Popular have to get 1-5. They did well in the second innings. First ball of the final innings. Full toss outside the off jump. And like the gap and could be a boundary. Chases on, and finally ball has got to the fence. So boundary to start the over. That should have been stopped. It wasn't struck very hard. Umar again.
Smashed away, over long off. He has cleared the boundary quite comfortably. It's not a long hike, but he smashed it well enough to pick up a maximum. He goes leg side. It's high in there. Will this be taken? It's a tough one. Who wants it? And a second, what a wicket that is. It's a huge one. Fahad has to walk back. It's a lead pitch and well judged catch indeed. It was a tough one. Picked an important wicket of Fahad. Boundary and 6 followed by Umar again. It's high in the air. Where is going to land? Is there a chance or is the maximum? It's got him! 2 wickets and 2 balls. Would you believe it? Dream start for DH Damangs. There's 12 for 2 on the board and they are extremely happy. Hat-trick ball. Pulled away. Will it be taken or it goes for 4? Nicely struck. Importantly, it's a well-placed shot. He goes leg side as a Shah and has got the distance. He has just cleared the hoardings and he starts off with the maximum. Beautifully played. Outside edge and gone. No doubt whatsoever. Massive deflection. Finger goes up as well. And the 100 just came and went. He knows it. He has to walk back. He went for after the bowler. He wanted to smash it over long off. Now he's walking back to the pavilion. He goes big. He goes high. And certainly has cleared the boundary by a long, long way. That has cleared the stadium. What a start that is. Beautifully played pick. Shot by Haq Nawaz. What a start. Went for the big shot. And he took on in with absolute power and class. No doubt whatsoever. Up goes the arms of umpire. He goes leg side. It's high. Is it long? Certainly. It's just cleared the boundary. It should be a maximum. He was right at the edge of the boundary. It was top edge. What a good strike. What a good strike. It has sailed over the rope comfortably. Haq Nawaz is on fire. He gets a full toss and he hits it hard, hits it long, and it's going all the way. Oh, not all the way. It's in the lap. Oh my word. It's Guram Chakwal again. You just can't keep him out of the action. And Asad Shah walking after 12. It's 56 for 4. Full toss. Picked up. Into the stand. That at least 6 rows back. He goes for another one. Once again, it's high up in the air. And that's way over the boundary ropes as well. Here we go. And there you go. If you bowl a little shot, you're going to go the journey. It's a 1 bounce 4, but they'll take it. Length, as I talk about length, he bowls 2 full, and he goes the journey again. That's another maximum. And now we are getting closer to the victory target. Now it's a different story altogether. Shot. Starts with a good delivery, and he's been thumped down the ground. There is a little bit of fumble, and I think he's signaling that ball has hit the skirting. It's gone for 4. Needs to bowl the perfect of the ball. He bowls a full toss. It's up in the air. Third man fielder drops it. Goodness gracious me, that should have been taken. Oh, you gotta be kidding me! It's just the first game. It's a full toss. He's hit that on the leg side. It's gonna be taken. Mustafa has done it. He has provided an all-important breakthrough of Haq Nawaz, who is gonna perish after scoring 24. It's 93 for 5 with just 1 ball remaining. Yeah, even the delivery in which he got out, Daniel Shirazi is the new batter in. This from the captain. It's short. It missed everything. It's going to be a ball, and the defending champions have done it. They have defended this total against Clifton Popular and managed to win this game by 11 runs. Well, defending champions registering their first victory of the season 3 in this KTPL. Here's the match summary. The first innings, the bank made 121, courtesy 37 runs by Khurram and 3 wickets taken by Arfan. Clifton in reply made just 113. Fahad once again a half century for him. Mustafa was pick of the bowlers with 3 wickets, and in the second innings the Bun made just 96 runs, whereas Clifton Populars were 11 runs short.
Good evening to all of you across the globe, wherever you are, and it's day 3 of KTPL. Day 2, season 3, and today's first match is going to be between Johor Jawans and Gulshan Goers. Earlier on, the news from the center was that the captain Syed Nasser of Johor Jawans had the toss and has opted to bat first without any hesitation. So here we go. First ball of the night. Oh, it was a full toss, but way away from the batter. We'll have to re-ball as it's a wide way outside the off stump. There is a lot of difference in tight ball and cricket ball, but this time it's in the slot and thrashed away over for a boundary. First boundary of the night, and it's Nasser, the captain. And there you go! We are here for this stuff! It's going all the way to the boundary. It's a beautifully struck. Not entirely out of the meat of the ball. Was there a nick? He's gone for the appeal and finger is raised. So the first wicket goes down for Jawans. Mark on for 3. 16 for 1 at the moment. So Basit lefty is the new coming batter at number 3. And he has to face that delivery, which he sends into the stands. Wow! Well, he announces his arrival at the crease with that big blow over mid-wicket. He means business tonight, his best Basit lefty. Full toss, gets the treatment, 6. That's big one, that's even bigger. He's not going to stop one bit. He goes big and he goes high, somebody getting underneath it. And somebody takes a brilliant catch. Celebrations from bowler. It's past the lefty league arena at the score of 12 with a strike rate of 200. And he has got him. Bowler was generating a lot of pace. Batsman did swing his bat at that one, missed the line of the ball, and it did hit the stumps. And so Nasser is gone. And gone after making 11. And he has got that away. And it bounced away to the mid boundary for 4. I think should have stopped that one, but he made a mess of that one. And there you see, he lapped it away over square leg and it gone all the way. There was a pretty there in that show. With great smoothness. And he goes again. Fatter and bigger. It lands outside the boundary for another 6. Oh, that can worry them. That can worry them. Way down the leg side, rest away for 5 or 6 wides. That was that ball. This will go. Blazed away through the offside for 4. That's a very good shot. They take 1. It's a leg by 75 for 3 is what they've got in 6 overs. Saddam Shah coming back after injury. He's been the top bowler in 2019 and 2020. Here he comes. Straight away, that has been hit on the ground. Although there was a fielder down there at long gone, so they'll still just get a single. Once again, picked up in the air. There's a fielder at deep mid-wicket, but the ball is going to go way past him. A boundary, the left-hander. He goes again on the leg side. Fielder at square leg is after the ball. Ball might just trickle past the boundary ropes. So back-to-back boundaries to Bahadur. So the chase is definitely on. Starts off with a shot. Taimur Mirza decides to go big and he hits it way over the boundary ropes on the leg side. First maximum of the innings. Well. It's Tim in the house. Fuller. He decides to go straight and he goes long, does Taimur Mirza. Second maximum to TM in this over. Don't search for the euchre, essentially you don't have enough ace.
Shot. He goes big again. This time long on. That's a magnificent hit from TM. Back-to-back maximums. He goes big. He goes straight. It's up in the air. Mid-off was inside. And that's going to go way over the boundary ropes. There you see the ball just landing from the orbit. Perfect start to the over. A 6 of the very first ball. Fuller. This time he goes over extra cover. It's into gap. It's going to run away for 4 as well. Overcompensating. This previous one was wide down the leg side. This time it was 2 outside the stump. Rashid now bowling to TM. Going to come over the wicket. Once again it's leg ball and that's going to travel into the stands. That went good for Rose back. Down the leg side, clipped away. One bounce into the fence. There's no stopping him tonight. That's why 50 also comes up for Gulshan Gohars. Wajid coming over the wicket. Starts with a full toss, picked away on the leg side. It's into the gap, one bounce and into the fence. Horrible delivery. In fact, it has been signaled as a no ball as well by the on-field umpire. I think इन्होंने इस तरह से टीम को मैनेज किया है. Unluckily लास्ट टाइम जो है वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस बार आप देखिए इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अपना नजर आएगी आपको. Full toss put away and everybody's a spectator. That has been smashed way back over the boundary and once again umpire raised arms. So slow one, well picked up. And once again same result. Taimur Mirza. He's just 1 away from an outstanding half century. And 6 to end the over. 82 for an after 4. Smashed hard. It's high. It's handsome. That's gone way back. See you later. What a that is. And 50 for Taimur Mirza. Outstanding half century. And he just consumed 15 balls to get to this landmark. He goes leg side this time. Once again, he doesn't need to run. This is scintillate bat from Taimur Mirza way back into the stands. Taimur Mirza, he's into the 60s now. Once again, pitched up. Thank you very much from Taimur Mirza. Hat-trick of 6. Goodness me, this is a real carnage. Bahadur lefty, beautifully played towards the side. Sublime shot from Bahadur lefty. This right and left in combination. Once again, he goes high. Is it long enough? Is it long enough? No, it's well chained at the boundary. 2 fielders was converging and there was a certain chance and the fielder judged it well. He kept his cool and finally an opening partnership has come to a close. Bahadur lefty has to walk back. Final ball of the innings. And he finishes up with a maximum. Yes, one of the biggest sixes of the innings. Of course, the arms. And Taimur Mirza finished his innings 75. Blistering performance from a superstar. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where BTV Season 3 taking place. And I think Gulshan Gaur have done a very good job as well by taking the lead of 43 runs. First ball of the 3rd innings of this match is coming up. A left armer streaming into us. And first one has been smashed away. And batsman knows that it will go all the way for a maximum. मिलते जुलते नाम है, लेकिन जो मैं अभी तक बढ़तरी देख रहा हूँ वो गौहर की है. तो जवान्स की तो नजर नहीं आ रही क्योंकि उनको 7 का एक्स्ट्रा हमने टारगेट दिया है. तो पहले तो उनको 47 पूरे करने हैं दोबारा मैच में आने के लिए, और यकीनन जब 47 पूरे करेंगे तब इन टारगेट का पता लगेगा. In the air and taken at back foot point quite easily, and the first wicket falls. So the opening stand has been broken. In a small bowler. They are now at 25 for 1 with Shahrazad working back after scoring 5. He edged that one and another beautiful catch is taken. That's a very, very good catch indeed from the fielder at short third. So the captain is walking back to the pavilion without even troubling the scorers, and George Vance in all sort of trouble. They are 25 now for 2. Umar is taking strike and he's going to bowl the hat-trick ball. He streams in, crosses the umpire, and it is in the air. Wicketkeeper is trying to get under. Oh, he made a mess of that one. I think he misjudged that one. Hat-trick could have been taken.
Thank you so much, Rana. And there you go. It's a 6 of the left-hander's bat. What a time to jump into the commentary box. With me is Kainat. As we can see, a flat hit this time through mid-off. Whitish mid-off. It goes all white after a couple of bounces. They need more of these. And keeping your shape just like that. That one has been smashed out of the screws. It was 6 written all over it when it left the bat. What a cracking sound of the willow. Oh, he goes again this time. Not exactly very intended, but this is what it happens in tape ball. Not out of the screws, but he gets the desired result. Maximum to say the least. Yeah, he's getting under. Full tosses are not going to help the bowler's cause. That one went into the night sky. We lost the ball. Please get the ball back. And have a look at that shot. That is shot of the night so far, in my opinion. Mere flick of the wrist and away she goes for half a dozen. That's gone. That's out of here. Please get the ball back. Well, it blinded me. In fact, when the ball hit the air, I thought it was out of here, but it was in the lap of the fielder. Comedy of errors in the commentating bench, I would say. Anyways, there was an action, so it was a bowler's victory. Falak Bashir goes through the extra cover. One bounce into the boundary. That's high. Where is it going? It's going in the square leg fielder's hands. So Falak Bashir has to take a long walk back to the change room as they lose their 4th wicket. All right, it's going to be Arib, the new coming batter, who is going to face. Look at that, not catching in the middle of the bat. No timing behind that. They will look for 2 here. Have to hurry, but they get it comfortably in the end. A batter throw could have got the interest a little too high, but they managed to pick up a couple to end the innings. So 6 overs now have been officially bowled. So they have managed 92 for 4 in their quota of 6 overs. And we see Taimur Mirza with Bahadur Ali making their way to the center. They've got 50 runs to defend, and it's not going to be that easy for the bowlers. I still believe the first ball has been hit away on the leg side by Taimur Mirza, and that has gone way into the stand. So an excellent start once again by Taimur, starting exactly from where he left in the first innings. He had a perfect seat in the house. He decides to go straight. He goes long and he goes over long on as well. So both the openers opening their account with a maximum each. What a glorious first ball and smashed it down the ground. He picked the ball very well. A slower one once again decides to go big. This time the long on fielder is going to take it. So an anti-climax this to the innings of Bahadur lefty. A 6 and a wicket. So wicket falls. So they need more wickets like that to keep balance side away from the victory. 6 to his name, 13 for 1 on the board. There's 1 ball still to go. Jahangir running up. It's a length delivery. Blazed over long off. That's a magnificent hit by Taimur Mirza. Another 6, this time to end the over with. Low full toss. He has decided to go big and he has got plenty on it as well. This time 6 coming from the bat of Essen. Real consolation, real relief for Essen. They just try to play straight or towards the onside. Well played, that's gonna be 6. Beautifully played, no trouble. Short delivery and punished once again by Taimur Mirza. 6 more to his name. And now they need just 15. He decides to go big on the offside. There is no field out there. In fact, there would have been even. It would have still stayed over his head. Back-to-back 6 to Taimur. Has he timed it well enough? Has he timed it well enough? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. It's a boundary to Essen. And now they're not far away from the victory. Once again, it's lifted up. It's high up in the air. Who's trying to get underneath that? Is it going to be taken? It has been taken. A really good catch indeed by the fielder at deep mid wicket to get rid of Essen. Very well just catch indeed. Kept his eye on the ball, kept his cool. So that wicket has delayed the victory of
Gulshan Gaur, 12 to his name, 43 for 2 on the board. Of UBL Amin KTPL Season 3. Lofted over extra cover. That's going to be a boundary. Beautiful hit this from Ilyas. Was there an outside edge? Yes, the finger has gone up. What was he thinking, Taimur Mirza? Unusual way for Taimur Mirza, the way he got out. 24 to his name, but he's done his job for his side, 49 for 3. But he does not need any second invasion. Abdullah putting the first ball down towards leg side for a boundary. And that is it. That is how Gulshan Gohars have registered their first victory in this UBM KTP Season 3. A commanding performance both with the bat as well as with the ball. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where the KTL Season 3 is taking place, and the latest match is between Liari Legends and Malimalan, where Malimalan won the toss and have elected to bat first without any hesitation. Shahjahan is very much ready. He's in right arm over the wicket. Oh, batsman did have a go at that one, but Shahjahan knows how to baffle the batsman, how to castle the batsman. Shahjahan again. This time it has been bashed away in the stands. Here comes the first 6 of this game. Goes again and goes big. It has gone all the way. Another 6. Daud Khan is looking relentless. He's looking ruthless. Yes, he was. And this one is going. Where it's going to land? It's landed in the spectators. And look at jubilation in the dugout. 26 runs off the over. And this one is whipped away magnificently. There we go. Oh my God. And he got that away over mid-wicket. That's a huge one. That's a colossal hit. That is a big blow. Gigantic one. that's been caught behind. Bowler made a very good comeback, and wicket-keeper hit the rest by taking a very good catch, and the first blood is drawn. Smacked it. It's a flat batted hit. That's go way over deep mid wicket for a magnificent hit once again. A 6 to start the over with. Malin Mungs, 56 for 1. Another big hit. And he has timed it well enough. Yes, he has. Back-to-back 6s to run. And not a good start to the over from Salam. Oh, once again, terrific contact from Imran. It doesn't matter. It doesn't matter. This time the ball goes way over long off. 3 back-to-back maximums from Imran. This one is the biggest. Once again over the offside. There is no protection out there. 2 bounces and into the ball goes. Nothing is working in favor of Salam in this over. 3 maximum and now boundary. This time he connects, but hasn't timed it well enough. There is a fielder getting underneath that. He did not even get his hands to it. And they're coming back for the third one as well. I think it's really good running. Outside edge and taken this time in the second attempt though. But what a magnificent spell this has been from Rana. Once again ending the over with a wicket. This time, once again, the dangerous batter Imran, who has been dismissed. 85 foot on the board and Imran is walking back. Just 5 remaining in this innings. He tries to blast it on the offside. It's a flat hit. That did not go high off the ground, but still carried to journey.
Once again, ball hitting the legs. This has been an exceptional last over from Sohail. How well has he come back after being hit for a 6 on the offside? Just 8 runs conceded in the last over. And Malir Malangs are going to finish their first innings on 93 for 2 in their allotted 6 overs. So here we go. Down the leg side, misfiring. It was a bullet, but off target. A couple of runs given in the form wide, and that's not on. Is the bowler. There he goes through the covers. This should go across the boundary for the left-hander. Expanding a bit. His first boundary, Nizar lefty. There you go. If you bowl there, you're going to end up over the boundary for the maximum. Wow. Here is Ali, continues bowling spell. And welcome to the bowling crease. Simple as that. In the slot. And there you go. Oh, Ali, come on. Welcome back, and there you go. That's another fine stroke. Good football skills there on the boundary line, managing to stop the ball with the boot. And it's comedy affair is what happening at a non-striker. Look at that. Oh, it was a big mix-up. That was very comical as well. Very, very nicely and very neatly, and the first blood is drawn. He's launched that one, though, and that's going to carry all the way. It was long, it was high, it was handsome, it was all the way, it was maximum. That is picked, and out of his presence for the maximum was Squarely. Brilliant pickup once again. Straying onto the pads and paying the penalty. He definitely is swiveling around, but the fielder made a mess of it. That was an opportunity at deep backwater square. Oh, nicely picked. It was slower in pace and in the slot, and he gets his man because the lack of pace has done the batsman on the occasion. Ashraf Pathan goes for 10, and they are now 49 for 2. Straight down the ground. It's high. It's handsome. Is it long? Yes. Forget it. It's huge from Daud. It was right in the slot, and what a strike that is. Dropped the ball short, and great shot in fact from Hamidullah. Picked the ball really well. It wasn't an easy shot to execute, but he finished the over with a magnificent maximum. Starts off with a short delivery. Once again, put away on the leg side. It's up in the air. It is going to land. Oh, it has been taken. What a brilliant take that is. What an outstanding catch. What a brilliant catch that is. One of the best catches of the tournament so far. Daud Sulaiman goes for 6, 65 for 3 on the board. Straight away, he announced his presence. Subhan and... Oh, caught! He caught. What a wonderful catch. 2 in a row. Would you believe it? This one is even better. He's walking back. Golden duck to his name, but he is disappointed. 65 for 4 on the board. A pickup shot. How well has he timed that? That is going to go way over the boundary rows for a maximum. They needed that. Low full toss. That just came up. Oh, he jumped in the air to take that one again, but this time was timed just well enough. This time he has gone an outside half of the bat. The fielder is trying to get underneath that, and he's going to take an easy catch. Revenge taken by Fazal. He gets the big wicket of Hamidullah. He has the last laugh. He attempts it. Perfect execution, although they're going to get a run. But that's really good bowling. So what's coming up for the second? And will they come back for 3? Could be run out here. And it's gone, I think. I think wicket falls once again at the bowling end. Yes, the batsman is walking back here. So wicket number 6 down here. Time for the last ball of the innings. It's a short delivery, played straight, played flat. Has that gone all the way for 6? We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. That means Liari Legends are going to finish off their innings on 89 for 6.
Welcome back to DHS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. It's almost half. It's Mali Malangs versus Liari Legend. The situation has been even Steven. 4 runs separates the both sides. And Mali Malangs are 4 runs ahead. So ball number 1 of innings number 3. Outside edge, just try to play towards the onside. In the end, just a single with the soft hands. Catch it as a try. Will this be taken? Gone this time. No mistake whatsoever. Sherjan this time made no mistake. The second time he got the opportunity, and what an over it has been. 3 for 1 on board. Mimran goes back for 1. They go offside. He is cleared the infield. That should be a boundary. Witt was offered and not managed by Kaleem, and it's the first boundary of the innings. Is there an edge? Is there an edge? Up goes the finger. Everyone was excited when the ball passed the outside edge, so wicket again. Sohail has been so impressive and he has been rewarded. And Kaleem goes for 6. Full toss. Once again, hasn't timed it properly, but has gone for 4. That should have been saved at the square leg boundary. A much needed boundary. Went for the big shot. Has he got enough on that? Yes. It's a crowd catch into the stands. A relief for Daud Khan. No ball. No ball signal. He has beaten the short line leg fielder and has run away for the boundary. So gift here for Mali Malangs and Daud Khan. Last ball of over number 3. Hit, still alive. Full toss. Has he got the treatment? It's a big one. Into the stands for the maximum here. He finished the over in a grand fashion. Squatted away on the offside. It's into the gap, and since there is no fielder out there on the offside, he's going to collect a boundary as well, Awais. He picks it up. Over long off. Has he timed it well enough? Yes, he has. This time a flat hit. This time he's been held out. Doesn't get the elevation or the distance this time Awais, and a very good change of pace by Shah Jahan. He picks up another. And Awais making his walk back after making very fine 17. Squatted away on the offside, over back point. Hasn't got a proper connection. The ball will just trickle past the boundary ropes. The fielder was a little slow in getting off the blocks. Yeah, काफी थ्रिलिंग हो गया आज और इसमें बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है. बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक वाइट बॉल्स बहुत कम हुए हैं. इतने सारे स्पॉन्सर्स और तो ये वाकई काबिल तारीफ है. और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि Daud Khan decides to go straight as an arrow into the side screen he goes. That's another 6. Now he has moved into the 40s. It's a low full toss. Hit away on the leg side, into the gap, and into the fence she goes. A 6 on the boundary. 99 for 3, 1 more remaining. Sohail charging in. Bowls it right into the block. Might chop around, it is a run out. A run out at the wicket keeper's hand means Mali Malangs are going to finish off their innings on 99 for 4. And they lead by 103 runs. Qari Hamidullah is ready to face the first ball from Majid Gholi. Might be given as a wide, yes it is, although he was moving inside the crease there, because of which Majid Gholi is a little surprised by that decision which has been made by the umpire. And there he gets a connection he was waiting for, and there you go, it's the maximum. First, but not the last, by Nizar. And there you go. This time a pickup, it's high in the air and it's going towards the boundary. Eventually it will reach the boundary because it was perfectly in the gap at fine leg region.
Outside edge and a very good catch indeed. That's a remarkable catch. That is probably one of the catches of the tournament. Nizar Ali's taste comes to an end. 11 of 10 for the left-hander tonight. It's 25 for 1. That is going down the leg side and going for 6 wides. Is this the opening of the gate which the chasing side is needing? This has been a terrific piece of bowling, but it's still raced away to the boundary. This has been played away towards the fine leg boundary, and it reaches the boundary. So first ball of this over has given them 13 runs. He has got that away and got that away into the stands. This is what they're looking for last few overs, and finally Daud got one away. And he has got that away and got that away into the gap and picked up a 4. Here is the final ball of this over. If he doesn't bowl nor wide, it's gonna go towards the fine leg boundary and got there. Another boundary to end the over. So 72 for 1 after 5 overs, starting the final over. And first one is lofted and lofted over deep square leg for a 6. That's what they wanted on the first ball of this over. Again, and he got that away and got that away over wide, long on. Another 6 straight on. Let's see, here we go again. And he tried another one, and he has been able to hit that one into the hands of fielder. He tried the third 6 in a row, but he failed that time around, and Ubaid has picked up a wicket. Or avoid from the no ball. Is it going to be a no ball? And fielder has done a very good job. Has he got it? Now we can see it. But Ashraf Pathan has to walk back. 84 for 3 on the board. This is going towards the boundary and gone all the way for 6. So they have ended their innings at 91 for 3, and they lost this match by a margin of 12 runs. It's 1 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again from DHA Sports Club, Moin Khan Academy Cricket Ground. I'm 5 of UBL Amin KTPL season 3. It's going to be Gulshan Gohars up against Karachi Knights tonight in the second game of tonight's schedule. Karachi Kings
In fact, Karachi Knights have won the toss and have decided to bat first to Gulshan Kaur, who started off their campaigns on a winning note last night against Johor Jawan. So we are for the first ball of this match number 5 of UBL Amin presents KTPL Season 3. Karachi Knights are batting first against Gulshan Kaur. Starts off the fuller pitch delivery, which was just gently played towards mid-wicket for a single by Ubaid Lefty. That was the first. He tries to go big on the offside. There is no fielder out there. It's going to bounce twice, in fact once, before it won't go past the boundary ropes. So the boundary is coming from the bat of the captain. Tries to go big. And tell you what, that is a monstrous hit from Ubaid Lefty. That has gone into the dugout of Karachi Knights. Down the leg side, it's up in the air, it's a leading edge. It's gone way over the head of the fielder at fine leg, and that's going to go past the boundary ropes as well. Pretty unfortunate this for the bowler. We're looking to hit few more boundaries in this over. This time he connected that well. This time it's going to go way over the boundary ropes. In fact, the umpire is signaling it as a boundary. Might have bounced just inside the ropes, but just get the feeling he timed it too well. This time he goes straight, he goes massive over long off. That is some hit. Finally has been taken in the crowd. Well, that's why it's so important to play on the mat of game balls. Just like that, I was exactly talking about that, and oh my word, he nearly pulled out a blinder on the boundary line, but in the end just tips it over the bar for the maximum. Left-hander gets one in the slot. It's miles in the air. Does it have enough legs? I don't think so, because it's been caught on the boundary. Well, I thought it's going out of stadium. Again, it was caught in boundary. Well, Lefty makes a long walk back to the change room. Oh, look at that. That's in the air, somewhere in the covers, and it's been caught. Nicely pouched. And guess who? It's TM who's taken the catch. Usman Jan, 3 runs for 4 deliveries. Oh, that's miles in the air. And it's not going to play it on him. Asuchita was the fieldsman who makes no mistake. And another one goes now. 27 is made of 17 deliveries. 3 wickets down now. There you go. He goes through the offside. Will he manage to clear the field? And no, he doesn't. Another one goes. Now, wickets are tumbling here. All of a sudden, there are 4 down. Junaid Juni gone for 1. Oh, and the music is a full toss, which has been belted brilliantly out of the ground. And it's going to be a no ball as well. This is the thing which they were waiting for. And there you go. It's gone somewhere. I don't know where. It's in the lap of the fielder. But it was a free hit, so the batter will be not out. Because the batters are going to go that way. That is out of here. See you next day and next night. There you go. We are going to see some stuff tonight. It's gone miles in here and it's out of here. And look at the dugout. Well, definitely it is. Mix up of everything. Oh my God. How can you lift a ball from your feet all the way over the boundary line? It needs immense power to do that. It was a great shot in the end to finish it off with a 6. 82 for 4. 82 रन का टारगेट है सामने दानिश गदी और जिस तरीके के बैटर्स इस वक्त गुलशन गौहर के मैदान में आ रहे जिसमें तैमूर मिर्जा टीएम भी शामिल हैं और टीएम ने जो कल इनके ली थी 75 रन ऑन जस्ट 21 बॉल्स विद 10 सिक्सेस आई थिंक ये बहुत ही क्रूशियल होगा यहाँ टीएम की विकेट जल्दी लेना और अगर विकेट ले जाए तैमूर मिर्जा या बहादुर अली की तो नीले पे दहला पहली गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ मिड ऑफ पे खड़े फील्डर की इस तरह ये फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना होगा क्योंकि रन बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं है और सामने बहुत ही डेंजरस बैटर है तब तक खामोश रखेंगे तैमूर को इस बार गैप हासिल करने में कामयाब 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने
बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा। एक और रन तरफ बॉल्स थी, 2 चौकों के साथ इख्तिताम किया तैमूर ने इस ओवर का। और आउट बहादुर अली। ओ पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ। बहादुर अली इसको जोरदार अंदाज में छक्के के लिए पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सीधा शॉट मिड विकेट पर थमा बैठे बहादुर अली। 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए 16 पर 1। इस बार तैमूर मिर्जा का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, शानदार छक्का। तैमूर ने जेन्युइन बैटर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और इस बार आउट होने का खतरा है यहाँ। गेंद हवा में, लेकिन हवा में गेंद बाहर चली गई। एहसन चिट्टा का शानदार शॉट। Temur is, and there you go. Temur has got that away, and fielder got under the ball. In fact, it was Essen who hit that one in the air, and fielder got that one beautifully. And Essen's cameo is over. It's not a happy man. 38 for 2 on the board. This one is whipped away. Again, there is a protection at the deep square leg. He gets another one. Wickets are falling like 9 pins here at DHA. Well, low full toss has done the trick for Ali. 38 for 3, Gulshan Gohar. Full credit to the bowlers so far. They have a very good job. And now Temur Mirza has gone after him. It's going, and gone many a miles. He got that away and got away magnificently. That's a big hit. It's gone all the way. 3 विकेट्स और उसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ बहुत अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास और कोशिश यही है कि हम कम से कम जो है स्कोर पे इनको रोकें, आगे जाके जो है अब अच्छा टारगेट दें। Temur Mirza has hit that one away and hit that one away all the way towards the backward square leg for four. Just 4 short of what would be a terrific half century. Got that and got that away. Miles again. He's on fire and he gets his 50 in style. Temur Mirza tried to head a go at that one, missed it altogether, and bowler had the final off. But good job done by Temur Mirza. 52 of 22 deliveries, 83 on the board. He has hit that one and hit that one very, very nicely. And it's on all the way for 6. What a way to finish the innings. 8-9-4 they have. So it means they've got a lead of 7 runs. Welcome back. Live, we are live today to Karachi. So Karachi Knights managed to score 82, and whereas in reply they took the lead of 7 runs, the Gulshan Gohars. Karachi Knights will be just score around about 90 or 95 so that they will end up with a healthy lead. Swing and a miss to start the proceedings in this innings, 3rd innings. Not there, certainly. If you bowl there, even if it is a top edge, it's going to carry all the way for the maximum. There you go. In the slot and into the night sky. See ya. Well, it had so much elevation on that shot to bed lefty. Once again, it was length. Swung away on the leg side. This time he connects and he connects it well enough. Sailing over boundary ropes for another maximum for Ubaid. 34 for none. Still halfway through the 3rd over. Picked up on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes once again. Ubaid has been very severe on anything on the leg side. 8 deliveries have been bowled already. Another swing on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes. And to add salt to the wound, it had to be signaled as a no ball. When will this over come to an end? और इस गेंद को ऊंचा खेले और खूब खेले और गेंद हंस बातें करती हुई नीचे आई है, स्ट्रैंड्स में आके गिरी, छक्का। इस गेंद को खेले, गेंद हवा में है, कहां जाके गिरेगी, बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। ओह, बेल्ट किया
हवा में, अभी भी हवा में और दरख्तों के दरमियान जाके गेंद गिरी, एक और छक्का, वाओ शॉट यार, और देखिए क्राउड की खुशी। और इस गेंद को भी हिट किया, बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट से बाहर, एक और छक्का, छक्कों की बरसात, सीटियां बज रही हैं, वाह। एक और जबरदस्त कनेक्शन यहाँ उबैद लेफ्टी का, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के दरमियान, 6 रन, शानदार स्ट्रोक। और अपील हुई और खुद चल दिए थे उबैद यहाँ पर, अच्छी स्पोर्ट्समैन से अंपायर का इंतजार नहीं किया, ये पहली कामयाबी हासिल की गुलशन गौर्स ने, उबैद लेफ्टी आउट। और इस गेंद को ऊंचा खेले, मिसक्यूड है, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश में, नीचे आकर बड़ा शानदार है। इस तरह बहादुर पहली ही गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए। तैमूर मिर्जा भी खुश दिखाई दे रहे हैं। उस्मान जान 34 रन बनाकर आउट 11 गेंदों पर with 4 sixes and a strike rate of 304.56. इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या इनफ कनेक्शन है कि गेंद बाहर ट्रेवल करे, अंदर ही है। जहां एक फील्डर से गेंद छूटी, दूसरे ने काम तमाम किया, शानदार कैचिंग। इम्तियाज इम्ती 4 गेंदें खेल गए, खाता भी नहीं खोला, नुकसान साबित हुए कराची नाइट्स के लिए। आखिरी बॉल इसकी, और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। और ओवर थ्रो, लेकिन किया, रन आउट चांस कराए और रन आउट करने कामयाब हो गए। अंपायर ने फौरन उंगली फजा में बुलंद की। इस तरह 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 90। 6 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर ओवरऑल लीड होगी 84 का टारगेट है गुलशन के सामने। The last innings, and it's going to be a thrilling one. None other than Taimur Mirza is making his way to the middle. So it's the first ball of the new innings. As Bahadur lefty will be on a strike here. He goes for it. Full shot. Has he got enough on that? Yes, he has. That has gone way over the boundary. Well connected. What a start for Kuching. He goes for it. Beautifully picked up. And 6 more to his name. What a start this. 12 runs of the first 2 balls. 2 different shots, but result is the same. He goes for it. Good swing of that. He has found the placement to pick up a boundary. Goes straight, goes high. Someone is getting in under the ball and is taken. Good catch. Good catch. It's Ubaid lefty who covered a lot of ground. He was very calm, very cool. And it's a big wicket. So cameo is over. It's high in the air. He hasn't got the timing right. He is in trouble. Will this be taken? Oh, good catch. Terrific take. My word. 2 wickets in 2 balls. 18 for 2 on the board. Will be on Harrick. Taimur Mirza takes him on. And takes him on with absolute flair. What a good shot that is. He cleared the hoardings comfortably. He goes for it. Hard and flat. 6 more. Terrific. Unbelievable. How can you keep a player of teams and caliber? He goes for it. Picked it up from outside the off stump and smacked it over long on. This is tremendous. Chow, there will be a lot to come. This time using the pace of the bowler down to fine leg in the vacant region for another boundary. Full toss. And the bowler has got the punishment once again. It's hard and flat. He is unstoppable here. Going for the quick single. He's trying to retain the strike and quite wisely so. I think they have asked for a referral for that run appeal. TV umpire has taken the decision. Finally, we've got the decision. Liasani has to take a long walk. But Taimur Mirza has launched it. Is it long enough? Oh, that should have been saved. That should have been saved. The fielder had a chance to get it off to pull the ball back, but the ball has gone over the boundary. 4 more. Start off with a big shot on the leg side. It gets down right to the boundary ropes. Taimur Mirza is not stopping.
Another big hit. That sounded really good. Once again, the ball is going to disappear into the trees on the leg side. He's showing no mercy whatsoever to any of the bowlers tonight. A full toss, similar direction, a flat hit and a six. He's cutting loose now. Taimur Mirza, and with that six, will also have the superstar of table cricket. 52 off 16, giving himself room, playing it over extra cover. My goodness, how good that is. One ball into the fence. That's going to be a boundary, and that is it for Gulshan Kauhars. They managed to win this game comfortably by 7 wickets. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. We are at DHA Moin Khan Academy. KTPL Season 3, Jawans versus North Nawabs is today's first game, where Johar Jawans have won the toss and they have elected to field first. He's going to take the attack from the far end. Here is the first ball, and batsman had a wild swing at that one, but goes through the keeper as he didn't make any contact. This time batsman has given it a go, and he has given it a go over on the six outside the off stump. That was in his radar, in his arc. Here comes the first six of the night. There we go, there we go. He has put that away and put that away over the cow corner. Another six to end the over. There we go again. But he pitched it up and it has been tonked away onto the one bounce into the wide mid-on boundary for 4. He edged that one, but there isn't any protection. Every man, ball running away to the boundary for 4. Doesn't matter how they come, as long as they come. Another boundary. Shafi has hit that one in the air. It is coming down towards the long leg. Has it cleared the long leg boundary? Yes, it has. Another 6. This time it was Shafi Agha, the captain himself. Look at that. On the legs. He goes again. It's going to be caught. Fielder places himself under the ball and he takes it. He takes it, a very good catch. He took a very good catch, I would have said. And the first wicket goes down. So captain goes. Bowler always play a stubborn kind of a strokes. He got that away onto the onside, down towards the square leg for 4. This time it's coming down towards the fine leg boundary. There isn't anybody down at the fine leg boundary. It has gone for 4 again. This time he's got the connection he desired for. This will give him half a dozen. It's a big blow. Wonderful, wonderful. That is Hafiz Pola is on fire. Sadam Shah is back into the attack and he comes back with the massive wicket of Pola. This time he doesn't connect as he would have liked. And he's been caught to wideish long on. Very good catch and a good comeback by Sadam Shah, who was expensive in his first over. Finally a departure for Hafiz Pola. This time flicked away by A.B. Paro, and he's off the mark with the boundary. KTPL committee is watching this contest. He went for it, catched it as a cry. But it has gone for 4, nobody was there. Placed it beautifully. Boundary here to end the over. This time he goes through the cover. It's very good strike. It will stop. Or is it? No, it hasn't stopped. It's gone for 4. He will go leg side and he will collect a 6 he was waiting for. Wow. Goes for it. Is it long enough?
Yes. Once again, he has cleared the ground by a long, long way. Up go the arms of fire. What a batting performance here. Batter length, very full. Will he come back for two? Will he come back for two? He slipped. Oh, this run out here. Picks up, and at the batting end, run out took place, and he's not happy with his partner. Unfortunate way to get out, but he has to leave the arena. Swing and a miss. And single taken as a result of bye. So good comeback here. Finally, the innings has come to an end here. So 88, they managed in their coach of 6 overs. George wants 88 is not a score as far as score is concerned. And Here's the first ball of this innings. And straight away it is going down towards the fine leg boundary. And there isn't anybody down there, so it's 4. Once again, some serious pace on off here. This one is going and going over the edge wicket boundary for 6. Now that is just insane. How could you hit that towards square leg? Just flicked it. Did not even use his arms at that time. Oh, that's a colossal, humongous. He best from that presence. That's a trap shot, a massive one. Another one. Another one goes over cow corner. Another 6. Here's this first ball of second over. It is in the air. Fielder is trying to come under the ball. He has come in and then he caught that one gladly. So the first wicket goes down. Palak gone 5. It's 23 for 1. Nasir, the captain, is taking strike and he has hit it in the air. Fielder is paddling back a bit and he took a very good catch. Another wicket goes down. So 2 wickets in the same over. Bowler doing a terrific stuff here. A simple catch. Nasir walking back for a duck. But batsman now replied him with a beautiful shot. He put that away, front of square or backward of square, I reckon, down to the boundary for 4. Oh ho ho! What is that? What is that? That's a biggie. Another 6. This is in the air. He pelted that one straight down the ground. Right blower, commentary position 6. A proper bazooka. Down he goes. Mid-wicket tried his level best to get around. He couldn't. 4 more runs thick and fast here. Pick up shot on the leg side. Once again, this time the ball is going to travel to Journey. One awesome stroke this is from Basit lefty. Once again, the top shot attempted. Has that gone all the way for 6? Another maximum to Basit lefty. Now bowling to Basit lefty, who has been simply exceptional. Once again, trying to hit it a little too hard. Chance for a fielder. And taken. What an excellent catch this is from the wicketkeeper. He was running backwards. Had to dive in front. Took an excellent catch in the end to get rid of Basit. So Basit lefty has been parried. He's going to walk back after scoring 38 of 30 in deliveries. And with that is 71 for 3 Johar Jawans. Shahid Afridi now bowling his last ball. Once again smashed down the ground. It's into gap. And that has gone all the way for 4. Wonderful placement this time from the right-hander. So all the angles are covered up for the right-hander, who decides to swing. And has he managed to hit it over extra cover? He's falling underneath that. Just couldn't hold on to it. The umpires are check, but the ball might have crossed the boundary ropes. Yes, it did. Once again, a pickup shot on the leg side. How well has he timed that? Just to get the wrist power from Shahraz on that ball. He goes again on the leg side, and I think he has timed it well enough. Yes, he does. So 3 maximums to finish off the innings. And Johar Jawans are going for 100 lead, getting a valuable lead of 21 runs here in the first innings. welcome back once again to THS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. KTPL Season 3 is in full swing. Johar Jawans is taking on. So it's a 21 runs lead picked up by Johar Jawans. So action will continue here in THS Sports Club. So they are 21 runs behind. So innings number 3 is about to begin. Heaved away to the onside, and there's a protection. Not Nawab off the mark.
They are off the mark with a big full toss, smashed away to the offside. Will he go all the way? One bounce into the fence for 4. So first ball boundary for Hafiz bowler, and no ball has been signalled. Flick of the wrist. Is it long enough? Not quite. Taken. Comfortable catch at mid-wicket here. And Shafi is absolutely disappointed. He doesn't want to move. He thought it would go all the way. But he has to depart now from the middle. Saddam again. Low full toss, snacked away down the ground. One bounce into the fence for 4. Lovely shot and a much needed boundary. He goes for it. It's hard, it's flat. Nobody's out there. And once again pick the same region. Consecutive boundaries here for AB Paro. Last ball of the over. He goes for it through the onside. Catch it is a cry. Will this be taken? It's a tough one. Oh, he missed it. Good knee. Well, he's misjudged it terribly. North Nawabs, they need a couple of huge overs. Full toss. Punished. That is out of the park. What a good blow that is. Full toss at ideal height for AB Paro. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. Finger goes up. Massive deflection and it's a wicket. So the dangerous bowler this time goes for just 7 of 5 deliveries. Just don't let the batter get underneath like that. How long has that gone? I think it's 1 bounce 4. He decided to hit that big. Has he cleared the fielder at long? Oh, just by the barest of margin. And with that 650 also comes up for North Nawabs. Pretty packed leg side field. Starts off with a full toss. Hit away on the offside. It's a flat hit. Even the fielder at long off couldn't take that one. So a boundary to start the over with. A leg delivery. Swung it as hard as possible and he's going to get 6 runs. And it was dropped in the crowd as well. That was a full toss. Once again trying to hit that a little too hard. And it's going to be a run out. It was a slow and low throw which finally managed to hit the stumps. Third wicket has now been done. North Nawabs are 80 for 3 with Yahya Khan walking back after scoring just 9. Has he knocked him over? Yes, he has. Just get the feeling it was the bat who hit the stumps. Because the ball was well outside the off, but it's a wicket nevertheless for George Javans. Zain Pathan, 0. Low full toss. Hit away on the leg side. It's in the square leg field. He's trying to get it on, but he's not going to get there. A boundary, a very crucial boundary indeed for the batting side. Last ball of the innings coming up. North Nawab lead by 64. It's going to be a wide. They're running for it. We might see another run out. It's going to be AB Paro. Yeah, he's going to be dismissed. AB Paro walks back after scoring well-constructed 40 of just 19 deliveries. It's 85 for 5. Yeah, he has changed his angle now coming around the wicket. It's in the air. There is a fielder at deep extra cover, but still he's very far away from it. Point field was running backwards to get to the ball. They're going to get 2 runs. In fact, yes, we are going to witness another run. It's all happening in this last over. So 2 runs conceded in the last ball and the wicket fell. The North Nawabs are going to finish their second innings on 89 for 5. Well, they scored 88 in the first innings. Could just score 1 more run in the second. And technically means that now they lead by 68 runs. George Javans' openers are out there to give it a go. 71 is what their target is. Shah Raza, who batted supremely well in the first innings. Here's the first ball of the final innings of this match. And he did throw kitchen sinks at that one. Third man was there inside the circle. I think it dropped just in front of him. But that was a good ball. Batsman chased that one. Oh, it is in the air. Fielder is under the ball and takes it quite easily. What a beautiful ball. Batsman didn't have any clue at that one. Basit has to make his walk back. And he has hooked it away. And hooked it away beautifully round the corner down to the long leg boundary for 4. This is in the air. Fielder is under the ball. Could be caught. Could be caught. It is caught. It is caught. Another wicket goes down.
Will it go right down the wire? Will it be a cliffhanger? 2 wickets in the first over. Then Shahrazad goes for 1 and the second wicket falls. This one is driven away, almost drilled away towards the boundary for 4. He edged that one. Fielder is under the ball. Irshad gets another one. We are watching tremendous piece of ball from Irshad. He held on to it really well. Syed Nasser will have to go back for 10 of 8 deliveries. But this time batsman has lofted him, but lofted him straight into the hands of the fielder. As I was saying, can he get another one? He got another one. Oh, he's knocked him over. Try to go for the big heave left-hander. Another one bites the dust. Johor Jawans are in all sorts of trouble, and the bowling side are turning it on. They're very in the breeze. It's high in the air. Has he got enough legs on it? I think it has. It's a very good connection. Oh, right in the block hole. This is what you can do with that type of delivery. There's a chance of run out. Oh my word! Another one goes. Well, it is all happening, and Jawans are going nowhere at the moment. That's high. It should taken now. Paula is getting underneath, a little bit of collision, almost a collision, but in the end the catch has been completed. So wicket for Saram, a reward of some very good accuracy and very good, I would say, experimentation in this over. 7 to his name, 29 for 7. Swing and a miss. This time within the stumps. How could he run out here? Yes, no, yes, no. Asif Pathan has a chance, finally a run out here. So wicket falls, Parman has to walk back. Lots of confusion. The wicketkeeper produced a throw and the run out made at the bowler's end. Well, there was a comedy of errors in the middle between both of the batters. Farman goes for 1. Lost the toss, been asked to bat first, and batted well they did. In the first innings, made 88 runs. And then the opposition got a lead as well of 21 runs. And that's it. It's all over. North Nawabs have been able to register their first victory in their first game against Johor Jawans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all wherever you are. Another exciting night ahead of us where DHA the Bungs are taking on Malir Malangs for match 6, night 4 of the Karachi Table Premier League Season 3. As the toss has been dominated, DHA the Bungs and Captain Mushtaq has decided to bowl first. Looks as if it's going to be Umri Pacer to start the proceedings. This guy's got some serious pace to work with. Back with a point. Extra cover, mid-off, mid-on. And here goes Umri. Nicely bowled, good delivery to start with. They'll get off the mark, but it wasn't a convincing manner. Full toss, wrong line. It's high in the air. It's going towards the boundary. And it's gone. It's gone for 4. 1 bounce into the boundary using all days of Umri pace that he has. It was a poor delivery, wasn't that? And this time it's a proper flick. But it's 1 bounce 4 again. So didn't get the desired result, the batter, but still it's good enough to earn him a boundary. Oh, look at that. It's high in the air.
Has it traveled the distance? Yes, it has. First six of the night. We'll wait to finish the first over. It's been an expensive one from Umari. He's been taken to the cleaners. And there you go. Length again, but he has protection of no use. I think it's crossed the boundary for 4. Oh, where has that gone? Pick the bones out of that. That has gone many miles, and it's a no ball too. Oh my gosh. There you go. It's a free hit anyways. It's miles in the air. And oh, it was a tantalizing one for the fielder, but it goes all the way in the end. It turns on fire. Oh, there we go. He slivered and delivered all the way at 5 mid on boundary for 6. Oh, well bowled. Very well bowled. As we were talking about that, they got to do something. The first wicket goes down. It's a very full delivery. And again, it has some pace on it. 63 for 1 in the 4th over. And he straight away announced that he's there and put that away over mid-wicket for a 6. Another one. But this time it could be caught. And it is taken by the man at the cow corner. It was in the air for a long while. Took that one very cleanly and gladly as well. Clean goes for 6. 69 for 2. And beautiful trophy that they all have been fighting for. This is in the air. Fielder is under the ball. Ball is coming down. And he kept his cool. Then took that one very easily and nicely at the end. Another wicket goes down. So bowling side making a very good comeback. Not only they are keeping them quiet now, but also picking up regular wickets. Awais Pathan goes none. 3 down for 72 now. Fine leg did pretty well. Fine leg did pretty well to stop it, and it could be a run or not. Let's see. I think umpire's going to refer it to the 3rd umpire. Yes, he has referred that one to the 3rd umpire. Let's see what will be his verdict about this one. Yes, he's gone by a good margin. That you need from any bowler. Wickets are tumbling regularly now. 73 for 4. Yes, he has hit that and hit that well. That's exactly what the doctor ordered him, and he smashed 6. He goes again. Even better and even bigger. Here it comes down outside the boundary. 2 6s in a row. Last ball of the innings coming up if he doesn't bowl wide or no. And this has been spanked and spanked well and way over deep forward square leg for 6. What a way to finish the innings. They'll be very happy with the score. 3 for 4 in 6 overs. Here we go. MG. वेरी वेल बोल्ड। पहली गेंद यॉर्कर लैंड पे थी, छोटा विकी, वकास के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, फील्डर वहां मौजूद नहीं, 4 रन हासिल किए छोटा विकी ने। छोटा गेंद जिसका भरपूर फायदा हुआ छोटा विकी ने और गेंद पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का, इनक्लोजर में गिन गई। और अकवाल का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जोरदार छक्का, खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया। एक और प्रॉपर कनेक्शन, खुर्रम चकवाल, एक और छक्का। खुर्रम चकवाल की क्या ही बात है, मिलाकर देते हैं, एक और 6 हासिल किया। अली गेंद करेंगे। और अच्छा कनेक्शन यहाँ पर खुर्रम चकवाल का, चक्को की हैट्रिक खुर्रम चकवाल की जाने से शाइकी ने क्रिकेट खुशी से झूम उठे। छोटा बड़े छक्के लगा रहे हैं यहाँ खुर्रम चकवाल। इस बार छोटा विकी का ये कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया बार। एक और एक्सपेंसिव ओवर अली छोटा का जिसमें 4 छक्के लगे। और इस बार छोटा विकी के आउट होने का खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा विकी है और गेंद पहुंचाई सामने बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का, इतनी दूर और इतनी ऊंची गई कि किसी को नजर ना आई। एक
और जबरदस्त कनेक्शन, छोटा विकी का एक और छक्का। तो छक्कों की बारिश डिफेंस चैंपियन दबंग की जानिब से, दबंग बैटिंग। और इस बार आउट हो सकते हैं क्योंकि गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है, देखना होगा। और कैच लेने में कामयाब, मच नीडेड विकेट फॉर मलीर मलंग। छोटा विकी आउट। 30 रन, 11 गेंदे, 1 चौका और 4 छक्के। और आते ही उमर ने अपने इरादे जाहिर किए, पहली गेंद पे जोरदार छक्का। और इस तरह जबरदस्त बैटिंग जारी यहां डीएचए दबंग की। He goes over extra cover, tip of Chakwal. And that travel could at least 20 meters even beyond the boundary ropes. This time he goes leg side. It's high, it's handsome, and it's all the way over square leg. Oh, it's a leading edge, and someone should get under it. Oh my word, it's Chotali who's made the mess of it. That could be very costly, I can tell you, Zishan. Down the leg side, a pickup shot that might go all the way for 6. Yes, it does. That has landed into the pavilion there on the first floor, just behind the comment box. Let's see क्या होता है, लेकिन I hope for the best for this evening. Yes, DHA दबंग से नोमान सपोर्ट कर रहे हैं। वेल छक्के और चौकों की बरसात हो रही है, एक लंबा छक्का डेफिनेटली। और यही बॉल की खूबसूरती है कि सिक्सेस और फोर्स हमें बड़े देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत इवेंट है। बदर एक्सपो ने ऑर्गेनाइज किया है, उनके हवाले से भी कहे। सारे जो लोग हैं उन सब लोगों के लिए जो मेरी बेस्ट विशेस है कि आप स्पोर्ट की वजह से इवेंट हो रहे हैं, प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये लोगों का जो टेम्परामेंट बना रहे। He's going to come around the wicket first, Abu Bed. It's a flat hit, and that is going to way over the boundary ropes. So long gone. What a start this over by Khurram Chakwal. A full toss there to be hit, and he's going to punish them all day along. Khurram Chakwal, what a way to bring up his half century. 50 of just 16 balls. Still 3 balls remaining. Fuller, look at that bat swing and look at that distance. The ball has covered. That took an eternity to come down. This time coming from the bat of Omar. Last ball of the innings coming up. He's disappointed. He has struck it nicely on the onside, but there is a fielder out there. He's charging for the second run. And they're going to get there in the end. So a perfect end to the innings for DHA Dabangs. They managed to score 24 in the last over. They have got a very healthy lead of 40 runs, and they're going to finish off on 133 for the loss of just 1 wicket. Welcome back to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, and the great match that's going on between DHA Dabangs and Ali Bangs, and plenty of fireworks we saw as DHA Dabangs posted a massive score. They got a lead of 40 odd runs. That's a huge lead. Get the trial runs and then get the lead. This is very important for them to win because they want to have that start again. First ball. He goes for it and beats mid off. This could be a boundary. Try with but certainly it wasn't the best person. Has he nicked it? Yes, he knows it. He's walking back. The wicketkeeper made no mistake whatsoever. Held out high and a huge blow. Kick is gone. 4 for 1. Omar again. Pulled away. And got on. Straight to the fielder. Goodness me. 2 wickets and 2 ball, and Umar is on a hat-trick here. Khalid has to walk back. He just came and went. Hat-trick ball. Chance. That was off the edge, I reckon. Beats the field and ball goes for 4. Big shot. Is it long enough? It's high. It's handsome. And it's launched it over the rope. 6 to finish the over. Nice shot. Has he found the boundary? That's well played. No protection. It's high in the air. He has been deceived. Should be taken. Gone. Comfortable catch. Slight change in pace here. Well foxed. And Mukhtiar has to walk back. इस बार मिमरान का जोरदार छक्का. यहाँ पर मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स. और जैसे ये जुहैर साहब का जज्बा देखने वाला है पूरा इस टूर्नामेंट में.
और उनकी जो क्रिकेट के लिए लव है और स्पेशली यूबीएल भी आपको पता है इसकी हिस्ट्री है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं अपने लेवल पे वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पावर हिटिंग के लिए, क्योंकि आप क्रिकेट समझते हैं ये क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी बिल्कुल, पावर हिटिंग एक और छक्का लग गया, ये देखें अभी आपसे बात हो रही थी। जी जी बहुत ही दिक्कत शॉट एक दफ़ा फिर, और वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी होती थी। नाज़िमाबाद सुपर कप था, कराची जिमखाना का टूर्नामेंट था, तो उस लिहाज से ये एक और टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है और मेरा ख्याल है कि ये कई साल चलता रहेगा और कई साल एंटरटेन करेगा। एक और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं आप जो कर रहे हैं, इसे आई फील दैट दिस विल एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। सो आई होप कि इस तरह के और इवेंट्स हों एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Lead by some good runs. This is going, and it's gone out of here. What a magnificent blow. And welcome FS. And he swings away. Fielder does try a lot, but he doesn't succeed. It has gone for 4. Runs everywhere. Got that in the air. Miles, who's coming under the ball. Long off. Oh! He got with the ball and ball goes to the boundary as well. But he played magnificently well. Got that away. Over back to a sky leg. 6 more. Runs are coming thick and fast. To be bold. He has lofted it in the stands or on the grass bank. What a terrific 6. What an amazing batting performance. Wicketkeeper collected the last ball behind the wicket because batsman didn't get a bat on that one. 112 for 3, where they finished their second innings, and Mimran remained not out at 73. Ubaid not out at 12. I think they did a decent job. So 73 is going to be the target for DHA Dabangs. What a magnificent batting performance it was from Maleen Malang, especially in the last 3 overs. Still remember they were 30 for 3 in the first 3, but magnificent batting performance by the lower order, and they made sure that they now have given a very respectable target to the opposition. So Khurram Chakwal is on strike. Majid Goli is all set to bowl the first ball of this run chase. It was a delivery which was there to be hit on the leg side, just couldn't connect it. Short delivery, chance. Is it taken? Yes, it is. The finger has gone up. What a praise art this is. Khurram Chakwal we are talking about, who has been dismissed for a duck. We really want to develop all across Pakistan, and our branch network is also growing, and our penetration in Islamic business is growing. But cricket se better, as I always say, कोई product नहीं होती to promote your brand. That association is 50 years old, and UBL Amin is going to start it all over again with the table cricket players. I'll interrupt you here. Viewers को बताते यहाँ एक और विकेट गिर गई है. Well, exciting बहुत होता जा रहा है match. It's a pickup shot. Has he timed it well enough? There is a fielder who's getting underneath that. Is it going to be taken? It is! It's the third that has gone down. Third batter has gone to the dugout without troubling the scorer. Outside the off-stump, he had a full swing at that. And the fielder is just going to watch the ball sail over his head. First maximum of the innings. And no surprises coming from the bat of Chora Wiki. Full shot. Has he knocked him over? Yes, he has! Completely boxed him. Majid Goli is on a roll. Chota Wiki, known as Mohammad Waqas Sher, has now been dismissed after scoring 11. It's 17 for 4. Slow one picked up on the leg side. It's a bit of an anticlimax. That's going to all the way for 6. Getting an outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent catch by the wicketkeeper. He can do nothing wrong, Majid Goli. It's his fifth wicket. Darsalan Jamshed came and went, hit a 6 and has now been dismissed. It's 23 for 5. अली नए ओवर के साथ और इस गेंद को ऊंचा खेले, लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद हवा में, फील्डर के हाथों में, एक और विकेट. बॉलर्स की रात लग रही है यहाँ पर. 6 खिलाड़ी आउट है 25 रन्स पर. बैट्समैन ने इस मरतबा ऊंचा खेल दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के अंदर. फील्डर ने अपने आप को प्लेस किया और बड़ा खूबसूरत कैच. वाओ, जितनी तारीफ करें वो कम है. शानदार कैच लिया, एक और विकेट. आज बंद बॉलिंग परफॉर्मेंस है मलीन मलंग की इस इनिंग्स में और इस मरतबा बैट्समैन ने गेंद को हिट किया है. फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, आ गए
और कैच भी ले लिया। एक और विकेट, कोई स्ट्रोक ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और फील्डर कोई कैच गिराने के लिए तैयार नहीं और 8 खिलाड़ी आउट। इस गेंद को ऊंचा खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब जंप किया, लेकिन इस बार बैट्समैन ने कहा भैया कितने कैच करोगे, अब मेरी बारी है। लॉन्ग ऑफ बाहर, छक्का, मैच नीडेड 1। एक और शॉट, बड़े शॉट के लिए पुल किया है और कैच हो सकता है, बल्कि 4 रन के लिए। चौका भी रोक पाए, कैच भी ड्रॉप किया और इस बार नाराज हैं उबैद। 4 रन मिले और ये देख ग्लूमी फेसेस। और यहाँ ये मैच खत्म हुआ है मली मलंग्स की फतह के साथ, जिन्होंने 25 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। एक आउटस्टैंडिंग कमबैक। IDs 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition platform G2G, B2G, new interactions, joint ventures, and investments in this production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. वाह, कितना अमेजिंग जानवर है। चलिए यहाँ इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मलिक शुएब अमान फ्राम तलग जिला चकवाल। अच्छा, और हमें इस जानवर के बारे में कुछ बताएं, कितने का है, कितनी उम्र का है और ये कहाँ से आया है? ये तलगंग अलवान कैटल फार्म जिला चकवाल से रावलपिंडी के पास पड़ता है ना, तो इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर रहे हैं और इधर भी माशाल्लाह अच्छे रिस्पांस आ रहा है। अब जो शौकीन है ना ज़्यादा कैटल फार्मर वो मांग रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अच्छे रेट है। बाकी जो नसीब में होगा वही होगा। Ideas 2024 brings together stakeholders across defense industries. For the exhibition offers a platform G2G, B2G, and B2B direction, joint ventures, and investments in better sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The picnic event will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. It's 2 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to every one of you who are watching us from different parts of the world. Once again, we welcome you. Exciting contest where Gulshan Goers are taking on Liari Legends in match number 8 of this KTPL Season 3. The news from the center has been that Asan Chitta, the captain of Gulshan Goers, have won the toss and has opted to bowl first. So here we go as match 8 is just about going to get underway. Loosener to start the proceedings by the quick bowler down the leg side. This time he goes through the offside. Width was there and length was there and he puts it away in style.
This time it's launched. It's gone many miles and safely over the advertising hoardings. First 6 of them, and it's a good one. It goes down the ground, all along the carpet. Cuts a table, but we have seen some great stuff. This time he goes left side and beats fine leg and goes into the boundary for 4. Reigning boundaries in the first over. He goes high. Somebody getting underneath in that spirit catch at short third. It was a sky, it was miscued, went across the line, played away from ball, and Price does Nizar. 24 for 1. Flicked away off the hip, and it's gone all the way to the boundary for 4. This time he goes through the offside. That's a beauty of a stroke. He gave it a real thump over wideish mid-off. It's a phenomenal achievement. Goes again to the offside. It's those Carnival here in Karachi. And have a look at that for a stroke. Unbelievable. It's 1 bounce 4, but it has been picked and just dispatched out of its presence. And there you go. Bowls a full toss, and he receives a pump. That is one of the best catches of this tournament. And excellently catched by the fielder. Ashraf Pathan goes for 22 of 7 deliveries. He bowls another full toss. Always full toss is not a fruit. This time it's been thumped down the ground for the maximum. Representing Larry Legends. This time he has got that away. Fielder is trying to, he jumped in the air, but couldn't quite get his hands into that one, and after raised his arms, it means that has gone for 6. It is in the air. Who's going to take it? Fielder is placing him under the ball. He took that one beautifully, or very nicely, and one would say easily as well. So the 3rd wicket goes down. It's in the air. He is going to be out ace. Wicket-keeper comes forward and grabs that one nicely. And finally, he gave his wicket away as well. He hit it in the air. Wicket-keeper again in business. Yes, he's grabbing another catch gladly, gleefully. And another wicket goes down. And Mars suddenly is on a hat-trick. Bilal just came and went. Golden tuck to his name, 70 for 5. He hits that away and hits that away well. He picked up a 6 here and much needed one as well. It is in the air, but it really cleared the man at covers and it racing away to the deep X covers boundary 4 runs. He has hit that away and hit away for a massive 6. That's a good shot right out of the middle of the bat. Shaban has driven that away. That's a beautiful shot. It has gone down to the boundary and then clatters it 4 runs. What a beauty of a shot. 26 runs of the last over, including 7 extras. 105 for 5. What they have scored in their allotted scores. दोनों बैट्समैन तैयार हैं इनिंग्स का आगाज करने के लिए. 105 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन. राना मोहसिन फार एंड पहली बॉल लेकर और पहली गेंद को स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग और फाइन लेग के दरमियान और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. छक्का. अगली गेंद एक और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर. एक खूबसूरत जोरदार और बड़ा छक्का इस मर्तबा बहादुर का. एक और ऊंचा शॉट मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. एक और छक्का. छक्कों की हैट्रिक. राना मुझमें तमाम दबाव. इस मर्तबा खूबसूरत शॉट. फ्लिक ऑफ द रेस्ट. पहली गेंद. तैमूर मिर्जा ने कहा मैं यहां पहुंच चुका हूं डीएचए मोइन खान एकेडमी में. गेंद ग्राउंड से बाहर. छक्का. इस गेंद को तैमूर मिर्जा ने स्विंग कर दिया वाइड ऑफ मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. 4 रन्स. तैमूर मिर्जा का
ऊंचा लंबा खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत दिल अंदाज में गेंद को सैर कर रही है मीलों दूर, बहुत ही दूर 6 रन के लिए। 59 रन हो चुके हैं। एक और बड़ा जोरदार और खूबसूरत शॉट। तैमूर मिर्जा हैविंग अ गो एट एवरीथिंग। अब रन की मर्जी और मंशा के मुताबिक बन रहे हैं। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड पे बहादुर लेफ्टी ने, और नतीजा सिर्फ एक होगा और वो है छक्का। Slower one, picked up on the leg side, it's up in the air. There is a fielder who is trying to get underneath that and he takes it. They needed that and they have made a very strong breakthrough. Taimur Mirza has now been dismissed. Good ball once again. Was there an inside air or has it knocked the stumps? Yes, he has. Well, there was definitely some bat involved, but the ball might have rolled back onto the off stump. 2 wickets now in 2 for Sohail. Playing a 40-minute stroke will get just a single. There's a shy at the bowler's end. They might collect an extra run on the throw. This time they might get an opportunity at the wicket keeper's end. I think he has been dismissed. Yes, the finger has been raised already. It's Ilyas who is going to walk back to the pavilion. Rana is going to start his second over. He gave away 28 runs of the first over of the innings. It's an outside edge that has been taken. What an interesting passage of play it has been for Riyali Legends. Tell you what, it's Bahadur lefty who has now been dismissed. Fuller getting Tikish outside edge. It's going to go past the wicket keeper and then the short third. A very fortunate boundary this for Shiraz. Slow one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who was initially watching the ball. Well, he is still watching, but this time over the boundary ropes. Short. It has been pulled. Once again, it's in the air. Has it got the distance? I think it has. Just by barest of margin, it went over the head of the flat long on. This time he has hit that over extra cover. Has he timed it well enough? He's still running. There is a fielder who's getting underneath that. And there was no communication whatsoever. I think it was Qari Hamidullah and the other fielder. And they're going to collect another run on the overthrow. Oh my goodness, they're coming back for the another one. There might be a chance of a run out at the bowler's end. It's all happening. Finally they have managed to run a batter out. Another wicket has gone down, the 5th of the night for Gulshan Kohar, Shiraz Ali. It's a full toss, picked away on the leg side. That could go one pass into the fence. Arju, the new batter in, just facing his first delivery, just helping the ball on its way down the leg side. So 19 runs coming in the last over from Shah Jahan. Gun Gors, they're in 114 for 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूबीएल अमीन केटीपीएल सीजन 3 2023 और दूसरी इनिंग अब से थोड़ी देर बाद डीएचए क्रिकेट एकेडमी मोइन खान पर शुरू होने जा रही है। और ही गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी देर हवा में रही और बहुत ही उम्दा कैच। उम्दा कैच आसान नहीं है अंडर द नाइट स्काइज इस तरह के कैच पकड़ना। पहला नुकसान यहां पर लियारी लेजेंड्स को। दूसरा ओवर पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कैच मुंह कर लिया। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बैट्समैन को विकेट जरूर दी मगर अच्छा बाउंस करने में कामयाब हुए। दूसरी विकेट गिर गई है और स्कोर है महज 13। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या फिर, और ये अंपायर का इशारा की छक्का। अशरफ लेफ्टी और इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल लगता है कि इन्होंने याया होने की बात फौरन सुनी और कुछ मैक्सवेल क्रू इनके अंदर जो है आई। और इस बार 4 रन होंगे जी, कुल 4 रन। तो पहली 2 गेंदों पर 10 रन और यही चाहिए लियारी लेजेंड्स को। लियारी लेजेंड्स 33 2 विकेटों के नुकसान पर। और अशरफ लेफ्टी की गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे है और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल कर लिया। तो तीसरा नुकसान लियारी लेजेंड्स को 2.5 ओवर के खेल में 33 3 विकेटों के नुकसान पर। Yeah, they got to keep on trying. This time he thrashes it.
went through the covers, and I think it's gone all the way. Yes, it has. Nicely played. He split the field through the offside and got it in the gap for a boundary. And this time, high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, he's dropped it. It was easy as they come, in my opinion, because he's got underneath it and in the end, just couldn't grab it. Good shot down. Is it long? Yes, it's a gigantic one. What a blow that is. Tremendous. Well, that is colossal. It's out of here. It had everything in it. He goes again. That's another one. 2 of 2. This is the momentum they need. This time on the rise. Outside the offside. What a shot that is. And flick that away over square leg into the boundary after a couple of bounces. Vacant space available at a square leg. Lovely flick shot from Shubhan. And this time he gets the connection, but we had to wait ages to get. He doesn't get it away for a boundary. And this time it was a quicker one. And they have scampered through for a single, but they will not be able to complete it as we see a run out at the bowler's end. So Shaban has to take a walk back to the dressing room as he's been run out. Oh, another big heave, but he gets beaten altogether. What an eventful this over has been. Great bowling. Forced him and dot ball to end the over. They've managed only 75 in their quota of 6 overs, which means that virtually they have made 66. It's not a big target for Gulshan Gohar, considering the fact that they have got a very strong batting lineup, especially with the likes of Taimur Mirza and Bahadur Lefty, who are going to be opening the batting. It's just 67 runs tonight, Kainat, and they have done it in the past. They have done it on 2 occasions in the first 2 games. Looks like it's going to be another easy victory for Gulshan Gohar's left arm seam is going to start the proceedings. Swung away on the leg side. It's all along the turf and some misfeed from Field Fine. They will just get 1 run. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a short delivery that has been dispatched on leg side. And it's a flat 6 from Taimur Mirza. Another pickup shot. This time he has managed to hit that in the long on direction and way over the boundary ropes as well. And getting it outside the park. An exceptional shot, showing his dominance. He needs to come back well here, Rana Mohsin. A slower delivery, chance for the fielder at short, and that has been taken in the 3rd attempt. It's the chairman of KTPL, Zuhair Nasir, who completes that catch, and they get a big wicket of Taimur Mirza. Big swing on the leg side, it's up in the air, and it's over the boundary ropes. What a hit of the very first ball, this from Ilyas Jani. He's going to bowl to the left-hander, Bahadur Lefty, once again around the wicket. Big swing on the leg side, it's up in the air and it's into the stands. He doesn't need second invitation, especially when the ball is pitched up. Swing on the leg side, just helping the ball sway. And I think that travelled to Journey as well. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. Not good bowling. This from Sohail Lefty. Last ball of the opening up. Once again, a full swing over long gone. He's not going anywhere, Bahadur Lefty. He's going to stay there till the end, depositing the ball in the dugout. In fact, in the pavilion, I believe. And there you go. He's hit that hard, and it's 1 down 4. And that's another one in the air. The batter is also not managing it to connect out of the screws. But this time around, pace of the bowler has carried the ball all the way. I'll say definitely he gets one in his favor, does Shah Jahan. Shah Jahan is well respected by all the tape ball players. Outside the off stump this time, spanked away. 1 down 4. Just to the left of mid-off. Nicely executed stroke. And this match is over. They won that match by a lot of wickets.
So here we are, welcome to every one of you with match number 7. North Nawabs are taking on Clifton Populars. Live all the way from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. And the news from the centre is that Clifton Populars have won toss and opted to bat first. So here we are, the umpires are ready, players are ready, and the umpire says, let's play. The other against Jawans. Start with a shot that has been put away on the leg side. There is fielder out there. And just single to get off the mark with. Yeah, we'll be feeling good. And there you go, this time it's Asad Shah who has taken serious bit of punishment, and it's been hooked away. But no half edgers from Shah. Another short pitch delivery that has nailed on the side. That's going to be another 6. Well. This time it's in the air. It smiles in the air. Somebody getting underneath it, but no one is there. It's gone in the gap for 4. Look at that. This is not going to help his cause. Poor line, poor length, and there's the prize every time. And let's go together, says Fahad to Sehram. Wow, in the arc and away it went, a country mile. He drops his other shot, this time over and gone. That's a flat hit. Well, they're just dealing in maximum so far, both these overs. It's short, it's pulled. See you later. He said to the ball. That's third of the over. With 1 ball still remaining in the second over. And that ball too has been sent into those trees. Oh, what a strike. What a way for the over. Fahad is now on strike and we can expect anything from him. Boom shaklaka! Over mid-wicket. Unstoppable Fahad. But he does, but this time it's Asad, it's the captain. Gets a full toss and sends it way back into the stand, into the members. असद शाह 360 ग्राउंड से पारी जोरदार छक्का शुरू का इस बार अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए एफएमसी फहद मियां चुन्नू वेरी वेल प्लेड ऑन जस्ट 14 balls दानिश अनीस 360 असद शाह ऑन द टोज जबरदस्त हिट 4 के लिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक है असद शाह एक और जोरदार हिट असद की बाउंड्री के बाहर एक और छक्का क्लिफ्टन पॉपुलर का डगआउट खुश लेकिन इस बार जहां हिट करने गए थे वहीं हिट किया गेंद को और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर एक और जोरदार छक्का 360 असद शाह का फुल टॉस गेंद और जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ही किया असद शाह ने एक और जोरदार छक्का अंपायर देखना चाह रहे हैं लेकिन यहां से ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है दानिश अंपायर कर रहे हैं कि बॉल जी बिल्कुल असद शाह अपनी निफ सेंचुरी 15 गेंदों पे मुकम्मल कर चुके 14 गेंदों पे फहद मियां चुन्नू ने मुकम्मल की एक और जोरदार हिट असद शाह इन फुल फ्लो एक और जोरदार छक्का कैप्टन क्लिफ्टन पॉपुलर 360 का और जबरदस्त हिट फहद मियां चुन्नू एक और छक्का दानिश अनीस क्या हो रहा है यहाँ पर नसीम राजपूत एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का असद शाह का व्हाट अ शॉट लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और इस बार एक और शानदार स्ट्रोक फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की गई और यूबीएल अमीन सीजन 3 का सबसे बड़ा स्कोर क्लिफ्टन पॉपुलर अब तक करने में कामयाब हुए 141 फॉर लॉस Not Nawab, they just kept watching the carnage. Brilliant shots they played and played with real dominance. Goes for it. What a good blow that is. Into the stands. What a perfect start. His half-pitch bowler has announced his presence. Goes for it, pulled away. Has been the man, could be a boundary. It is a boundary.
That's the start they were looking for. Well played. He goes for it. That's the connection. Love it. What a shot that is. Half his pull is off to fly here. Spanked away to the offside. He got the elevation and he found the boundary. Lovely shot. Has picked up his first boundary, 7 of the over so far. Big full toss. He smoked it. He smoked it hard. Over the rope for 6 more. Oh, look at him. Look at him. He's absolutely jubilant. It's high. It's handsome. What a good strike. What a tremendous strike. My word, that is enormous. One of the biggest sixes of the tournament. Outside edge gone. Got down. No doubt whatsoever. It's a huge wicket. Half his pull out. Went for the big shot again. Massive deflection. And wicketkeeper did the rest. यूबीएल itself क्रिकेट को लेकर कितना नहीं यूबीएल तो बहुत पैशनेट है आपने शायद सुना हो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर विकेट गिर गई है हमें व्यूअर्स को बताते हैं बहुत जबरदस्त क्रिकेट जारी है और विकेट्स गिर रहे हैं Shafi Agha, the latest victim, got out. So a couple of wickets falls in the shorter space of time. He goes for it to the offside, outside edge. And it's taken. Wicket number 3 down of the over. What's happening here? Mansoor has been very penetrative. And now he's looking very ominous and lethal. He has taken the wicket number 3 in this over. It's a hat-trick ball, don't forget that. It goes for swing of the bat. Could be out, gone. It's a hat-trick. It's a hat-trick for Mansoor. What a performance. 4 wickets in the over. Would you believe it? Oh, what we are watching, what we are seeing. He goes for knock, 4 down for 44. In the slot over the extra cover, that is going to go straight into the hands of that fielder. Initially it was all about Magnum, now they have started to pick up wickets. And the batting line of North Nawabs is falling like a house of cards here. And there you go, it smiles in the air once again. Somebody getting underneath it. And what happened? I think he's pouched it safely. Very good catch in the end. He's going to walk back to the pavilion without even troubling the scorers. And Pathan, it's 48 for 6. Swung away on the leg side, it's in the air. And it's way past the fielder as well. That's going to run away for 4. And how about that? It's long. And where is it going? It's going out of the ground. What a stroke that is, Zishan. That's the power of Pathan. Not many would have been able to hit that ball on that length. And full toss has been belted into the members. Wow. That's in the air again. How far is it that? I think it's 1 bounce 4. Or has it carried all the way? It's gone all the way. 3 sixes of 3 deliveries. One way to finish the over. Nicely bowled and nicely played, but unfortunately he's picked out the man at the deep mid-off. Another wicket goes down for North Nawabs. Their 7th of the night. Asif Pathan's cameo comes to an end. 25 away for him tonight. So it's Saram, the new coming batter, who is known for his bowling more than his batting, but he can hold the bat. Gets a dot going on to finish the innings. So it's 82 for 7 what achieve in their 6 overs, which means that the lead is going to be 59 runs. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। और बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया है क्लिफ्टन की टीम ने पहली इनिंग्स में, और 59 रन के करीब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बर्तरी हासिल की है। बेहतर गेंद थी जिसे खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री के आधे रास्ते में रोका और पहला रन इस इनिंग्स का। जी हाँ, और फार ने पहली गेंद को लिफ्ट कर दिया है खूबसूरती के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही, छक्का। और इस मरतबा ऊंचा और जोरदार शॉट, गेंद हवा से बातें करती हुई
ग्राउंड से बाहर जाकर गिरी, एक और खूबसूरत छक्का। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट देखने में बनता है, हल्का सा इनसाइड आउट ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर्स, बहुत ही उम्दा शॉट और उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ मिली और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑफ साइड में, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, खूबसूरत शॉट, वन बाउंस इनटू द कवर्स बाउंड्री, एक और चौका। और इस मरतबा गेंद ऑन दी अप हेल्ड कर रहा है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस खातून का जज्बा देखें, लुक एट दैट। इस मरतबा बड़ा एक्सेप्शनल शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का, एक और ऊंचा शॉट और एक ट्रेल कर गई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया, गो के फील्डर मौजूद थे मगर न सिर्फ गेंद उनके ऊपर से गुजरी और बाउंड्री से बाहर जा गिरी, एक और छक्का। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और टेप बॉल क्रिकेट हमारे वक्तों में भी होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी, और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बेस्ट चीज़ है। डेफिनेटली क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस लीग का बहुत रोल है। क्रिकेट को बड़ा खूबसूरत ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त है, और जियो सुपर की टीम को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट करा रहे हैं कि लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नसीम राजपूत साहब ने कई दफ़ा इनवाइट ज़रूर किया, लेकिन उसकी वजह से मैं गैर हाजिर ही रहा हूँ, लेकिन आज आने का जो है इत्तेफाक हुआ। और सबसे पहले नसीम भाई को मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ, तो फ़ौरन आए। और सो इट्स अ सिक्स अगेन, जबरदस्त माहौल बना हुआ है और छक्के चौकों की गूंज है। Into his last over, and it's going to be the innings last over as well. He starts off with a full toss which has been belted hard. It's going, and it's gone. There you see Shahid Aslam, the on-field umpire, signaling it as a no ball. Can score 100 once again. They will definitely score 100. That's going to go over the boundary ropes. Well, that was launched from Clifton and that landed in North Karachi. So with that performance, Clifton Popular also becomes the first side to go past 100 on both the occasions in one game. They now lead by 159 runs. Huge target to chase, 160s to be specific. It's not going to be easy. Here's the first ball. This one is down leg side. It has to be a wide. Yes, it is. And here he has hit that one in there. One bounce into the long off boundary for 4. Good shot. There we go. He has hit that way into the leg side and it's gone all the way. This one is put away and put away over to the leg side again. Another 6. And he has got that away and got that away beautifully. 6. Again, even better, through the side, and it lands in the trees. And then he tests his bat at the pitch in his trademark style, the Hafiz bowler. This is coming down towards the final boundary. Somebody has to pick it up from outside the boundary. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Yes, he has got under the ball and he has taken that catch as well. So first wicket goes down at the score of 54 and Mansoor is the one who got a wicket on the final ball of his first over. And Yaya has hit it straight down to the throat of the fielder, who accepted that gleefully, and another wicket goes down. It is coming out of the ground. 6 more. ने इनको स्विंग कर दिया ऑन साइड में, फील्डर जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच ना पाए और टप्पे खाती हुई बाउंड्री से बाहर निकल गई, चौका। तो 159 रन 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। इस बार शॉट फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 6 रन्स।
एज बाउंस के बाद गेंद गई गली के मोस्ट थ्रो गया, बैट्समैन बिल्कुल साफ आउट हैं और उन्होंने सीधा दौड़ना शुरू कर दिया डग आउट के। 85 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है। क्रिकेट लविंग स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट और भरपूर कुव्वत से हिट किया, बहुत उम्दा छक्का यहाँ पर आज का। और एक बार फिर से हवा में है गेंद और यहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जी फामिया चन्नू ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और अब हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है वहां पे। पठान 7 रन वर्कआउट है 93 पे 4। इस गेंद को खेलने कामयाब हुए, ऊंचा गेंद ने फील्डर के आगे टप्पा खाया, उनको धोखा देती, उनको बैफल करती हुई निकल गई बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए और इस 61 रन के बड़े मार से ये मुकाबला अपने नाम किया है। क्लिफ्टन बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी एफएस क्लिफ्टन की जानिब से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Again, we welcome you all. A brand new match coming up. UBL Amin KTPL Season 3. George Jawan will take on Malin Malangs. That was very different at the time of toss. He was very clear. They opted to bat first straight away. So we all set here for the new match. The number 2 of today. Malin Malangs will take on George Jawan. First ball coming up. Here we go, good swing of the bat. Straight away he made his presence. It's high and handsome that it's appeared. My word, what a good strike that is. What a start from Daud Khan. Flat, hard, nobody's out there. One bounce into the boundary. Outside edge gone, is he gone? We have to wait for the umpire signal. Yes, finger goes up. And DK is not a happy man. He suggested he hit it, but we saw some kind of deviation. George Jawan, they are absolutely delighted. Good sound of the bat. Is it long enough? Yes, more than enough. That's gigantic from Khalid. Like a wicket or it's a 6. Good strike, good strike. First ball, all long on. 6 more. This shot was only hit the wrist power. It's high in the air. It's got a lot of height. And this time, the contest as well provided beautifully played to finish the over. There are 3 sixes in this partnership. Round the wicket. He goes for it. He waited, and what a good shot that is. It has gone many a mile. My word. What a good strike that is. And welcome to the crease, Farman. Pulled away. Gone. Good catch. The batsman can't believe it. Kaleem. He smashed it pretty well, but picked the man to perfection at his wide leg. So Farman has got the breakthrough. He struck it well. Well taken. It was a tough one. Oh, इस मर्तबा बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट, फ्रंट फुट पे आए, ओवर पिच गेंद करना किसी गुना से कम नहीं है। फरमान 5वें ओवर के साथ और इस गेंद को हिट आउट किया, मगर गेंद कुछ टप्पे खाती हुई जा रही है मिड विकेट बाउंड्री आने। फील्डर कुछ वहां पर, लेकिन लगता है कि कामयाब नहीं हुए। एक नहीं 2 फील्डर से वहां पर, मगर गेंद फिर भी बाउंड्री से बाहर चौका। इस मर्तबा एज हुआ है, फील्डर गेंद के नीचे और गेंद को ग्रैब किया अपने दोनों हाथों से। इस तरह ये एक और विकेट। उबैर रहमान 1 रन बनाकर आउट। एमएम 78 पे थी। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग, मगर इस मर्तबा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर राउंड द कॉर्नर गेंद को पुल किया और ढोल वालों के लिए एक मर्तबा फिर मौका कि अपने ढोल को खूब पीटें। Here we go, फर्स्ट बॉल और इस गेंद को हिट कर दिया ऑन साइड पे और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। छक्का तो नहीं, लेकिन चौके से आगाज।
इस मर्तबा गेंद को हिट किया एंड इट हैज गॉन ऑल द वे। नहीं हो सकी गेंद, तो फील्डर मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री पर। और अभी हम बात कर रहे थे बॉलर के लिए कि बॉलर भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर हैं। उन्होंने विकेट हासिल किया है इन फॉर्म में इमरान की 46 पे आउट। इस मर्तबा इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। इस बार तैयार थे मुख्तार, लगता है हमारी बात सुनी उन्होंने। इस बार बैक लिफ्ट भी कदरे की थी, बल्ला वहीं से लेके आए जैसे उठाया। और बड़ा जोरदार शॉट, मुख्तार छच्छर यू ब्यूटी वाइड ऑफ डॉन एक छक्का। व्हाट अ वे टू फिनिश द इनिंग्स। आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे, 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर मलिक मलंग ने। Yes, indeed, it's a very good batting performance by Mali Malang. Finally, they managed to score 103 in their allotted 6 overs. It was looking a little difficult. As we see, Majid Gholi will start the proceedings. He was one of the pick of the bowlers yesterday night, picked up 5 wickets. Started off with a slower delivery. It wasn't picked by the right-hander. Shot. This time he has managed to pull it. He has connected that well enough. That's going to run away for 4 down towards fine leg. Yeah, it's pretty hard to adjust for a bowler against the left-hander. Swung away on the leg side. It's flat, it's hard, and it's all the way for 4 again. After deep mid-wicket did not have much distance cover. Still, how well did he time that? Starts off with a fuller delivery. That has been launched over mid-wicket. And I think that has gone all the way for 6. Yes, the arms are from the umpire. He goes straight. It's up in the air. Long on is trying to get underneath that. And that has been taken. Big wicket this for Mali Malangs. It's Nasir, the captain, who is going to be walking back. वैसे लोग आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात सुन सके और ये जान सकें कि प्रीमियर लीग में किस तरह की रौनक लगी है क्रिकेट की। नहीं, इट्स वेरी नाइस फैमिली एंटरटेनमेंट, अच्छा म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट तो अपनी जगह है ही एक्साइटिंग, वी आर एंजॉयिंग इट फैमिली। Oh, okay. We have different fans here. They are happy. They are enjoying the Premier League. But now let's go back to the commentary box. He pulls a low full toss, and that has been tongued over mid-wicket. They were looking for it. And Basit has delivered one. Now, that is the problem with this game, really. Another swing. It's high, and it's handsome. Second of the over. And not good way to finish off the over. This from Majid Gholi. He goes it, going off the bat, and look at that. That's gone many a mile. What a strike. That is absolutely muscled by Shah. Good shot, good shot. Flick of the wrist. That is extraordinary from Shah. That is even better from him. Chance, should take it, gone. Certainly gone. Wicketkeeper got a ground to his left. In the end, a simple catch for him and some relief and consolation. Well, he is struck here for his side, Mali Malangs, and Basit has to go. Pulls it, catcher is a cry. Gone, oh, good catch. It's down. He's safe as a house. Pulled it well, and Shah has been dismissed. It's a big wicket. In the air, goes over offside. Glorious shot. Over extra cover. Flick of the wrist. Is it long enough? Somebody is positioning himself. And bang, good catch. Good catch. Umar goes out first ball. And good catching by Mali Malangs. Umar went for 0. 71 for 4. Smashed high in the air. Somebody is carrying on the ball. Daud Khan once again. Got him. He's an exceptional fielder. He doesn't miss many. It was a high catch. Kept his cool. In the end, no mistake whatsoever. But has to walk back now. Low full toss. Smack down the ground. Could be gone. Oh, wicket again. Good catch. He was on a hat-trick. The catching so far has been brilliant. Arif Palki went for 0. Full toss. Mistimed. He's got the height. Somebody should catch it. Oh, dropped. Hat-trick miss here. A sit has been dropped. Well, dropped from in between the hands.
Last ball of the innings. Big full toss. He's got the height. Will this be taken? Gone. Daud Khan once again safe as a house. 4 wickets for Ali. And George Jawan innings has come to a close. 80 for the loss of 7 wickets. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से तीसरी इनिंग्स को मुकाबले की ऑफिशिएट करने के लिए तैयार हैं। मलीर मलंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स खेलेगा। 23 रन की सबकत उन्हें हासिल है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर। पहली बॉल इस इनिंग्स की और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद गई, रेगोशेड होकर और 1 रन बन गया। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश टाइम प्रॉपर नहीं कर सकते, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर चूंकि स्कल में थे इसलिए 4 रन हासिल हुए। यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं आता था उठाने, लेकिन लकी रहे कि 4 रन मिले। इस बार बहुत ही अच्छा कनेक्शन, गैप हासिल करने में कामयाब हुए। डीके 4 रन हासिल किए। और इस बार इनसाइड एज, मिमरान की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरमान। मिमरान इनफॉर्म जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। मलीर मलंग्स के लिए क्रूशियल विकेट हासिल की यहाँ फरमान ने। इस बार अपनी लाइन को मिस किया था, जिसका भरपूर फायदा उठाया दाऊद खान पठान ने। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे और यूं कहीं की इनिंग का इस ओवर में फरमान ने ये दूसरी कामयाबी दिलाई जवान्स को। और इस कमबैक यहां जवान्स का। इस तरह एक और विकेट गिरी 20 रन पे। अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए और कलीम 1 रन बनाकर आउट हुए। इस बार अच्छा कनेक्शन, लेकिन बाउंड्री के हाथों में थामे गए। इस तरह दाऊद खान पठान बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ जॉर्ज जवान्स ने हासिल की। मच नीडेड विकेट। और इस बार थोड़ी सी खुद मुख्तारी जरूर दिखाई मुख्तियार ने और सामने की जानिब जोरदार छक्का। इस बार सद्दाम की गेंद गाइड करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर गेंद को नहीं रोक सकी। हासिल हुए। And this time it's a connection. He has bludgeoned away over cow corner. That is a majestic 6. Outside edge and grabbed gladly by the keeper. He says thank you very much and speaks the praises of Farman. Mukhtiar has now been dismissed, walking back after scoring 10. It's 46 for 4. From a different angle, a different strike, and it's gone all the way. He goes again. This time it's even bigger. That's out of here. See you later. Come on, son. I need a piece of it, says the batter. You bowl like that, you're going to travel all night along for these type of gigantic blows. Well, that was a skimmer. Given the responsibility to finish off the innings now. And there you go. Welcome to the arena. Wow. These guys are absolutely merciless. He's going big. This time he goes over cover. This one all the way. But I think it's trickled over. It has trickled over eventually to the boundary. Didn't carry it on the full, but a boundary nevertheless. 3 balls now remaining in the innings. Oh, he's hit that hard, but it's only going to be a single. Oh, they look for 2 hits, and he gets out on the non-striker's end. Well. It's all happening here. I would say he's sacrificed his wicket because they're into the last over. There was never a run. He goes downtown, he goes flat, and he goes all the way. 1 bounce 4. That was skimmer. And this time he's got the length but couldn't get the elevation as he would have liked. It's going to be a single. They will look to get another one, but it's not there. Another run out, just for run outs towards the end. They're matched 85 for 5 in their 6 overs. जौहर जवान्स
needing 100 to register their first ever victory in this KTPL Season 3. Umpire signals, let's play, gentlemen. Last innings of this match is getting underway here. Here's Madgoli steaming in. And first one is hit back, and hit back with the power. Over wide, long on for a massive six. What a way to start the proceedings. What a magnificent shot. He gets that away. Wide of the fielder at fine leg, and it raced away in an eye flash. Runs have started to flow. He goes again, but fielder is there. Who doesn't make any mistake at the long on boundary? Madgoli is saying, you hit me a six, then you clawed me. Oh, not my turn, and go back to your dugout. 10 of 3, 10 for on the board, George Evans. Basit is taking strike. And straight away, he goes bang over long on. That's a good hit, right out of the screws. This time it is going, and gone out of the boundary. What a magnificent stroke. And Shah has given this a go, and given this a go beautifully. I think it bounced once before it get over the line. 4 more. Basit has lofted him over long off. What a beautiful shot. Umpire is lofting his arms for signaling, and that's a terrific stuff from Basit. He has swung it away, and swung it away in the air and cleared the boundary by big margin. इस मर्तबा छोटी गेंद कर दी थी और इसको सजा देने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह चाह रहे थे उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी चांद मिले। मेहनत की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है जिस किस्म की स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग ऑन के हाथों मैच थमा बैठे और टिपिकल सेलिब्रेशन। बासित लेफ्ट को पवेलियन की दिखाते हुए कलाइयों का इस्तेमाल करने चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ बना ही पवेलियन लौटे हैं। जोरदार हिट लगाई है और अपनी अनाउंसमेंट की है, लेकिन यहाँ पे एक और कैच पकड़ने में कामयाब हुए दाऊद पठान। 0 रन पर आउट। केटीपीएल सीजन 3 से एंजॉय होते हुए और इस पीछे पड़ी हुई इस गेंद को खूब सजा दी है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए लाजवाब था। और इस बार फिर एक लाजवाब कनेक्शन देखना होगा। गेंद जागी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और टक्का और फिनिश अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लॉट में कर दी है गेंद और सफर किया है दूर। यहां पे एक और छिक्का इस मर्तबा उन्हें अपने हाथ खोले हैं। फजल अफरीदी पहले ही बॉल को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, लेकिन इनफ नहीं थी, क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब। एक और विकेट गिरती है और यहां पर बहुत ही मुश्किल होती हुई इक्वेशन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस मर्तबा उठा दिया है बहुत देर की मेहरबान आते आते। फील्डर वहां पे मौजूद थे मिड विकेट पे, वो इसने कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल को उठाया और 6 रन बटोरे। और फिर से यहाँ पे कवर्स में खेला है और गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब। यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा, लेकिन मैच जो है वो हाथ से निकल गया है यहाँ पे और जौहर जवान जो है वो मैच हार चुके हैं, जबकि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस पठान एंड कंपनी की जानिब से जितनी इनकी तारीफ की जाए कम। कंप्रीहेंसिव विक्ट्री इन द एंड।
Welcome back from Sports Club Boyan Khan Academy. 6 match number 11 of KGL Season 3. It's Clifton Popular up against Karachi Knights here tonight. Promises to be an everything encounter once again between these two very strong sides. As we see two talk about the toss, it was Karachi Knights who won the toss and have decided to bat first. There we go. The umpires are all set. The batters are all set. We are in for the first ball of this match number 11 of KGPL Season 3. Irfan Nana will be bowling to Ubed lefty. So with the that has been picked up on the leg side, and that has gone all the way for a maximum. Wonderful start this from Ubed. It's the very first ball of the innings. Once again, another pickup shot. Almost a carbon copy of what happened in the first inning has been taken. And walking a shoot down the deep square leg, who has taken an excellent catch. So a 6 and a wicket for Ubed, and a wonderful start for Clifton Popular. Gets ready for once again. This time he has managed to just a bit off. And he's going to run away for 4 as well. Low full toss. He has catched that, and that has gone over the boundary ropes maximum. Much relief for the batting side. Finally, he found the sweet spot of the bat. Another slower one. This time he decided to go straight. Is it long enough? I don't think it has got enough legs. Just over long offside, and the arms are aloft from the on-field umpire. Back-to-back maximums to Usman. Can you witness a wicket as well? Outside edge, is it? Yes, it is. Once again, it's Irfan, singing of the batter. Just when we were mentioning that we have seen pretty much everything, Irfan finishes out on the wicket. Balls have done a decent job. And this time around, batsman is in with a good reply to the bowler. He just banked that one outside the boundary over to the leg side, and it's a no ball as well. There we go. Come on, boy. Oh, got that away. This is going miles. Oh, what a shot. Shot, yeah. That was banged. What a great hit that one was from Usman. He's having a go at everything now. And there you go. Full toss. And it gets tonked over long on. 6. It gets hammered, tonked, or touched. Oh, very well bowled. What a peach of a ball. It pitched just in front of the batsman and then probably moved away a bit. And wicketkeeper did take the catch. It goes for 34, the Usman. There we go. He has pumped that away and pumped that away over wide mid on. 6. This one is going and gone right in front coach court. Shot yard. Here he goes again. It is lofted in there and it comes down as a 6. And up goes the arms of the umpire. There we go. Last ball of the innings. If he does not pull a no or a wide or even a dead. Batsman whipped it away. Bit of Marco in that one. And that one travelled all the way. That deep forward sterling boundary 6. Wow. What a way to finish the innings. And what a way to bring their 100 up. 101 what they have scored in their allotted 6 overs. And Wasim and Imdaz finished the innings well. अली शेर पहली बॉल कर इस इनिंग्स की और पहली गेंद को उठा दिया. आई थिंक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर कहीं जाकर गेंद ने लैंड किया है. जोरदार छक्का का है ना. शाह ने अपने इरादे और अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं. एक और जोरदार शॉट. किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं. नतीजा एक बार फिर छक्के की सूरत में. और इस मर्तबा बड़ा जोरदार शॉट. असद शाह अपने पूरे किराए पे, पूरे स्विंग पे. ओह माय गॉड. इस गेंद को हिट किया और फिर खूब हिट किया और बहुत जोरदार छक्का लगाया. अच्छा
असद शाह एक बार फिर ऑफ साइड में, एक और जोरदार और खूबसूरत छक्का, छक्कों की बरसात, हालांकि मौसम बरसात का नहीं डीएचए में। और इस गेंद को फहद मियां चन्नू ने लेट के मारा, खूबसूरती के साथ छक्का। इस दौरान ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को कवर में फोर्स किया, कोई मौका नहीं, 4 रन। बैक फुट पे जाके इन्होंने पॉइंट और कवर के बीच में से ये शॉट खेला है और इस गेंद को बैक फुट पे जाके हुक कर दिया ऑन साइड में, एक और छक्का। ओहो, आप रुकने वाले नहीं बैट्समैन, हर जगह छक्के पड़ रहे हैं, खूबसूरत जारहाना तूफानी बैटिंग। ओह, ऑन साइड में स्विंग किया, अपनी क्रीज में खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गेंद बाउंड्री से बाहर गिरेगी। निहायत शानदार यादगार हाफ सेंचुरी 10 गेंदों पे। उफ खुदाया अगली गेंद, इस मरतबा गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, और कोई गलती नहीं की इस मरतबा फील्डर ने, लेकिन असद आउट तो हुए मगर डैम करने के बाद 54 रन बनाए 11 गेंदों पर। It's a pickup shot on the leg side that has gone high up in the air. Ubaid left, he's jumping in the air, but the ball wins the race. It's another match right hander. He goes again. This time it's flat and it's over the boundary ropes once again. But they're gonna lock their arms because that's another maximum. The big right hander. Big shot, pulled away, and over off four. Once again, he's got a flat 6 to his name. What no it is turning out to be for Clifton Popular. Outside the off stump, smashed it down the ground, and it's long enough. Yes, Akul arms of umpire, and Fadmir Chinu continues to amaze us. It's a slower delivery. He has picked it up all right, and he has sent that into an orbit. That's another maximum for Fahad, and with that, 100 also comes up for Clifton Popular. Another pickup shot. These are easy picking for someone like Fahad Miannu. How easily has he managed to clear the boundary on that occasion? Just managed to hit it towards long off, will get a sing. And with that, he also go past his half century. 50 of just 16 deliveries to Fahad Mian Chinnu. An excellent knock. What a time he's having out here in Karachi. That's way over the boundary ropes towards that futsal field. Didn't waste time. He got a chance again to get the strike back and smash it down the ground. Not many balls are left to finish the over. Went for it. Pick up shot. 6 more. No problem. What a performance here from Fahad Mian Chinnu. Powerfully struck down the ground. It's not going to go all the way for 4. They will be satisfied with the single. And why not? They're going to finish off their innings on 139 for the loss of just 1 wicket. And Clifton Popular gets a very healthy lead of 38 runs. Courtesy of that man on the screen, Fahad Mian Chinnu, and the captain, Asad Shah, who scored 54 of just 11 deliveries. All right, we are back live now with the third innings of this match. Match 11 here in this competition. A big lead for Clifton Populars. 38 runs, courtesy brilliance with the bat by Fahad and Asad Shah, the captain. Play says the umpire. Nicely bowled. This is the start you can expect when you have runs on the board. Arfan is the bowler. Yeah, they need some stuff like that. Full toss, picked up, 1 bounce over the boundary for 4. Just like that. This time he's got the connection. And it's another boundary. 1 bounce, 4. He's being in boundaries instead of 6s. This time it's launched. And it's gone many a mile in the air. And eventually, it's 16 without loss of wicket. Is in pursuit. So it's going to be Farhad Abdali to share the attack. Oh, is there a nick?
They're gone for the peel and finger is raised as well. So Farhad Abdali, who was struggling to get back into form, he's over the very first lay of his top. That'll do his feet and hold good. Usman John has gone for ones. This time it's picked and dispatched out of its presence. That's a big blow by the left-hander. Well, taking all power from his body to onto that shot. Arfan comes and he's been hit in the ear. And it's going to fall safely. Or not. Oh, it's in the left. The fielder, it was miles in the ear. Confused me as well by the time it was in the ear. It went miles in the ear and safely pouched. Very good catch. Bad lefty made 20 on 8 deliveries. There you go. This is what is expected by him. And this is what he needs to keep on doing it. It's flicked in the air, it's high. And hit him as well, as it has crossed boundary. Was not that of a confident shot, but again, it was hit for a boundary. And this time it's been thumped hard and it's in the ear. And it's been caught. So, looks as if that it's going to be Farhad Abdali's night. His second wicket. Junaid has made just 8 runs of 5 deliveries. It's 49 for 3. बड़े शॉट के लिए यहां पर गए ऑन द राइज। इस दफा लेने कामयाब होंगे यकीनन। बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अच्छा शॉट इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बॉल को मिडिल अच्छा किया। बड़े शॉट के लिए गए यहां पर कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बहुत ही आला शॉट स्पेक्टेटर्स में जाके किए गेंद और पहली बॉल पे 6 रन हासिल किए। इस दफा ऑफ साइड पे गए और इनफील्ड के ऊपर खेलने में कामयाब हुए और एफर्ट जरूर थी, लेकिन इतनी अच्छी एफर्ट नहीं कि वो बॉल को रोक पाते। लेकिन बॉल गई बाउंड्री की तरफ। 10 रन आ चुके हैं पहली 2 बॉलों पर। आउटसाइड एज आउट होना चाहिए यकीनन और ड्रॉप किया कैजुअल एफर्ट, लेकिन इस दौरान 1 रन मिला। मंसूर को विकेट मिल सकती थी, लेकिन बहरहाल विकेटलेस रहे। यहाँ पर एक अपना आखिरी ओवर मुकम्मल किया और आखिरी ओवर 6 ओवर के बाद 77 पर 3 और 39 रन की लीड ली है। Second innings of the game, because 40 by no stretch of imagination is going to be tough for Clifton Popular, especially with the batting lineup they have got. Spinner starts off with a half tracker and that has been nailed over the boundary ropes. A typical start for Fahad Mia Channu. Well, it was a half tracker bowled with a half heart. Let's have a bit of experimentation. It's a pickup shot down the ground. How well has he done that? How easily has he cleared the fielder at long off? I've literally got no word to describe that. Net practice being happening for Clifton Popular, and Fahad Mia Channu is not going to spare anything. He's saying to the ball, don't bowl it, because you're going to get punished. Yeah, easy pickings for a man of Fahad's caliber. There he goes again. Look at that. He's entertaining this colourful crowd, even Karachi. I'm putting my money on 6 sixes in this over. We have seen 4 already. Wicket. It's a reverse sweep. It's up in the air, not timed well enough. And has taken, oh my goodness. What a catch this is. What an anti-climax this to the innings of Fahad Mia Channu. Fahad goes for 24 of just 5 deliveries. Whipped away. That's gone 1 bounce 4. It's pretty much late, but it's just for the entertainment of the crowd. He's hit that down the ground. Mid-on and mid-off are both up. Has that gone all the way for 6? Yes, it has. That's it. Ready so. It's just the captain finishing off in style, hitting the winning runs in the most perfect fashion. A 6 to end the game for his side, and it's the second victory now for Clifton Popular in UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening to all of you folks, wherever you are in the world. We are here for match number 10 between DHA Dabangs and North Nawabs. Another exciting contest is in our hand, and the toss has been won by the captain Yasir Mushtaq of DHA Dabangs, and simple way of batting first. Places the umpire. Nicely ball right there. This is the length you want to achieve very early in the piece in block hold, because this is altogether a different ball game. This is tape ball. But maybe this is what he was waiting for in the slot, and first stick of the night, and it's bat of Waqas Sheer. It was a good strike. He goes short, he goes to the offside. It's a big heave attempted. He gets an outside edge, and it's carried all the way. Would you look that over cover? Unbelievable shot, isn't it? This is what I was mentioning. Very hard to come back after that performance from his partner. He's going the journey. He's feeding him and getting the treatment. Full toss, didn't connection, but it's good enough for a boundary. Didn't get the desired result. It was inside half of the bat. You cannot get away with these for a long time when you are bowling to Khurram Chakwal. It was high, it was long, it was maximum, and it's gone all the way. And bowled him, knocked him over. That is the response you can get from a talented fast bowler like Asif Khan. He struck gold here. And what a Yorker this was. Khurram Shahzad is gone for 11 of 7. Nicely bowled, drilled hard. Oh my word, the field makes a fit. That's gone for 4. That ends the over done. He goes onside. It's high and handsome, beautifully connected. My word, it's a monster one from Arslan. What a way to pick up his first maximum of the day. And now it's Arsalan.